hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past, finding reasons to smile and to laugh. And whenever it's a bad day, music is my band-aid.
was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tired. I don't wear my PJs every day, cause I would rather be outside. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Music is my band. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one.
your superhero. Superhero. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.
I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to run. What have I learning how to run. नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम शो कर सका है। मैं किंग चार्ली आपके साथ जुड़ चुका हूँ दोबारा से एसुस रो आरओजी शोडाउन सीरीज में है। और मेरे साथ यहाँ पे दोबारा से लूसीफर जुड़ चुके हैं। लूसीफर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लूसीफर, और आप सबको भी जितने सारे दर्शक यहाँ पे जुड़ चुके हैं, व्हाट्स अप। एग्जैक्टली, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको शुभकामनाएं इसका। एंड आई एम प्रीटी श्योर आज के दिन तो सर हर जगह मिठाई बट रहा है। आई मीन हाँ, हम एक थोड़ा पैंडेमिक में है, पर इन होपफुली एवरीबडी इज एंजॉयिंग इंडोर्स, शोज वॉच कर रहे हैं। अभी पबजी पीसी ग्रैंड फाइनल्स के लिए आ चुके हैं सब लोग। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज वी सॉ वन हेल ऑफ अ परफॉर्मेंस yesterday, and out of which top 16 teams have qualified. What do you think, King Charlie? इसके बारे में क्या है आपका सोच? Well, before I start talking about teams, well, let me thank a big thanks to, मैं कहूँगा Asus, जो कि ये कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज, और ये पावर्ड बाय इंटेल। मतलब वो जो i9 जो प्रोसेसर है 10th जनरेशन का, इट्स सो पावर पैक। मतलब पबजी जो एक गेम है ना, पबजी पीसी स्पेशली, वो ऐसी गेम है जो कि ना पूरे सीपीयू को निचोड़ देती है। मगर यहाँ पे जो अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर की, और हम बात कर रहे हैं Asus की जो है ना लैपटॉप की, इसके लिए ना पबजी पीसी चलाना ऐसे बच्चों का खेल है। बट यस, जो हमारी 16 धुरंधर टीमें पहुंच चुकी है। कल हमने देखा सेमीफाइनल में कितना प्रदर्शन, कितना अच्छे तरीके से लेकर आई उसको। फुल एक एक्शन पैक्ड था। कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे लूसीफर, स्पेशली हाइड्रा फ्लिक गबरू गेमिंग से मैं देखना चाहूंगा कि आज क्या करना चाहते हैं। गवर्नमेंट आंटी व्हाट अ प्लेयर ही, क्या किया उन्होंने, जो क्लच निकाला कल 1v3। एंड वेल, स्पेशली द गॉड स्क्वाड, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? I mean, the God Squad from semifinals one, they were looking really, really good. So I think they are one team along with, सबको पता है मैं किसके नाम अभी लेने वाला हूँ, the four guys, जिसने सेमीफिनाले 2 में
सब कुछ तोड़ दिया. There was no records left. So I'm really hyped क्योंकि अभी आज इस दिन on this such a good festival for India, Happy Independence Day as we said for everybody, आज डिसाइड होगा कि कौन फर्स्ट प्लेस जीतेंगे और ये 50,000 का प्राइज लेके जाएंगे आउट ऑफ द 75,000 प्राइज पूल. Everybody has battled it out for a week long, I guess, in the qualifiers. अभी सेमीफिनाले कल ही हुआ, ग्रैंड फाइनल्स, डू और डाई, डिसाइडर आज है. क्या लगता है आपको किंग चार्ली इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अब तो मेरे ख्याल से करो या मरो की स्थिति है, जैसे आपने बोल दिया, और 75,000 रुपए का प्राइस पूल, इतना बड़ा प्राइस पूल आपको मिल रहा है. फर्स्ट टीम 50,000 रुपए लेके जाएगी, और इंडिपेंडेंस डे का दिन हो, संडे की शाम हो, और आप एक पबजी पीसी देख रहे हैं आप सारे के सारे, और यहाँ पे कोई टीम जीत रही हो अपने लिए. मैं कहूंगा प्राइस पूल से बड़ा है वो यश, वो ख्याति, वो एक नाम, एक जुनून जो है ना अंदर आज जो दिखेगा हमें. और हमने वो कल जो चीज देखी थी कई टीमों में, कई प्लेयरों में, तो कुछ प्लेयर कई टीमों के बहुत ज्यादा धुरंधर खेल रहे हैं, और कई टीमें कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के आ रही है, जिनके बारे में आज हम दोबारा देखना. क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हम देखते हैं कि एक दिन जो परफॉर्मेंस है वो अगले दिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी सी दिखती है. मतलब कहते हैं ना, कभी कभार चाय के अंदर जितनी Yep. मर्जी चीनी घोल लो तो थोड़ी मिठास कम ही लगती है. तो जो ज्यादा मीठे खाने के शौकीन होते हैं ना, उनके लिए स्पेशली. बट कभी कभार क्या होता है, फीकी चाय भी लगती है यार, मिठास दे रही है पूरी की पूरी. तो इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट ऑफ टंग. बट यहाँ देखना है कि आज ये सारी टीमें एक दूसरे की गेम स्ट्रेटेजी को देख के कैसे आगे आई है, स्पेशली अबाउट द मैप लूसीफर. Exactly. I'm looking forward to how these things change off because आज best of 3 नहीं है. It's going to be a best of 5. All the 5 maps will be played. All these teams need to have that endurance. पूरा उनको संभाल के खेलना पड़ेगा. They cannot put out all their performance in the first map or the first 2 maps also. All the 5 maps they would have to play. Starting off with Erangel, heading over to Miramar, the second map. Third again with Erangel. Miramar is going to be the fourth. And to end it all again, where we started it off, it's going to be on the map of Erangel. And points, no changes there as well. How players or teams will be placed in terms of placement points. Teams placing at 9 to 16 will be getting 0 points irrespective of what they do or where how much kills they get. They'll be getting 0 placement points. All they can rely on is their kill points. But starting off at the 8th position, one team will be getting 1 point. 7th as well will be getting 1 point. From 6th to second, the points start increasing to 2 to 6. But the first place team, जो टीम पहले नंबर पे आएगी, उनका पूरा 10 पॉइंट मिल जाएगा. डबल डिजिट्स इज व्हाट दे विल बी स्कोरिंग. सो just like yesterday, we saw a lot of consistency coming through. Hopefully it was not only for yesterday. आज भी कुछ बाकी रखा है उन्होंने गेम पे. ये बिल्कुल कुछ ना कुछ तो बाकी है, और मेरे को देखना है कि अब ये कैसे करने वाली. क्योंकि पहले देखिए इरेंगल है, फिर आपके पास मिरामार है, फिर इरेंगल है, फिर मिरामार है, फिर इरेंगल है. तो ये जो बार बार स्विच अप होते जा रहे हैं ना, एक पूरी हरियाली आ गई, फिर आपके पास रेगिस्तान की गर्मी, फिर आपके पास हरियाली आ गई, देन यू कैन कूल ऑफ, देन यू हैव दिस मिरामार. एंड टॉकिंग अबाउट वन स्क्वाड एक्चुअली, लाइक द गॉड स्क्वाड, जो जिन्होंने कल परफॉर्मेंस करके दिखाई है बैक टू बैक 3 मैप्स के अंदर, सेमीफाइनल 2 में. अगर कल आप लोगों ने नहीं देखा, और हाइलाइट्स अगर आप लोगों ने बाद में देखी होगी, अभी कुछ ही देर में हमारे सामने स्क्रीन पे जो है हमारी 16 टीमें आने वाली हैं, उनके ऊपर भी एक एक करके हर टीम के ऊपर विचार विमर्श करेंगे. बट यस, गॉड स्क्वाड इज वन टीम जिन्होंने कल तीनों मैच में 15 प्लस किल्स हर एक मैप में लिए है. दैट्स एंगल, मिरामार एंड एंगल. यस, यहाँ पे हमारी टीम्स को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं लूसीफर. तो स्लॉट नंबर 1 पे आज जो हमारे हमेशा रहेगी वो है गॉड स्क्वाड, एंड सेकंड पे रहेगी आर्गस ई स्पोर्ट्स. थर्ड स्पॉट लेगी हमारी काइजुकू ई स्पोर्ट्स. फोर्थ पे टीम रेकम, एंड फिफ्थ पे पांडा गेमिंग रहेगी. सिक्स पे हमारे पास वैन है. सेवेंथ पे गबरू गेमिंग के हमारे जो है हाइड्रा फ्लिक, और वहां पे जो उनके प्लेयर अंदर, और क्रेजी 4 रहेगी 8th पोजीशन पे. वेल, क्रेजी 4 वाज आई मस्ट से एक सरप्राइज फैक्टर था. बट रिमेनिंग 8 टीम में चाहूंगा लूसीफर आप उनको इंट्रोड्यूस करें, लाइक फ्रॉम सेमीफाइनल. Exactly. गबरू में एक एक दो प्लेयर है that we can be relied on, fall on for next team. The 4 guys coming in. This is the team that King Charlie was talking about. इन्होंने तो पूरा
पूरा मैचअप में दे डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड, आई वुड से। हमने एस्टिमेशंस लगाया था कि बेस्ट ऑफ 5 में इफ दे गेट 60 इन द फर्स्ट 3 मैप्स they should be really good, but they managed to do 68 yesterday itself. Mercenaries, a really good team. In the two maps that they played, Erangel and Miramar, they were in the top position. But unfortunately, on the last map, they could not do a lot. Early on fights that they took did not work in their favor. Blind had a good consistency. Indian rivals in the last map, just like yesterday, as other teams, that is KP as well as Alpha Omega, showed up really, really well. And I think they got qualified because of that as well, along with KP, with Alpha Omega, Bunty Boys, और एक और टीम है जो that is going to be I'm little bit Proud confused. Thugs It should Esports. हाँ, Proud Proud Thugs Esports. Esports। हाँ, मैं वही कंफ्यूज हो गया अभी। ये काइजो को esports जैसे भी है, थोड़ा प्राउड थग esports तो मैं कंफ्यूज हो गया। प्राउड थग और मैंने यहाँ पे esports सारी लास्ट मिनट पे। मैंने सारी तारीफ जो है मैंने गलती जल्दी में मैंने सारी तारीफ जो है गॉड स्क्वाड की कर दी। गॉड स्क्वाड बहुत अच्छा टीम है, बट यस द फोर गाइस, द फोर व्हील, द फोर चार्मर्स, आई मस्ट से अभी क्या करने वाले हैं। पोजीशन इनको मिली है मेरे ख्याल से जो हमारे इसके अंदर एट्थ आई गेस, एट्थ और नाइन्थ इन द जो स्लॉट पोजीशन है। एंड लेट्स सी हाउ दैट 8 नंबर helps them out, because 8 is the number of infinity, because 8 का कोई end नहीं होता, there is no end to it, it just keeps revolving and all. और ये these people like to revolve, these people like to evolve and they like to Exactly. dominate the battlefield। तो क्या लग रहा है कि आज क्या हो सकता है, like who can be the biggest upset? Like we know Panda Gaming, we know for example Gabru Gaming, they know how to dominate। Kaiziku Esports, they know how to be in the map। वी हैव सीन, अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट ऑल दीज फैक्टर्स कंसिडरेशन, एक हमारी जो टीम है मर्सिनरीज, जिनको हमेशा आता है कि सर्कल में एंड तक बचना, बट दे आर नॉट मोर ऑफ अ किल ओरिएंटेड टीम। सो लूसीफर, हमने उनको कल फर्स्ट आते हुए भी देखा, चिकन डिनर सेकंड भी आते हुए, देन दे गॉट प्लेस 16। लाइक Exactly. I'm a little bit worried for, I would say, all the teams right now. I mean, except for the four guys, I'm worried for every team. क्योंकि आपने जैसे बोला, the God Squad, Kaizoko Esports, Rakam, and even team Mercenaries, ये सारे teams were looking really good. But the way they started picking up fights, बीच में उन्होंने कभी भी जाके स्क्रिमिश करने का ट्राई किया, they wanted to take down a squad, सीधा वो eliminate हो गए। That is very unfortunate. They were not ready for the fights. तो I am worried in terms of trying to bring consistency in. वो लोग kill के लिए जब hungry हो जाएंगे, they become greedy for it. I get worried that time, because as people start getting greedy, and वो human I would say impact है ना, वैसे as soon as you lose one of your players, it's like let's get that squad down and उनको मिटा देते हैं यहाँ से। They cannot take our team without having a proper battle। ऐसे नहीं कर सकते, backstab कर दिया हमको, lurk कर दिया, हम जब we are traveling to another safe location, they cannot shoot us। ऐसे जब हो जाएगा ना, I think it's human instinct to get onto that battle, make sure the squad is taken down। But we also saw the four guys, the team that I am looking forward to personally today, because whenever they took a battle, they waited for the sound cues, and as soon as they got that cue, they immediately burst onto it, because of which they managed to get at least 2 to 4 teams। And I think ये चीज है जो the four guys का अनोखा है, जैसे वो लोग kills और placement भी लेके आते हैं। प्लेसमेंट लेकर आते हैं। एंड आई वांट, यू वर टेलिंग अबाउट द टीम, लाइक कहीं पे कोई प्लेयर नॉकआउट हो जाता है एंड इफ दे आर गोइंग फॉर दैट फाइट, द ओनली रीजन द क्रेजी फोर मेड इट इनटू द टॉप 8 वाज दिस रीजन, जहां पर उनकी फाइट ब्रेक थ्रू होती है एंड दे टुक दैट रिट्रीट, ओके, एंड देन दे गो टू द अदर साइड, वहां पे जाके वो 3v4 फाइट लेते हैं। और वहां पर जो मेन आई थिंक इट वाज काइजिको ई-स्पोर्ट, जहां पर उनको वो पूरा एलिमिनेट कर देते हैं एंड दे जस्ट वेंट ऑफ थ्रू वहां से गॉड स्क्वाड से रिट्रीट करके। सो दिस ऑल एक्शन हैपेंड, बट यही है कि अब कौन कितना सूझवान है। इवन पांडा गेमिंग, दे डिड परफॉर्म वेल एंड दे आर लाइक ऑल दी 16 टीम्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव टू डू। हर की देखो, हमारे सामने कोई ना कोई तो विजेता आएगा, फर्स्ट और द सेकंड एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे, बट I seriously don't want it to be like a one-way journey कि 3 गेम ही हो गई है and if the history repeats itself, जो कि you said yesterday कि होती है ज़्यादातर history repeat itself, like, तो I don't want कि 4 guys are just like I don't want a troll game। It's like everybody is there, give your best, just stop wherever you think, because I think you have like 3 maps information
आपको पता है मिरामार है, इरेंगल है, यू सॉ देम हाउ दे आर प्लेइंग, हाउ दे आर ट्रांजिशनिंग, व्हाट how Four Guys is transitioning, how Kaiziko Esports is moving up, how Mercenaries is playing so calculated. They play at the back lines और अंदर नहीं ज्यादा जाना चाहते, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके खेल रहे हैं. यू नो हाउ अगर हम बात करें हाइड्रा फ्लिक फ्रॉम गबरू गेमिंग, हाउ डोमिनेटिंग काइंड ऑफ प्लेयर ही इज. सो गवर्नमेंट आंटी, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम, लाइक 1v3 क्लच निकाला है. पांडा गेमिंग फॉर एग्जांपल. सो मेनी गुड टीम्स वर लेफ्ट ऑफ यस्टरडे, बट ये अब सबसे ज्यादा 16 सर्वश्रेष्ठ टीम है. सो who's the other team apart from Four Guys you think like who can be a huge, like upset for other teams? I was holding my cards yesterday also for these two teams. मैंने जब शुरुआत हुआ था, जब हम देखा नहीं था इस टीम को, as soon as we saw the logos and उनका बात कर रहे थे, मैंने उस वक्त बोला था कि I have my cards on Mercenaries as well as Blind Esports. Blind कल बहुत अच्छे खेल रहे थे. They were taking the fights which they wanted to, उसके ऊपर आ रहे थे, but unfortunately जैसे zone कोलैप्स हो रहा था, आई थिंक दे वर टेकिंग द फाइट्स एट दैट राइट मोमेंट, एंड जैसे ही उन्होंने फाइट लिया, एज सुन एज द जोन वाज कोलैप्सिंग, एक और टीम through the zone they were making their way out, and Blind Esports, they hear those sounds that there's a battle going on and they take advantage of it. But thoda consistency they did maintain, so I think the side of Blind Esports also might upset any of these teams today. But again, one thing that I'm really worried is all the 16 teams are exceptional today, but out of these 16 teams there's not going to be first, second, third, fourth, fifth or 8 teams qualifying anymore. अब अभी सिर्फ ये बेस्ट ऑफ 5 के बाद में there'll be only 2 teams first and second position, that's all. इतना एक हफ्ते का इन्होंने पूरा ग्राइंड जो किया है, it's all about to happen today. अगर आज किसी ने थोड़ा परफॉर्मेंस वीक दिखा दिया, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर देम. वो कुछ भी करके थोड़ा टीम को थोड़ा भी सपोर्ट कर ले, मे बी यूटिलिटीज पैक कर ले, मे बी बिकम द ड्राइवर फॉर द टीम, मे बी बिकम द कॉल आउट फॉर द टीम. हमें पता है आईजीएल होगा, बट आई थिंक दे शुड रीस्ट्रेटेजाइज डिपेंडिंग ऑन कौन आज बहुत बेहतर खेल रहा है. इफ देयर इज अ गाय लाइक खरकू, जैसे हमने देखा कल, ही वाज एट अ बॉटम एंगल इन द लास्ट मैप ऑफ एंगल, ही डिड नॉट हैव हायर ग्राउंड, द ओपोनेंट हैड अ हायर ग्राउंड, बट फिर भी उसने बहुत ज्यादा टीम्स को निकाल दिया एंड ही ब्रॉट इट टू अ 1v2 सिचुएशन. अनफॉर्चुनेटली ही डिड गो डाउन, but making sure his team survives from a lower ground angle, that is really really good. So I think ऐसे जो reliable teammates रहते हैं ना, उनके बारे में उनके ऊपर थोड़ा responsibility ज़्यादा आएगा, but hopefully teams are playing together better, I hope today. मेरे ख्याल से अब अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली ऑन टू द साइड ऑफ अदर टीम, जो अगर हम थोड़े से और टीम्स को अगर विस्तार से अगर देखें, स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वैन गेमिंग. दिस वाज वन टीम जिनको हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गेम को खेला, बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे लेकर आए. देन देयर यू हैव दिस टीम अल्फा ओमेगा 2. तो ये टीम के पास भी एक बहुत अच्छा चांस है. एंड आर्गस की अगर हम बात करें, तो आज मेरे को देखना है कि वो किसको खिलाते हैं. कल हमने जो है स्काइडन को देखा और साथ ही साथ जो है डीवो को देखा, हमने किलर रू को देखा, बहुत अच्छा खेल रहे थे. एंड काइजी को ई स्पोर्ट्स की तरफ से मेरे को देखना है कि जो स्पेशली इन्फेक्टेड हैं वो आज क्या करना चाहते हैं, बिकॉज हर टीम के अंदर एक एक दो दो प्लेयर हैं जो कुछ अलग करने के, मैं कहूँगा, काफी ज्यादा क्षमता रखते हैं. स्पेशली पांडा गेमिंग में अगर हम बात कर रहे हैं, तो चौबे जी, ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु सर्वाइव्स टिल द लेटर पार्ट and dishes out a lot of damage. So all this thing is happening, and I would love to see what all can be happening. So any more like player like especially Van Gaming की अगर हम बात कर रहे हैं, what do you think about Ghostia and Diabolic? I think the whole team of Van Gaming, जैसे हमने first semi-final, they were the teams in the semi-final one, as we saw them, वो बहुत डैमेज डिश आउट कर रहे थे. दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ किल्स, दे वर मैनेजिंग टू कन्वर्ट अ लॉट ऑफ किल पॉइंट्स एज वेल. प्लेसमेंट पॉइंट्स उनको कभी कभी नहीं मिलता था बिकॉज द बैटल्स दे वर पिकिंग, हमने जैसे बोला था. आई थिंक एवरीबडी हैज दैट पोटेंशियल फ्रॉम वैन गेमिंग. आज भी वो धमाका कर सकते हैं, दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज. आई एम होपिंग फॉर इट, बट ओनली विश फॉर देम नॉट टू गो आउट रियली रियली अर्ली, बिकॉज जैसे हमने बोला कि टॉप 16 टीम्स, लाइक दे हैव बीन फिल्टर्ड सो रियली वेल. वैन गेमिंग वैसे एक टीम है, जैसे आपने बोला अर्गस भी एक ऐसे टीम है. अल्फा ओमेगा लास्ट मोमेंट में जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिला, दे मैनेज टू कैपिटलाइज ऑन दैट. एंड एज वेल द साइड ऑफ टीम केपी, कैटलिन पुरिंजू,
वो नहीं लग रहे थे कि फर्स्ट 2 मैप में दे वर नॉट लुकिंग दैट गुड। उनका फाइट्स थोड़ा आ रहा था, नॉकआउट्स भी आ रहा था, बट इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। सो होपफुली टुडे इज अ बेटर डे। बट इन द मीन टाइम चैट, who do you think will be walking away with the first map of Erangel as we are starting for the grand finale? Start putting in your favorite team's name and also keep supporting all of them because they have put a lot of efforts as they're heading into the grand finals today. अभी देखते हैं, जैसे फ्लाइट पाथ राइट क्लोज टू मिडिल में जा रहा है। आपको क्या लगता है किंग चार्ली, अभी सर्कल कहाँ आएगा? हमारा प्रेडिक्शन सर्कल में थोड़ा करेंगे क्योंकि कब हर वक्त सर्कल अपना गेम खुद खेलता है। कि बिल्कुल सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस टाइम इट शुड गो समवेयर अराउंड मैंशन की साइड पे थोड़ा सा जाना चाहिए, टुवर्ड्स बिल्टा साइड। आई थिंक बिकॉज अगर क्योंकि ज्यादा लेफ्ट पे चले जाता है, कल हमने वो माउंटेन टेरेन के ऊपर भी फाइट देखी है, कल हमने स्पेशली मिलिट्री बेस की तरफ भी सर्कल देखा है। तो व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस ऑन द सर्कल, व्हिच वे इट शुड लैंड? आई थिंक द सर्कल शुड बी कमिंग क्लोज टू यासनाया क्योंकि फ्लाइट पाथ की उस तरफ है, उसके साइड पे बहुत सारा ओपनिंग्स है। आई थिंक दैट शुड बी द प्लेस दैट द सर्कल माइट एंड अप हैपनिंग इन, बट इट नेवर बी अ सरप्राइज कि ऑल ऑफ अ सडन हम लोग पहले सर्कल को देखे यासनाया है, बट ऑल ऑफ अ सडन मिल्टा पावर के तरफ भी चेंज हो गया, या जॉर्जियो पुल अ कंप्लीट 180 डिग्री डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। आई एम नॉट वाओ, कंप्लीटली श्योर, बट देखते हैं उसको। बट लाइक व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, ओके द सर्कल आ गया बिल्कुल। अभी थोड़ा सा मैं जैसे कि बोल रहा था, ओके आई जिंक्स्ड इट आई न्यू ये थोड़ा सा इस तरफ को जाने वाला है, टू द ईस्टर्न साइड। बट यस, व्हाट आई एम सरप्राइज्ड इज लाइक 4 टीम्स हैव एटलीस्ट लैंडेड इन मिलिट्री बेस। अब इन सबको ब्रिज क्रॉस करके आना है एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल एट अराउंड क्वेरी, क्योंकि क्वेरी के पास भी एक स्क्वाड उतरा हुआ है एंड मर्सिनरीज के ऊपर हम जा रहे हैं यहाँ पे स्कूपर। और स्कूपर के मेरे को देखने के लाइक, ओके सो नाउ यू आर इन द मिलिट्री बेस, यहाँ से आपको लूट काफी अच्छी मिल जाती है लूसीफर। You have एग्जैक्टली। immense amount of loot, you get your AKs, you get your M416, you even find an 8x or 4x। ये सारी चीजें आपको मिलती जाती है and slowly you build up with those Molotovs and those grenades and even a car 98 can dish out a lot of damage। हमने कल देखा है कि जब वो दो स्क्वाड्स के बीच में फाइट हो रही थी, even despite knowing कि वहां से आप जा रहे हैं, and there was this सटीक headshot right through the car and you were taking a, तो it happens, like you can't be taking out a car and running in an open field। क्योंकि कल काफी सारी टीम्स को हमने देखा, इवन विद यूएमपी, इवन विद वेक्टर, टॉमी के साथ हमने नॉकआउट देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये रिमेंबर टॉमी के साथ एग्जैक्टली। नॉकआउट हुआ था, द कार क्रशिंग इन। सो एनीथिंग मोर क्रेजी? Anything can happen here. I mean, yes, it's the start of the map, but abhi मैं actually kind of इवन इन माई ओन ब्रेन आई एम थिंकिंग कि क्या इनिशियल फ्लैग्स होंगे कि नहीं, बिकॉज अभी जैसे हम अगर सेमीफाइनल 1 और 2 के बारे में बात करेंगे, द टॉप 8 टीम्स दैट क्वालिफाइड, टॉप 8 फ्रॉम द साइड ऑफ सेमीफाइनल्स 1 वाज अ टीम व्हिच वाज आउटराइट बैटलिंग इट आउट। हर वक्त उनका फाइट सुनाई दे रहा था मैप में, वेदर इट्स फेज 1, फेज 2, फेज 3, हर वक्त बहुत बुलेट्स और मैगजीन्स वर गेटिंग वेस्टेड एंड दे वर कन्वर्टिंग आल्सो ऑन टॉप ऑफ इट। वेयरएज कंपेयर्ड टू द सेमीफाइनल 2 एंड द टॉप 8 टीम्स दैट हैव क्वालिफाइड फ्रॉम देम, वो लोग बहुत स्ट्रैटेजाइज खेलते हैं, बहुत स्लो खेलते हैं, मैप एरिया देखते हैं, दे मेक श्योर दे आर प्लेइंग टुगेदर, दे डोंट लेट देयर टीम्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, मेक श्योर बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे कि अगर कोई भी नॉकडाउन होता है फ्रॉम अ फार ऑफ शॉट, लॉन्ग रेंज शॉट से, दे मैनेज टू ट्रेड एंड गेट हिम बैक अलाइव। तो मैं ये देखना चाहता हूँ अभी 2 डिफरेंट आई वुड से कि पेस वाले टीम से अभी झगड़ा होगा दोनों के बीच में, टॉप 8 फ्रॉम सेमीफाइनल्स 1 एंड सेमीफाइनल्स 2। हाउ वुड दिस टर्न आउट? किंग चार्ली, आपको क्या लगता है, विल दिस लाइक चेंज ऑफ पेस वर्क आउट फॉर ऑल दी 16 टीम्स, या एक टीम इसका जैसे बोलते हैं ना दुर्घटना घट जाएगी? आई थिंक कि मिस हैपनिंग्स विल हैपन फॉर श्योर, दुर्घटना घटेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अब जितने भी अभी एक्सेप्ट प्लेयर है, आई वांट टू सी लाइक वो 3 कौन से प्लेयर अभी फटाफट समाप्त हो गए, बिकॉज जल्दी जल्दी कौन कौन सी टीम ने अपने प्लेयर खो दिए हैं, बिकॉज लाइक 3 टीम्स हैव लॉस्ट अ क्विक फाइट एंड लूजिंग दोस प्लेयर्स इन द क्विक सक्सेशन पहले पहले ही सर्कल में ही, तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज लूसीफर, अभी जो टीम मिलिट्री से रोटेट करके जो जाएंगी ब्रिज क्रॉस करके, तो यहाँ पे स्वागत करने के लिए टीम रेकम खड़ी है। तो टीम रेकम ऑलरेडी लाइक दे आर ओके, दे आर एट द साइड ऑफ द जॉर्जिया साइड, बट अपना ये जॉर्जिया सिटी के भी यहाँ पर पास में दे हैव दिस एंटायर वास्ट प्लेस जिसको ये पूरा लूट सकते हैं। और यहाँ से जब ये रोटेट करेंगे तो दे कैन, हमने इनको देखा है, दे नो हाउ टू फाइट, दे कैन जस्ट यू नो लाइक, स्पेशली हम बात कर रहे हैं इनकी साइड पे रॉ की और गवर्नमेंट आंटी की, रेकम कैन डिश अ लॉट ऑफ हैवॉक। और हमने
कल स्पेशली 4 गाइस की तरफ भी मैं जाना चाहूंगा, मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे फैमिली who was the MVP and 4 guys what did the exceptional job। जब हमने लास्ट में MVP स्टैट्स देखे किसने सबसे ज्यादा डैमेज डिश आउट किया, एंड इट वाज all the 3 people from 4 guys। So I want to see like how they are rotating, what are they doing, and how each and everything is mapping out। So जिसके पास जितनी ज्यादा यूटिलिटीज होंगी, that can be a thing। एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज अभी तक हमने द 4 गाइज को नहीं देखा है। रकम को देखे, दे आर क्लोज टू जॉर्जो पुल, दे हैव ग्रैब्ड अ व्हीकल एंड दे आर मेकिंग देयर वे आउट बिकॉज वो सर्कल के पास नहीं है। जैसे आपने बोला द सर्कल इज क्लोज टू द मैंसन एंड याशनाया साइड, बट येट इट्स स्टिल फेज 1, तो दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्ले अराउंड। बट विद 5 minutes डन, अभी तक बहुत सारे बैटल्स नहीं देखे। जैसे आपने बोला देयर इज अ कपल ऑफ प्लेयर्स हु हैव बीन लॉस्ट, एक टीम पूरा टेक आउट नहीं हुआ है। पैंडा गेमिंग, दे हैव अ कपल ऑफ हाउसेस अंडर देयर कंट्रोल, पूरा लूट कर रहे हैं यहाँ पे, दे आर गेटिंग ऑल देयर यूटिलिटीज ऑनलाइन। बट वन थिंग आई एम अगेन वरीड अबाउट, जैसे पिछले बार हमने देखा था पैंडा गेमिंग मैनेज टू गेट कंट्रोल ऑफ अ कपल ऑफ हाउसेस जस्ट लाइक दिस, एन एरिया अंडर कंट्रोल। दे वर होल्डिंग दैट एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली दैट एज द सर्कल वाज क्लोजिंग इन, दे हैड टू मेक अ रन। एंड जैसे उन्होंने दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर पोजीशंस, तब उनका थोड़ा मुश्किल ज़्यादा हो गया क्योंकि they did not have a lot of path, and because it was the map of Miramar, cover भी नहीं रहेगा। तो I am worried for them in case they are still holding on to that kind of a strategy कि 1 2 4 घर हम पकड़ लेंगे, उसको फोर्ट्रेस बना लेंगे और उसके बाद में अगर फाइट्स आते हैं देखते हैं। राइट नाउ बंटी बॉयज ऑल्सो दे हैव ग्रैब्ड 3 vehicles। तो अभी जैसे हम बात करते हैं ना लाइक एंड गेम के टाइम पे, इफ यू हैव अ कपल ऑफ व्हीकल्स इट विल वर्क आउट रियली वेल फॉर यू फॉर इन एज अ कवर। बट राइट नाउ वी आर ऑल्सो टेकिंग अ लुक एट द एयर ड्रॉप कमिंग इन। इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या क्या इसके अंदर जो चीज़ था बहुत यूजफुल है कि नहीं? ओ, मैं तो फैन हूँ जी MK14 का। MK14 मेरे हाथ में पकड़ा दो, मैं 2 से 3 तो वैसे ही मार दूं, चाहे कोई भी प्रो प्लेयर हो। एनीबडी आई चैलेंज एनीबडी, यू गिव मी MK14, यू कम इन क्लोज रेंज, आई एटलीस्ट नॉक आउट 2 people, आई गारंटी यू। बिकॉज इट्स एक ना, ये मतलब गन की ना एक बड़ी खासियत है। एक आप इसको ऑटो पे जब ट्रांजिशन करते हैं, और एक उसको जब आप सिंगल बर्स्ट पे चलाते हैं, लाइक सिंगल टैप करके, तो व्हेन यू डू इट ऑन ऑटो ना, इसकी मैं कहूंगा AKM से भी ज्यादा फास्ट स्पीड है, M460 से भी मेरे को ज्यादा लगता है। एंड यू गेट ऑल द साउंड ठक 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 ठक, एंड लाइक इफ यू जस्ट रन थ्रू दिस। ओके, यहाँ पे हाइड्रा ब्लेक काफी ज्यादा फाइट लेने की कोशिश, इनका हमेशा काम रहा है, एंड ही वांट्स टू डू इट। तो MK14 इज क्वाइट नाइस, एंड उसके साथ जो आपको यूटिलिटीज मिल रही है, फाइंड दैट लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट आर्मर आपको मिल जाती है, एंड इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। एंड MK14 हाइड्रा फ्लिक, दिस गाय ऑलवेज हैज दिस 556 इन इमेंस अमाउंट। मतलब हमेशा मैंने कभी इस प्लेयर को आज तक मैंने इसको कभी 150 200 गोली कम से रखते हुए देखा ही नहीं है। लाइक इज ऑलवेज लाइक ओके, लेट्स स्पैम इट, लेट्स ट्राई डू समथिंग। ओके, इवन Ghostia on the other side from Van Gaming is shooting like crazy। तो MK14 has become a trend। हमने देखा लाइक PUBG PC में, लाइक MK14 helps you out, but Mini 14 has become this trend। तो 3x पे भी हमने देखा है, 6x पे भी देखा है, so it can dish out a lot of damage। What do you think? Like if you have to choose between an SLR or an I mean, as we were seeing Mini being used yesterday, I mean, I might start changing my gun. I mean, जैसे जनता के like majority will look forward to the M4, but maybe after seeing how Mini performed yesterday with the scope, I think I might start changing up the guns that I start using. क्योंकि जैसे kills में ले रहे थे, even with the vehicles they were managing to get knocked down when somebody was running. So I'm really worried about how much damage this minigun can do to the opponent. So maybe I start exploring it, but right now early fights तो हो रहे थे map में. We saw the God Squad, I guess, were being battled out from 2 different teams because they were on the higher ground. वो लोग एक higher ground में थे जहाँ पे वो safe लग रहे थे, but they were being dished out from, I would say, Panda Gaming, as well as एक और टीम था जो pink, I forgot the name, Gabru team, sorry, not the pink team, Gabru Gaming. ये लोग अभी भी उनका नजर the side of God Squad के ऊपर रखे हैं. Gabru, in the meantime, I guess they've spotted one more team. I think that should be the side of Team K. Ooh, that's a long range fight. Yeah, he's trying at least like 200 meters plus वो shot था, and if you have connected, तो yes, मैं कहता हूँ एक Mini 14 जो है ना, एक कह लीजिए it's a small sister company of MK14, so it can dish out a lot of damage, and you can just tap like 3-4 bullets in a quick succession. उसके बाद जाके मैं कहता हूँ
जो है मिनी 14 के अंदर जाके वो थोड़ा सा रिकॉयल आता है, तो इट हेल्प्स यू आउट। एंड मिनी 14 के साथ ही साथ मैं SLR का भी देख रहा हूँ काफी ज्यादा। आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ SKS बिकॉज SKS का रिकॉयल बहुत ज्यादा है लॉन्ग रेंज पे। तो लाइक अगर हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे बंटी बॉयज को यूज करते हुए, बट all these scopes every team is getting, like I think the loot has been very much increased। हर किसी को मैं कहूंगा जैसे जैसे स्कोप्स हैं, यू आर गिविंग ऑल दोस जो टीम के अंदर ज्यादा अच्छे स्नाइपर हैं। एंड ऑलवेज ये जो स्नाइपर हमने एक असॉल्ट का कॉम्बिनेशन देखा है, इट्स ऑलवेज गुड। यू हैव दोस ट्रू शॉट्स एंड देन यू स्टार्ट स्पैमिंग अप विद एन M416 or maybe with an AKM। so I don't, few players love AKM a lot over M416 and some do definitely love M416। So like which one do you prefer, like when you are like with a sniper combo? I mean, I have tried AK, but उसका recoil भी है ना, so controlling AK gets very difficult. So I kind of prefer M4 because it's kind of the rifle that स्वीट स्पॉट, मतलब उसका भी रिकॉइल है पर उतना ज़्यादा AK की तरफ भी नहीं है, पर डैमेज ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाता है। बट आई थिंक आई वुड प्लेस माई कार्ड्स ऑन M4। बट आई थिंक जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना मिनी के ऊपर, मिनी जैसे डैमेज दे रहा है, मिनी जैसे प्लेयर्स वर्क कर रहे हैं, मैं भी एक्चुअली इसके वजह से सीख रहा हूँ कि मिनू को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक लुक एट दिस मर्सिनरीज नागिन, ही इज डूइंग अ लॉन्ग रेंज फाइट विद अ स्कोप विद अ मिनी, और थोड़ा डैमेज करने का ट्राई किया। आई एम प्रीटी श्योर ही इज हिट द व्हीकल एंड लिटिल बिट, मे बी 20 या 30 का डैमेज हुआ है, बट ही इज मेकिंग इट वर्क। मैं इसी के बारे में, मतलब it's really wonderful to see people using rifles with scopes and making it work so that they take down their opponent. I think this is a really good strategy. As you mentioned, has sniper and assaulter combo is going to be very crucial. Oh, you see, look at that speed, man. This gun is just like another assault rifle or mini 14 gun damage, and even SLR is dishing out a lot of damage. But all these bullets are being spammed out. But जो भी है गाड़ी को कनेक्ट कर रहा है, we are not seeing any knockouts. And the surprising part is Lucifer, अभी ये 16 टीमों के अंदर के प्लेयर की अगर बात करें, all these players are like intact right now. 61 players still alive and nobody is ready to give up their life। and जितने भी मेरे को लग रहा है मिलिट्री से सारे प्लेयर थे वो सर्कल के अंदर रोटेट कर गए। एंड इवन आफ्टर रोटेटिंग इनसाइड द सर्कल फ्रॉम द मिलिट्री बेस, देयर वाज नोबडी हु वाज लाइक स्टॉपिंग एनीबडी। बिकॉज जब आप प्लेन का पाथ जा रहा होता है, यू सी ऑल दीज प्लेयर्स जस्ट ड्रॉपिंग आउट एंड यू कैन जस्ट यूज योर आई कैम पूरा 360 डिग्री रोटेट करके कौन किधर जा रहा है। एंड देयर वाज नोबडी टू स्टॉप एनी टीम ऑन टू द ब्रिज। तो इट वाज अ क्लियर ट्रांजिशन। एंड मेरा ख्याल से थोड़ी सी गलती करी है, किसी ना किसी टीम को दूसरे का स्पॉट रोकना चाहिए था। एंड नोबडी लाइक एवरीबडी सो मच स्केयर्ड ना अभी पहले 2-3 मैच में, लाइक नोबडी वांट्स टू टेक दैट अर्ली गेम फाइट। डू यू थिंक इट्स द गेम? बिकॉज 4 गाइस की भी अभी हमें अभी तक 4 गाइस को भी नहीं देखा है, दे आर इवन नॉट एंगेजिंग। As you said, I mean, grand finale, there's a lot of things on stake today. Only 2 teams, as I said, will be walking away with titles. First team, all bragging rights, first position, उनको prize भी मिल जाएगा 50,000 का. So they have so much they can do. that But right now, shot! what a shot from Ghostia! Man, M24 से इतना डैमेज, he gets a long range fight, 8x scope से he gets a proper headshot. Revive तो मिल जाएगा because Kaizo को esports were in a hard cover, so that is not something that we can be worried about. Blind in the meantime also does a damage. He managed to take one person with a car 98. यहाँ पे बहुत ही long range fights दिखाई दे रहे हैं आज King Charlie. Yeah, because you stay static, अगर आप वहाँ पे स्टेडी रहोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट कार 98 शॉट राइट ऑन टू योर हेड। और लेवल चाहे 1 का हेलमेट तो वैसे ही उड़ जाता है, लेवल 2 का हेलमेट भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ डैमेज विद दैट कार 98 एंड एवरीबडी नीड्स टू प्ले सो प्रिसाइजली। बट ठीक है, अभी भी कोई कैजुअलिटी ऑफ वॉर नहीं बना है, इट्स ओनली अ नॉकआउट। बट यस, उसके साथ आप अपना हेलमेट लूज करते हैं, then there is very high chance you won't find another helmet very soon। तो but you have to take all these things into consideration। कितने utilities है आपके पास, कितनी first aid, कितनी med kits, even the energy drinks, pain killers and even an adrenaline shot। So yeah, coming to the part Lucifer, अब जिस तरीके से सारी टीम ट्रांजिशन कर रही है, because we are already in phase 3 and soon we are going to transit into like phase 4। तो जैसी phase 4 में all these teams will get along and फिर मेरे को पता है कि एक fight शुरू होगी। तो looking at the position, I think Blind Esports is holding out a very good position, like Yeah. right in the middle of the They've circle. taken a lot of control, King Charlie. I mean,
I am happy for them because every time what was happening was they were left out of the circle, and whenever they were actually trying to get control of an area, they had to battle it out. And as they were battling it out, as I said earlier, there was a chance where they were also getting a third party fight. So right now they're in a good position, but right now Indian rivals, they're slowly making their way into the circle. Not everybody is in, but as they're making their way in, I guess they spotted a couple of either sound noises or the players themselves from the side of Team Rakam. So they're playing cautiously over there because we know the side of Team Rakam. जैसे आपने बोला था गवर्नमेंट आंटी, उसका परफॉर्मेंस मैं देखने के लिए बहुत उतावला हूँ. A government auntie, and we are talking about Or Raw. to Sweet also, right? So all these players, like I want to see how Or to Sweet also just take this game. But Link, unknown player, and all like Kharku, Wolfie guy, where are these people, man? Where is Four Guys, man? Production, please. It's my humble request. Please show us where is Four Guys. Where is all the action? वो 15 kill करने वाले बंदे कहाँ पर है? Where are they? Where are those sleeping beasts? Like, okay, Ghostia की अगर हम बात कर रहे थे, he gets another knockout. We can see that in the kill field. और वहाँ पे Indian rivals भी यहाँ पे mercenaries के नागिन सुबह को खत्म कर दिया है. And they are in a lot of trouble. Lucifer. Mercenaries बहुत ही जल्दी एक player को lose करते हुए. Now they're trying to run away from that position, but Indian rivals, they're making them work for it. Van in the meantime will also get a knockdown. Beautiful grenades being cooked. The second going down. I think this should be the end of the player who was get knocked down there. They're trying to take him down. 80 damage दिया था, and they confirm that God Squad से भी एक बंदा eliminate होते हुए. Now players are falling down. Phase 4 that we are heading into in just 20 seconds. I guess with 16 minutes done, as you said, teams are getting ready for the battle. And the force guys, that squad we are looking forward to, slowly I think they should be that we should be looking at them, but I think they have still not taken up their early fights. They're waiting, they're start understanding the opponent strategy, because you need to understand abhi pehle the 8 teams or the 16 teams they fought with semifinals too, they kind of gauge them कि ये लोग कैसे हैं, हम इनको कैसे backstab कर सकते हैं, हमारा strategy कैसे रहेगा counter करने के लिए इनको. But right now they're facing off a complete new 8 squads. So I think that's why they're playing this map slow. But once they understand, in maybe the second or the third match, we might end up seeing early skirmishes. Early skirmishes can be a very disastrous thing, और वही अभी देखने को मिल रहा है. यहाँ पे वैन काफी सर्कल की एज पे खेल रहे हैं. Now this is one thing that can be a boon and a curse at the same time, because अगर कोई और टीम आ गई और जब टीम के साथ फाइट ले रहे हो, that is good, but if the circle starts moving in, it's definitely going to give you a lot of damage. But यहाँ पे गबरू पिन फैन किल शॉट कनेक्ट करते हुए, and even गबरू के excellent, he get a knockout on to Drago. तो Drago वहाँ पे काफी ज्यादा ट्रबल में है, and he needs to make sure कि वो क्या करे. But वैन के सामने जाना थोड़ी सी गलती हो सकती है. AKM का shot, and he wants to chase them out with a car. Okay, now they are going in, and I love this thing when you have this fast and furious thing just going on, car rushing after car, and then you're blasting each and everything, right into the way. I completely agree. It's looking really good. But Kaizoku Esports, they're doing damage. And as you talked, the 4 guys are coming in. वो लोग भी पीछे नहीं हट रहे. They've taken a person down from the side of Kaizoku Esports. Panda Gaming, अभी बहुत सारे किल फीड पे लाइट अप हो रहे हैं. देखिए एक और प्लेयर Kaizoku Esports से जाता है, और KP they get a vehicle knockout. ये क्या हो गया? ग्रैंड फिनाले में KP ने Kaizoku Esports को एक कार से finish kill दिखा रहा है हमको. Van, yes, Yeah. they are kind of stuck between a couple of dunes, but आपको क्या लगता है ये as the teams are moving into the circle, they have been that shot. denied. Yeah, they have been denied, and look at mercenaries, man. They're in a lot of trouble. They lost LF2, and they're like almost okay. So I think mercenaries is the first spot which has been eliminated, I guess. Yeah, I don't know. Like they already lost 2 in the last fight, and they lost another one. So yep, we are left with only 15 teams right now. So yep, that might be the case for them. It's an end story for mercenaries. I don't know. Not okay. Mercenaries के अभी 2 player बचे हैं. We have 2 players intact. So yeah, we'll get a feed soon. But yes, okay. And we were talking about mercenaries. I jinxed it, and they lost another 3rd player in the fight. Indian rivals Dante, man. He knows he has to move in because blue zone is coming in. और blue zone के साथ ही साथ जो like all this damage and this squad following him behind the line, Roy. तो Gabru Gaming की अगर बात करें, they are connecting those shots, but they have not even got a single knockout for now, and they are helping other teams to secure kills.
तो ये बड़ा बुरा लगता है। Exactly. और द 4 गाइस आ चुके हैं फाइट के अंदर। यहाँ पे दिया ओपनिंग ने वहां पे पीजे के प्लेयर जो है प्रतीक को नॉकआउट करते हुए, और यहाँ पे 3-4 प्लेयरों ने क्विक सक्सेशन में लिए। 4 गाइस आर अगेन ऑन द ट्रोल। ओके, नाउ दे हैव ओनली secured like 3-4 kills, गॉड स्पॉट आते हुए, एंड दे गेट अ नॉकआउट। एंड यहाँ पे जो है वुल्फी गाय को गेम की एग्जिट डोर दिखाते हुए, तो वुल्फी गाय वेरी प्रीशियस प्लेयर, वी सॉ हिम लाइक ही वाज द 3rd MVP yesterday, लूसीफर। Exactly, but in the meantime, as you were talking, Indian rivals are looking really, really great on this first map of Erangel of the Grand Finals. They're getting so many kills, they're getting so many knockouts, and they're doing so much damage. And again, you can see Van is trying to survive, but in the meantime, KP is trying to take out the side of Team God Squad. They've already lost, I guess, close to 3 players now. Alpha Omega, एक shack के अंदर बैठे हुए, they're just waiting. They're right on the edge. I think अगर ये लोग timing परफेक्ट करते हैं यहाँ पे, they should be able to backstab at least 2 to 3 squads. दे माइट बी। और ये लूसीफर एक ना ये वो है फेट, कहते हैं लीप ऑफ फेथ। अगर वहीं से एक आता हो ना उड़ता हुआ एक उड़न तस्वीर जैसा ग्रेनेड आया, बूम, एंड यू आर ऑल डेड। यू आर ऑल डेड। वैसे भी हो सकता है, कल हमने देखा ये चीज होते हुए। एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके साथ दूसरी गाड़ी आती है, बैंग, एंड देन यू हैव द अदर टीममेट ऑफ द सेम टीम शूटिंग डाउन। वो अपने टीममेट को भी मारता है और साथ के साथ जो सामने वाली टीम के 3 प्लेयरों को मारता है। बट ऑल दिस फाइट, प्राउड थिंग्स Esports यहाँ पर जस्ट फायर अकेले बचे, एंड नाउ ही हैज टू गेट टूरिज्म अप एंड रनिंग ऑन हिज फीट, बट दिस जोन will start moving in soon। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है जस्ट फायर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, is only 1 bullet away from getting knocked out। भूदेव पीछे खड़े हुए, and just fire finally trying to get his HP up, but again वहां पे सबसे ज्यादा मेन फ्रैगर थे अपनी टीम के, एंड एग्जिट डोर दिखा दिए यहाँ पे। ओनली द लास्ट गाय लेफ्ट, बट क्रेजी फैमिली को रिवाइव मिल गया यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। एंड ही इज द मोस्ट MVP, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट इट। क्रेजी फैमिली फाइनली अगेन getting knocked out। So Lucifer, all this action happening everywhere, like blind Esports is just standing there। Position अच्छी होने का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। They are not able to dish out the damage because kill points also have a huge impact in the game। Kill points do have, and जैसे जैसे देखते ही the side of the 4 guys will be taken down from Bunty boys। उन्होंने बंकर का कंट्रोल लिया था, बट बंकर के अंदर दूसरा टीम ऑलरेडी है। उनको पता नहीं कि अंदर कोई है, and if they manage to check that, they should be able to clear a lot of information for them। But in the meantime, Van को भी eliminate कर देते हैं the side of Team Blind। Eventually, जैसे आपने बोला था, they do have control of a house, but वो लोग slowly but steadily they are making their impact। वो लोग kill points लेके आ रहे हैं, and they take out the side of Team Van। जिनके बारे में हमने early on बात किया थे, वो सारे टीम अभी थोड़े एक एक करते निकलते जा रहे हैं। Blind, he is looking forward to a long ranged fight। He does hit a lot of damage but does not completely connect। Crazy for in the meantime Bunty boys के एक player को knock out करते हुए, now Argus slowly creeping into the fight along with Blind। Blind अभी भी इसी एक घर के अंदर ही इतना डैमेज कर रहे हैं, and all of a sudden they were just only with 1 kill point। अभी 4 पे है वो लोग, and they're doing damage still to their opponents as they're making their way into the circle। They are making their way into the circle, और सर्कल के अंदर की अगर हम बात करें यहाँ पे क्रेजी 4, they need to take that पूरी ट्रेजेक्ट्री, और वहां से जो है सर्कल के बिल्कुल एज से घूम के उनको दे हैव टू गो इन, बट देयर इज वन अदर टीम, और यहाँ पे कार के साथ ब्लॉक करना चाहते हैं, एंड दिस कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, एंड कार को कवर बना के। बट अगेन वहां पे गोस्ट खड़े हुए हैं from Catalan Prinju, and he's trying to get the shot onto C4, but will he be able to do that? Oh, Molotov वहाँ पे ड्रॉप किया है, and he's giving that overtime damage, और यहाँ पे गाड़ी के साथ उनको ब्लॉक करने की कोशिश, और ये बहुत बड़ी गलती थी, और इसका हरजाना भुगतना पड़ेगा अपनी जान के साथ, और यहाँ पर खो दिया है, और खोने के साथ ही साथ यहाँ पर अंदर पीछे was that okay, तो यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश, and why would you even peek on 2 players, and he finally gets the revenge kill। Player OP अंदर जाते हैं using that first hit, but on the other side it's the other player, and यहाँ पे जोन के साथ मरते हुए गोस्ट। So this is one thing that you don't want to see every day, and not a player at this performance level। But yes, मान साहब he has to move out, और उनके पास जो है अपनी UAS है, he'll use it any second, and he wants to just don't want to be into the circle। देखें अगर हम बात करें लूसीफर, it's so hard to get into the circle, and that is what I was talking about। And you see all this damage being dished out, and यहाँ पे player knockout हो जाते हैं। Blind is holding it
down. वो लोग किसी को सर्कल के अंदर नहीं आने दिया अभी तक. जो भी ट्राई किया है, इवन इफ देर ट्राइंग टू कम विद देयर व्हीकल, सबको नॉक किया है. सबको बोला है कि तुम सर्कल के पास ही रहोगे, either you get killed by us or either you get now play zone damage, and they're trying to do a lot of it. Crazy 4, somehow they make their way out, but they have not made their way out from the scope of blind. Blind are still doing damage. They are up to total 6 kill points for their team. Argus in the meantime, they are still at 2, but they have also spotted the side of Crazy 4. Grenade को किया जाता है, फेंका जाता है. I think that should do a little bit of a connection damage. Oh no, he managed to get some, I would say, shell damage, that's all, but not a lot. But they have scoped it out. अभी I think जो blind को बच के ये लोग आए थे Crazy 4, अभी सीधे Argus के ऊपर आ रहे हैं, और Argus is ready for this. They have had this hard cover control, और उनको Crazy 4 जल्दी ही खत्म होते दिख जाएंगे. ये बिल्कुल जल्दी खत्म होते जाएंगे, और ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे गेम बढ़ रही है, आर्गस के पास इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर की बात करें, दे आर 4, एंड ऑन टू द साइड ऑफ गबरू गेमिंग दे आर 4, ऑन टू द साइड ऑफ ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स दे हैव 4, लाइक, एंड ऑल दीस 3 टीम्स आर सो एक्सेप्शनली वेल. इन 3 टीम की बात करें, बट ऑन द साइड ऑफ C4 they have like 3-man squad, but यहाँ पे अंदर जाना चाहते थे. Crazy 4 काफी ज्यादा गलत पीक कर दिया, and Bunty Boys being the 5th team, now we have Blind, Argus, Gabru and C4 के खाली एक प्लेयर को, एक प्लेयर ऑलरेडी धराशायी हो चुके हैं और वहां अपने पैरों पे हैं, और बात कर रहे थे यहाँ पर Crazy 4 को एलिमिनेट कर दिया है. Now it's 4v4v2, Argus के खाली 2 प्लेयर ही बचे, और यहाँ पर जो था नॉकआउट किया उसके बाद किल कंफर्म करेंगे, and I think it's final टाइम पे Blind versus Gabru होने वाला है, and it's going to be Hydra versus Killua God, an unknown player. Unknown player being the most highest versatile player for the team right now on the side of Blind Esports, getting those 4 frags, and he can be the MVP later in the series. Lucifer. Exactly. I mean, इस matchup में Blind ने जो performance दिखाया है, they have been incredible. They managed to take control of a house, and fortunately हर वक्त जब भी play zone थोड़ा change होता था, they were at the edge of the circle, and जैसे उन्होंने hold किया, nobody else has done it better. And you see, as soon as they heard sounds that Argus was fighting, they took up a fight. At Blind, I guess that was a Car 98 shot. Beautiful, a scope shot coming through. He gets a knockout on Gabru. Gabru is still surviving. They do have 4 players. Yes, there is one person knocked down. They might be able to get that person back onto feet. Hydra Flick is trying to provide cover for his team, but there is a backstab coming in from Argus. They managed to get a knockdown on Hydra Flick. Abhi sirf 3 ही team बचे. It's a 4v2v4, I would say, still, because Gabru has a chance of recovering their teammate. They do have a chance, and I think Hydra Flick को बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देना चाहेंगे. But I am talking about the circle. Circle की अगर हम सर्जन साइड की बात करें, तो right into the middle is the Blind Esports. उनको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दिख रहा है, and they know कि Argus भी है on the right side, and onto the left side you have Gabru Gaming, and Gabru Gaming are using all their smoke and utilities. But अगर जो compound का hold है वो Blind के पास है, they have a lot of cover, but the other people they don't have cover. They only have that ridge spot जहां पे अपना खाली आप सर बचा सकते हैं. तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है. अब जैसे ही ये सर्कल अब थोड़ा सा ट्रांजिशन करेगा, when you have that 8th circle forming up, तो it can be a problem. I want to see कि किसके फेवर में जाता है ये सर्कल, because suddenly now we have seen that knockout coming out onto Blind, और वहां पे फटाफट उनको रिवाइव किया जाएगा. So is it going to be the Argus who's going to play the steady game, आराम से खेले, बाद में पोजीशन के लिए they might they don't want to become that casualty of war, because they are already down to 2 people, like they have already lost, but they are already down to 2 people. So what do you think the strategy should be? Argus should stay low. I think the side of Gabru, if they manage to push in, and if the side of Argus hear that happening, they can box in the side of Team Blind, because आपने जैसे बोला left और right में दोनों team है, and if those 2 teams together push to the side of Team Blind, they will be boxed down. और अभी उनके पास पूरा जैसे बिल्डिंग का कवर था वो नहीं है, अभी सिर्फ एक स्टील का कवर है उनके पास, जिसके ऊपर, एंड दे आर ऑलरेडी क्लोज, एंड इफ अ ग्रेनेड इज बीइंग कुक्ड दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज. बट ब्लाइंड का अननोन प्लेयर, द एंगल ही इज होल्डिंग इज अनप्रेडिक्टेबल. जैसे वो डैमेज कर रहे हैं एसएलआर और एज स्कोप के, ही इज क्लियरली सीइंग ऑल द प्लेयर्स फ्रॉम द साइड ऑफ टीम गबरू. गबरू को पता ही नहीं चल रहा है किस एंगल से शॉट पड़ रहा है. आई एम प्रिटी श्योर दैट एंगल इज currently unknown, क्योंकि unknown player, they are doing so much damage. From unknown player from the side of Team Blind is doing so much damage. What do you think, Charlie? That position, I think it's like of the god position for the side of Team Blind. या वो बिल्कुल मैं कहूँगा दीवार के साथ जो कहते थे थोड़ा सा स्टील की जो टिन की छत कह लीजिए, उसके वहाँ से शॉट्स कनेक्ट करते हुए, एंड ही इज मेकिंग ऑल दोस पीक थ्रू द कार, एंड इट्स वेरी हार्ड. आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ
trouble, especially for Gabru Gaming to push in. But अभी हमें पता लग जाएगा पूरे 1 मिनट में किसके फेवर में जाने वाला है, कैसे आगे फॉलो अप करेंगे. बट यस, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज मैं कहूंगा गबरू गेमिंग के पास बहुत कुछ है. लाइक यू सी ऑल दीज ग्रेनेड्स, मोलोटोव, दोनों साइड पे अभी दोनों ने सेव करके रखे हुए. इवन ब्लाइंड आर होल्डिंग अप विद द मोलोटोव एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे गाड़ी जैसी थोड़ी सी चलने लगी, दैट शॉट कमिंग आउट फ्रॉम किलुआ गॉड. एंड अब मेरा ख्याल से यहाँ पे रिवाइव होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा रॉय के लिए. आई थिंक दैट वाज बीइंग ग्रीडी, लाइक ही वाज ट्राइंग टू मेक दैट कवर ऑन टू दैट अदर साइड, बट पीछे से पूरा धीरे धीरे करके रिगड़ते हुए जाते हुए. एंड आई गेस इट्स द सेकंड नॉकआउट, बट यहाँ पर फिर से शॉट कनेक्ट करने की कोशिश. एंड डी वो आर्गस क्या पे किल लेते हुए रॉय के ऊपर. करे कोई, भरे कोई, मारे कोई, पाए कोई. आर्गस आर टेकिंग दोस किल्स into their bank account, and that will definitely help them. Every kill counts, Lucifer. Exactly. I mean, look at Argus playing smart. As you said, right, what should be their strategy? They're just laying low. They're not trying to commit to any fights. They're just letting Gabru as well as Blind fight it out. जो भी उनके बीच में होगा, हम उसके ऊपर कैपिटलाइज कर लेंगे. एंड जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, एक ग्रेनेड कुक किया जाता है, फेंका जाता है, they get a kill on Gabru's Roy. That is really good. But right now, as the circle has shifted, as we are in the last phase, देखिए अभी कोई सर्कल नहीं, अभी चारों तरफ से या सारी दिशाओं से सर्कल छोटा होता जाएगा. So every team needs to start pushing in, and that's what the side of Blind is doing. They decide that let's be the openers. हम अभी advantage use करते हैं because we know Gabru is at a disadvantage. We are at a 4-man advantage. If we push in at the right moment and if we get a couple of kills, we will be taking a lot of area control. And Argus cannot do that slow gameplay and a backstab. But Argus have already managed to do that. Argus have spotted two player, that is going to be Naitik. He's cooking up a grenade. He is trying to throw it. He might be able to connect a few shots with that, but he's also spotted a couple of more players. 8 knock to mil jata hai. Kilua God, who got a beautiful Kar 98 headshot, but right now gets knocked down. और यहाँ पे नैतिक के ऊपर काफी ज्यादा गोलियों के साथ प्रहार किया जा रहा है. बट ब्लाइंड ऑन टू द अदर साइड, अननोन प्लेयर यहाँ पे हाइड्रा फ्लिक को नॉकआउट करते हैं. एंड ब्लाइंड के लेंस जो हैं, ही इज गेटिंग नॉक्ड आउट. सो बोथ साइड ट्रांजिशन जो मैं कहूंगा ट्रेड ऑफ चल रहे हैं. बट गबरू गेमिंग यहाँ पर 2 प्लेयर खोते हुए, ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के नेती बचे. और यहाँ पे लाइक 1v1 गबरू गेमिंग विल टेक द थर्ड पोजीशन. 10 किल आ चुकी है यहाँ पे बैंक अकाउंट में ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स. दे विल बी रियली हैप्पी. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट विनर चिकन डिनर. आर्गस गेट्स द लास्ट किल और इसी का फायदा उठाते हुए. एंड लाइक दिस वाज द स्ट्रेटजी दैट आई वाज टॉकिंग द होल टाइम. वाओ, कर कोई रहा है, भरपाई कोई कर रहा है, मार कोई रहा है, पा कोई रहा है, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए. That was a well calculated gameplay. Argus Gaming taking those 4 crucial extra points. And ये मैं बता रहा हूँ बाद में बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले लूसीफर, बहुत ज्यादा हर्ट करने वाले. Exactly. आप जैसे बोल रहे हैं, the last 4 points which was there, 10 points, double digits. एक पहले मैप में भी जो Blind could have captured, even though they had 4 people alive, they could not convert the fights. उन्होंने, I think they made an early call with those smoke grenades coming through. They did not worry about the side of Argus, but Argus took that as an advantage. They peaked a little bit, started knocking the players of Blind, and Blind all of a sudden got a distraction from the side of Argus. And उसी gap को the side of team Gabru start capitalizing. They get a couple of kills on Team Blind, and from there Team Blind immediately shift on. So Team Blind left right दोनों जगह देख रहे थे. I think that's what took them down. When it became a 1v1 fight, unfortunately the last player from the side of Team Blind, he jumped out of the play zone, and as soon as he realized that he's getting hit by the play zone, he jumped back in. But that jumping, I think, was a clear vision for Argus, and दिखते ही spray down कर दिया. That is just beautiful play. Waited for it. Like I'm very much speechless क्योंकि आपको पता है. एंड जिस तरीके से फाइट ब्रेक थ्रू हो रही थी ब्लाइंड एंड गबरू गेमिंग, लाइक दे वर टेकिंग ऑल दोस शॉट्स. वहां पे हाइड्रा फ्लिक नॉकआउट होते हैं, वहां से गबरू गेमिंग के प्लेयर वहां पे नॉकआउट करते हैं ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स को. देन देयर इज वन मोर ट्रांजिशन एंड दैट ग्रेनेड beautifully dropped in जो कि 3 प्लेयरों को कनेक्ट करता है, coming out from Argus, and then he starts shooting all those bullets through his AKM. Then he drops down. He's left on 19 HP. He uses his first aid. Meanwhile पीछे से वहां से अटैक होना स्टार्ट होता है गबरू से, and like 3-3 डाउन हो जाते हैं. Already Roy gets taken out early fight में जब उनको ग्रेनेड करके Argus already. And I think those are some crucial kill points that you get into your pocket, plus those 4 points. But yes, Blind did play well, position hold करी. They made it into double digit kills. I think they ended up with 11 or 12 kills on the board. 10 पे तो already they were with the killing spree. So what a exceptional calculated gameplay. But yes, जितने भी सारे दर्शक हमें ज्वाइन कर चुके हैं,
हम इसके ऊपर और आगे विचार विमर्श करेंगे। मैं और लूसीफर आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे इस 10 मिनट के छोटे से ब्रेक के बाद। See you again. Got him. Let's go.
high. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Feel alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more. Got him. Let's go.
देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से एसोस शोडाउन सीरीज में। और मैं किंग चार्ली, मेरे साथ यहाँ पे लूसीफर जुड़ चुके हैं। लूसीफर, व्हाट्स अप? Man, I'm still in a daze right now because जैसे मैच हुआ वो वाला ब्लाइंड वर्सेस आर्गस वर्सेस गब्रू, पता नहीं चल रहा था किस तरफ जा रहा था, पर सो गुड गब्रू प्लेड कि उन्होंने अपना पोजीशन बनाए रखा इवन दो दे वर इन ओपन ग्राउंड। अर्गस आई वुड से दे हैड काइंड ऑफ अ कॉम्पाउंड एडवांटेज एज दे वर मूविंग इन, बट जैसे उनका भी एडवांटेज निकल गया, दे आल्सो प्लेड अ लॉट really well compared to the side of blind esports unfortunately उन्होंने जो सडन डिसीजन लिया कि हम अग्रेस करते हैं, आई थिंक वो वाला थोड़ा उनको हिट किया, जिसके वजह से वो लोग थोड़ा अभी नीचे आ गए सेकंड पोजीशन पे। बिल्कुल, यहाँ पर जो गेम हम देख रहे हैं बिल्कुल ये पूरी पैक्ड है, पावर्ड बाय इंटेल। और यहाँ पे जो आरओजी शोडाउन सीरीज के अंदर आज का जो ग्रैंड फिनाले हो रहा है उसका पहला स्कोर कार्ड आप सबके सामने है। आर्गस फर्स्ट पोजीशन लेती हुई 19 पॉइंट के साथ 9 किल करे, तो उन्होंने ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स ऑन द अदर साइड यहाँ पे 10 किल्स। और आर्गस ने जिस तरीके से ट्रांजिशन किया है गबरू की और ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स की जो किल्स अपने सारे नाम पे करी, उसका नतीजा ये निकला है। और ये जो पॉइंट्स है ना, जो 4 पॉइंट्स में बोल रहा था, वो भी काफी ज्यादा मैं कहूंगा दुख पहुंचाने वाले। क्रेजी फोर ऑन द अदर साइड, क्रेजी फोर ऑल ऑफ अ सडन कल हमने देखा था इनको 8 पोजीशन पे क्वालिफाई करते हुए, एंड नाउ दे आर इनटू द 4th पोजीशन। ओ ये काफी इंटरेस्टिंग है। बट अभी के लिए आगे बढ़ते इंडियन राइवल्स की तरफ, जो कि 7th रैंक लेकर आया है बट 7 किल करी है। दिस टीम हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड रैंक पॉइंट्स की अगर बात करें तो 1, बट वहीं पे कैटलान प्रिंजू 4 किल करने के साथ ही साथ 2 रैंक पॉइंट, 6 उनका अंक बनता है। और साथ ही साथ वो 6ठी पोजीशन पे हैं। बंटी बॉयज रैंक उनकी भली चाहे 5th आई हो, किल्स कम करने की वजह से उनका टोटल स्कोर टैली जो है किल्स, क्योंकि उनकी खाली 3 हुई थी, साथ ही साथ रैंक पॉइंट 3 मिले और 6। बट यहाँ पर जो टीमें पीछे रह जाती है वो 4 गाइस को खाली जो है 3 अंक मिल रहे हैं और रैंक 10 आई है। तो यहाँ पे लूसीफर इनके लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी 8 के बाद जो टीमें हैं, जो 8 से लेके 16 तक, इनको फिर कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे। एंड दिस इज वेरी सैड, यू डोंट हैव एनी रैंक पॉइंट फॉर देम। नो तो रैंक इसमें पॉइंट काइजिको ई इसके वजह स्पोर्ट्स, से पांडा गेमिंग, मर्सिनरीज, क्या किसको लाइक हु कैन बी द मैच में प्ले कर रहा है, क्योंकि मेरा मार आने वाला है अगला गेम। एग्जैक्टली आई मीन अभी the change up can still happen. जैसे हमने कल बोल रहे थे best of 3, in the best of 3 they should have a buffer map. Maybe this might be the map that the side of the 4 guys and every other team Rakam as well, team Van, बहुत सारे टीम्स जिसके बारे में हमने सोचा था, mercenaries as well eliminated at the 16th position. ये सारे positions were the top teams. अभी हम top teams का position देख रहे हैं, they are all new. ये लोग कल top 3 या top 5 में नहीं थे, they were about to be at the top 5, close to 5 to 7, 6, 7, 8, those positions, but today they're on the top 3. So they have done their first match impact. But I think ये वाला map, वो बोलते हैं ना कि थोड़ा when you start new into a game, or when you start on a new day, you're still having the new game jitter. So maybe this is that first game का वो लोग बोले भगवान के लिए छोड़ देंगे ये गेम, अभी 4 मैप आने वाले हैं, उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्योंकि अभी if they don't manage to show consistency in the next upcoming 4 maps, that is starting off with Miramar, I think it'll be a hard ask, because blind उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था। They took control of a position and managed to hold it for a strong time. भले उनका फाइट्स थोड़ा I would say miscalculated था कभी कभी, when they started to move into the last zones, they were trying to aggress, they wanted to finish the game as soon as possible. But अभी वही करते हैं क्या? Will the side of blind use the same strategy, या आपको क्या लगता है किंग चार्ली, will the side of team blind be a target, because उन्होंने बहुत सारा kills भी लिया था? आई थिंक दे वोंट बी अ टारगेट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, बिकॉज काफी ज्यादा कैलकुलेटेड गेम प्ले मेरे को उनका दिख रहा है एंड वेरी प्रिसाइज। आई एम वेरी मच सरप्राइज, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने गेम प्ले दिखाया, उन्होंने अपने, कहते हैं ना हर किसी के पास, इफ यू एवर प्लेड पोकर इन योर लाइफ, तो यू नो लाइक हाउ टू ब्लफ, एंड ब्लफिंग इज वन थिंग विच मेक्स यू विन अ लॉट ऑफ कैश एंड मनी। एंड वही कल ब्लाइंड ने किया है। वो उन्होंने अपने जो हुकुम का इक्का है, यू डोंट एवर शो कि तुम्हारे पास फ्लश है और यू हैव अ फुल हाउस, और यू मे बी हैव लाइक 3 of a pair or something like that, or maybe you like have so many pairs, like all it can be so many transitions that we are seeing right now. But जिस तरीके से अभी प्लेन की ट्रेजेक्टरी जा रही है, मिरामार is one of the huge vast map, like anything can happen, and the slope फाइट हमारी जो है एंड के सर्कल में एक स्लोप पे हो सकती है। इट कैन बी एन ओपन वास्ट प्लेन, रॉकी माउंटेन्स, एनीथिंग। इट्स लाइक
ऑल अबाउट ट्रांजिशनिंग योरसेल्फ, और जिस तरीके की ट्रेजेक्टरी की टुवर्ड्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, तो वो जो ईस्टर्न पार्ट है बड़े सारा दूर दूर के, अगर हम बात करें कि टेरा ब्रोंका हम बात कर रहे हैं, कैंपो, मिलनार, इधर ये सारी जो एल अधार, ये सारी जगह छेड़ी नहीं जाएंगी। वही फिर हम देखेंगे पिकाडो, लॉस लियोनिस में भी हम खाली एक ही टीम को देख रहे हैं। एंड देखिए कैटलन प्रिंजू, दैट वाज अ रॉन्ग जंप जो हमने देखा, एंड ही गॉट दैट डैमेज। तो वही लूसीफर, अभी जो टीमें पीछे रह गई हैं जिनको कल हमने इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा, द गॉड स्क्वाड, द फोर गाइज, दे डिडंट इवन गेट अ सिंगल रैंक पॉइंट। Catalan, Prinju, what do you have to say about all these teams? We were looking forward to these teams coming up, but बोलते हैं मैं अभी तक उनके ऊपर कुछ conclusion नहीं करूँगा. The only reason is it was the first map, and as I said, they are still trying to pace themselves क्योंकि opponents थोड़े change हो गए. The pace of the game has also changed. जैसे हमने बोल रहे थे कि this change of pace might affect a couple of teams, which we started seeing in the first map of Erangel. But now they have understood कि कैसे team से हमारे साथ और हमको कैसे खेलना पड़ेगा. So just like how blind played, composed, holding grounds, holding the circle in their benefit, I think if a couple of teams start managing to hold this kind of a play, I think this should work out. But right now team Rakam, I think वो अभी भी early on fights लेने के लिए तैयार है, and they've spotted one person from Panda Gaming. Spray तो किया है, 23 damage will be dealt, but immediately they understand, okay, right now running in an open, especially in the map of Miramar, is not going to be beneficial for anybody, and immediately goes for cover. But Rakam ki team, they want to take this early on fight because हमें पता है, if you take a early on fight, there will be very less utilities that the opponent will be having, and if you convert on top of that, you have a couple of free finishing points. या और यही सारी चीजें है सैन मार्टिन के भी। अगर हम बात करें, अभी अगर हम देख रहे हैं टीम केपी को, तो ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा चांस है। कैटलन प्रिंजू के इतनी लूट लेने के बाद अगर आप उसको अच्छे तरीके से कैपिटलाइज ना कर पाए तो देन एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ये चूमा सहरा का थोड़ा सा हम जो देख रहे हैं मैप के अंदर पूरी वास्ट फील्ड, तो इतनी सारी चीजों के बीच में अगेन यू हैव दिस मिनी 14 इन योर हैंड्स, और अगर इसके अंदर आपके पास एक्सटेंडेड मैग हो, यू ऑलरेडी हैव दोस 30 बुलेट्स, यू कैन जस्ट कीप फायरिंग एंड कीप स्लेइंग। बट अब ये सबसे बड़ी चीज है जो लूसीफर, इधर जो पहली दो ड्रॉप्स गिरती हैं मेरा मार के अंदर, जो ड्रॉप्स है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, स्पेशली इफ यू गेट दैट क्रूशियल AWM। और अगर वो AWM आपके Exactly. हाथ में आती है, एंड इवन इफ इट्स अ लेवल 3 हेलमेट, तो यू आर गोइंग टू डिश अ हेल लॉट ऑफ डैमेज। अगर वो आके बुलेट ड्रॉप करके अगर वेस्ट पे भी लगती है, इवन इफ एंड इफ यू गेट बैक टू बैक 2 शॉट्स maybe on 2 different players, then also your team on the other side, they can just rush in and give that extra amount of थोड़ा सा जो डैमेज रह गया, and you get those 2 knockouts, and when it's like a 2v4 situation, हमने देखा है हमेशा टीम जो होती है जनरली 73% ऑफ द टाइम वो टीम जीतती है जो होगी जिसके पास 4 प्लेयर बचे होते हैं। बट अभी स्लोली एंड स्टेडली ऑल दीज टीम्स आर बिल्डिंग अप, हर किसी का हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे उनकी प्रेफरेंसेस है, एंड ये मे बी हमारे को फोर्थ मैप में ज्यादा हेल्प करेगी कि कौन सी टीम किसको प्रेफर कर रही है। बिकॉज लाइक रेकम दे आर जस्ट लूटिंग ऑल दीज वेयर हाउसेज, लॉस लियोनिस की साइड पे पूरा ये जो इनको फ्री हैंड मिल गया है, एंड इट्स हैवी अमाउंट ऑफ लूट। Exactly. मतलब कितना मैप का उनको कंट्रोल में है। आई थिंक कंपेयर टू ऑल दी पोजीशन, लॉस लियोनिस इज गोइंग टू बी अ बिगर ग्राउंड, एंड अगर एक ही टीम यहाँ पे है, दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज फॉर द साइड ऑफ टीम रकम। बट आई एम स्टिल वरीड कि जैसे सर्कल चेंज होता जाएगा, आई सॉ वन प्लेयर दैट वाज काइंड ऑफ टुवर्ड्स द एज ऑफ लॉस लियोनिस, जो अकेला था, हु वाज डिसबैंडेड फ्रॉम ऑल ऑफ हिज टीममेट्स। मतलब एक्चुअली डिसबैंडेड नहीं, पर वो अपना ही कुछ अलग दिशा में चल रहा था। एंड ऑन द मैप ऑफ मिरामार यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज एज वी सेड there are a lot of open spaces, so you should be worried about each and every angle as you are heading into different directions. But right now the side of Kaizoko Esports, ये लोग बहुत सारे vehicles acquire कर रहे हैं। they deny the old buggy bus and they managed immediately to take down a car because पता है कार थोड़ा fast होता है उस बस के वजह से, and I think changing of this vehicle will be really good, but still they are in the open, they're going down the streets of Miramar. If there's any street dangerous, that's going to be the side of streets of Miramar. But right now heading into the circle as well, close to water treatment, they are not in terms of a difficulty, or there's no team that is very close as they're entering water treatment. They cannot be worried about it, so they have a safe zone as they're entering. But if they manage to, just like we saw the side of blind esports who managed to take control of the circle, if they do that, it's going to be very very good. But right now Alpha Omega, I think they're spotted out a team. Spray to aa raha hai, but the damages have not been connected. The mag gets over of 40 bullets,
And I guess Team Rakam make a run for it. No, it's the God Squad. My bad. Team God Squad make a run for it. ये बहुत बड़ी गलती है, गाड़ी पूरी की पूरी मैं कहूंगा धराशायी हो चुकी है, खाली 5 गोलियों का खेल रह गया और शॉट वहां पे कनेक्ट was that a shot connected? Okay, finally you have this drop के सामने the 4 guys, okay, the people who are lurking around this drop, okay, आते हैं, देखते हैं कि वहां पे किसी और की भी गाड़ी है, they don't want to fight it because the shots are being connected, translucent, यहाँ से फटाफट निकलना चाहेंगे, and the God Squad, okay, so 16-team पे the 4 guys get annihilated and that car gets blasted off by Rakam. And wow, what just happened? गाड़ी 4 guys, King Charlie 4 guys ने बोला ठीक है, हमें पिछले मैच में तुम लोगों ने धमाका करने नहीं दिया, हम लोग अभी करके दिखाते हैं. एंड विद इन अ सेकेंड, जैसे आपने बोला गाड़ी को ब्लास्ट किया, होपफुली वी कुड हैव सीन दैट, बट जैसे उन्होंने किया, दे वाइप्ड आउट द साइड ऑफ टीम रकम. देयर कंपटीशन, रकम वाज रियली गुड इन द सेमीफाइनल्स वन एंड उसको निकाल दिया, तो देयर कंपटीशन इज टर्न्ड आउट लेस. द 4 guys आर रेडी फॉर दिस बैटल. उन्होंने बोला हम, यू डिड नॉट लेट अस आंसर इन द फर्स्ट मैच, बट अभी मीरामार में हम हमारा धमाका दिखाते हैं. एरेंगल में दे वर ऑलवेज गुड. मीरामार में देयर वाज चांसेस दैट दे वर अबाउट टू लूज, बट दे ऑलवेज केम इन द टॉप 2 position. But the way they managed to destroy the side of Team Rakam, man oh man, I'm pretty sure Rakam पिछले मैच में भी they ended up with 0 points in I guess 12th or 13th position. kill points भी नहीं था उनका. इस बार भी the same thing happened. Well, I think very miscalculated मैं production, like we were watching, अभी 4 guys को हमने देखा था गाड़ी के पास ड्रॉप पे, एंड रेकम वाज स्टैंडिंग एंड दे वर शूटिंग देम, और फटाफट उन्होंने दीवार की कवर ली. और आई थिंक लाइक आई एम मेकिंग दिस स्टोरी बिकॉज मैंने 4 guys को वॉल के कंपाउंड के पास जाते हुए देखा और वहां पे रकम की गोलियां कनेक्ट हो रही थी, एंड दे जस्ट ड्रॉप्ड आउट एंड दे स्टार्टेड शूटिंग इट. एंड आई डोंट नो, रकम ने उनको पहले शूट करना स्टार्ट किया था, एंड आई गेस दे वर शूटिंग देम फ्रॉम द कार. व्हाट in this sense, I don't know, like was this a Rohit Shetty movie that was going on, के भाई गाड़ियां लेके जाओ अंदर and then you कारवा लेके and you go 4 people just go in right on the face of 4 guys, like you're going to a world's best, like I must say India की बेस्ट टीम, जो कि कल के हर गेम में 15 खेल लो. तो मेरे ख्याल से शेर सोया हुआ था और शेर जाग उठा है. बट यस, कमिंग बैक टू माय सेंसेस, बंटी बॉयज वेस्तु को यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंड आई डेफिनेटली, अगर हम इफ यू कुड हैव कैप्चर्ड इट, वुड हैव बीन द एमवीपी मोमेंट, लाइक द कार गेटिंग द बूम एंड टीम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स. तो इट वाज, और अभी जो ड्रॉप मिली है उसमें AWM थी, लूसीफर, एंड नाउ दैट, जस्ट थिंक अबाउट इट, एक टीम को समाप्त कर दिया है, and over that you get a cherry on the top, that's an AWM with a level 3 helmet and a vest. I think बहुत बढ़िया बेट किया है द साइड ऑफ 4 guys. उनको पता चला ठीक है अभी ड्रॉप आया, देयर शुड बी सम टीम हेडिंग ओवर टू इट, बिकॉज ऑम इस मैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है. वंस यू गेट दैट हायर ग्राउंड एडवांटेज, यू विल बी एबल टू अनाइलेट योर ओपोनेंट. एंड उन्होंने वही किया, उन्होंने सोचा कि रुको हम लोग ऑलरेडी ड्रॉप के पास है, देयर शुड बी अनदर टीम हु माइट सी दिस एंड कम, एंड वेटेड फॉर दैट रकम टू बिकम अ बेट. एंड क्या ही शानदार तरीके से उनको निकाल दिया. बट राइट नाउ आई सी दैट द साइड ऑफ बंटी बॉयज, अर्गस, ये सारे टीम्स हायर ग्राउंड ले चुके हैं. अर्गस इज ट्राइंग टू फाइट विद आई गेस वैन, बट वैन इमीडिएटली कवर पे चले जाते हैं, and Argus still looking for other teams or opponents. And Gabru I guess they were fighting with the side of Kaizoku Esports, जो एक बिल्डिंग में फंसे हुए थे, बट वो लोग immediately सेफ जोन में चले जाते हैं. And again look at that, हमारे किल फील्ड पे the 4 guys एक और टीम को निकालते हुए जा रहे हैं. हंटर गेमिंग gets confirmed from the side of Alpha Omega, and right now that was very very unfortunate. Gabru and Argus, I think these two teams, we might end up seeing a clash very soon happening, but Gabru का position सिर्फ एक ही टीम को पता था, and वो टीम has backed off from the fight. And see, this is what is happening, like Crazy Family is like one of the top highest dealing damage person, जो कि हमने कल देखा था. He dished out a damage of in 3 games around about 2700. So yes, exactly. That is one guy you don't want to miss out with. और यहाँ पे देखिए 4 guys देखिए अपनी अलग अलग कार लेके जा रहे हैं, एंड अल्फा ओमेगा रिस्क तो ले रहे हैं बिकॉज ही डजंट नो कि उनके पास 8x है, वो भी ऑम के ऊपर, और वो जब अगर कनेक्ट हो गया इनके ऊपर, तो देन दिस गाय इज डेफिनेटली गोइंग डाउन, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ हेलमेट एंड वेस्ट देयर इज नथिंग ऑन क्लैडिस्टाइन. अभी हम जो उनको देख रहे हैं, ही इज लाइक आर्मर बहुत ज्यादा क्रूशियल चीज है, मैं कहूंगा मिरामार के अंदर स्पेशली, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ से फाइट ब्रेक थ्रू होने वाली है, एट विच माउंटेन टॉप कौन सी
खाई पे कौन सी मैं कहूंगा चोटी पे मौत खड़ी हो, भिन भिन आ रही हो. इट्स लाइक somebody or the other person might be lurking around and they might be checking out, अच्छा यहाँ पर है, एंड वही कहीं पे गाहें कहीं पे निशाना. तो इट्स लाइक अ थिंग that is going on right now. But yes, blind यहाँ पर अंदर जाते हुए unknown player will take out Bunty boy Hades and he'll see the end of this game and he'll sit down and watch out with his teammate. But blind रुकने नहीं वाले. Lynch is trying to get all those shots and will also get bits too. तो ये चीज है सबसे बड़ी. Lucifer, कार जा रही है and it creates that sound, and when you hear that motor sound, shots are being fired. सेम थिंग अभी देखो हाइड्रा फ्लिक गब्रू के टीम से ये लोग फायर करने का ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम दिस एंगल. मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मीरा मार का उनको साउंड क्यूज मिल जाएगा. बट वैन अभी इंडियन राइवल्स के साथ फाइट ले रहे हैं. इंडियन राइवल्स कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 लोगों को नॉकडाउन कर दिया. वैन का ये फाइट इज नॉट वर्किंग आउट. Swap as well as Ghost, yeah, both of them go out. But Kaizoku Esports also take one advantage on the side of Team Van. Now Van is at such a huge difficulty. अभी सिर्फ 2 ही टीममेट्स बचे हैं. उनका ऑलरेडी थर्ड पार्टी फाइट हो चुका है Kaizoku Esports से. इंडियन राइवल्स को पता चल गया होगा इसके बारे में, एंड इंडियन राइवल्स आर ऑन द लुकआउट फॉर दैट. बट गब्रू, I think they are trying to reposition themselves. They have come down from their higher ground. Indian rivals also spot out the side of Kaizoku Esports. थोड़ा डैमेज मिल जाता है इंडियन राइवल्स को. एड्रेनलिन शॉट लेते हुए वो लोग रिकवर कर रहे हैं अपने एचपी और एनर्जी ड्रिंक्स लेते हुए. बट आई थिंक Kaizoku Esports, the higher ground that they've taken is a huge advantage for them. अभी if they're up for this fight, they might be able to get a total of 6 finishing points here. जी बिल्कुल. यहाँ पर काइजिको ई-स्पोर्ट्स की हम देख रहे हैं, कल भी इन्होंने काफी अच्छी थर्ड पोजीशन फिनिश करी थी. मेरा मारी मैप था जहाँ पर इन्होंने अपने 3 प्लेयर खोए थे गवर्नमेंट आंटी से, एंड आई थिंक दे वोंट मेक दैट सेम मिस्टेक ऑल ओवर अगेन. यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन राइवल, दे वर ट्राइंग टू गेट दैट पोजीशन, बट ऑन द अदर साइड वैन इज ओनली लेफ्ट विद 2 पीपल एंड दे हैव बिकम द कैजुअलिटी ऑफ वॉर. मगर यहाँ पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश साइफर की तरफ से, एंड ही विल गेट दोस 2 शॉट्स, बट यस इट वोंट बी ट्रांजिशन इनटू अ नॉकआउट. बट वहाँ पे बॉस ऑन द अदर साइड फ्रॉम काइजिको ई-स्पोर्ट्स, तो ये शॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, बट दीस शॉट्स आर नॉट हेल्पिंग बिकॉज यू आर ऑन द लोअर ग्राउंड, और वहाँ पे हायर रिच पे यू कैन जस्ट इवेट दो शॉट. थोड़ा सा अगर आप नीचे क्राउच होके बैठ देंगे, सो देयर इज नो वे. एंड इवन इफ यू गो डाउन एंड देयर इज दिस, ओके, डिड आई हर्ड अ ग्रेनेड? Was that a grenade right now? Like I thought somebody threw a grenade. It sounded maybe, I think वो नीचे गिरते हुए कुछ क्लिंग क्लैंग की आवाज आ गया. बट right now Indian rivals are stuck. The side of Team Van is stuck. Kaizoku Esports is also stuck because Argus उनके ऊपर और भी higher ground लेते हुए आ गया. But Van will be able to find a beautiful knock on Indian rival, but I think he is really safe. He should be able to do something better. But Indian rivals के सलमान पटेल वो flank करने के लिए ready हो चुके हैं. I think उनका position अभी तक compromise नहीं हुआ. And if Salman Patel finds one knock, the whole squad of Team Indian rivals पूरा अटैक मोड पे जा सकते हैं वैन के ऊपर, क्योंकि वैन के टीम में सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ होगा. राइट नाउ मर्सिनरीज आल्सो कम ऑन टू अ फाइट विद द साइड ऑफ Kaizoku Esports. Kaizoku Esports, they are running away from the side of Argus Gaming, Mercenaries, and they are trying to get a couple of kills. But in the meantime, Indian rivals, as I said, they find their opening frag. But in the meantime as well, kill feed पे देखते हुए God Squad, they managed to take one person down to the knees from the side of the 4 guys. Kaizoku Esports अभी भी बहुत ही मुश्किल में, क्योंकि उन्होंने हायर ग्राउंड लिया हुआ था कंपेयर टू द साइड ऑफ वैन ई-स्पोर्ट्स, वैन एज वेल एज द साइड ऑफ इंडियन राइवल्स. बट उनसे भी ऊपर बोल के माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे. यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट योर पोजीशन बोल के Argus as well as 2 more teams trying to backstab them now. Kaizoku Esports at a very difficult position. पोजीशंस की अगर बात कर रहा हूँ मैं, एक सबसे बड़ी चीज कि बड़ी स्लो तरीके से गेम को लेके जा रहे हैं. ओके, किल फीड वी सी गबरू रॉय टेकिंग आउट अनदर प्लेयर, बट यही अब सारी चीज है कि बार बार जब भी आप नॉकआउट कर रहे हो, मैक्स इज इन लॉट ऑफ ट्रबल एंड ही हैज टू मैक्स हिज एचपी अप. जल्दी फटाफट अपने आप को बम करना चाहेंगे. बट यस, द सर्कल इज क्लोजिंग इन लूसीफर एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फेज 4. और यहाँ पर हम बात कर रहे थे, वहां पे कैटलन प्रेंजू, वहां पर केपी के गोस्ट, वहां पर नॉकआउट होते हो. सो आई थिंक दिस इज वन प्रॉब्लम व्हाट वी हैव सीन. द गॉड स्क्वाड वहां पे एक अपने टीममेट मेंबर को लूज करते हुए, एंड ऑल दीस टीम्स आर जस्ट मूविंग इन, एंड दिस इज एन ओपन प्लेन. अगर हम एक साइड की बात करें, टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड यू हैव दिस माउंटेन स्लोप एंड ऑन टू द नॉर्दर्न साइड. और वो नॉर्दर्न साइड पे जिनको एडवांटेज मिल जाएगी लूसीफर, आई थिंक देन देयर ऑल दीस शॉट्स getting connected, and we have not seen blind esports till now. Exactly. I mean,
पिछले बार द फोर गाइज नहीं दिख रहे थे, अभी ब्लाइंड नहीं दिख रहा है। एक दो बार दिखे हमको, बट अभी तक नहीं दिखा है। अभी सिर्फ एक ही टीम एलिमिनेट हुआ है, दैट इज द साइड ऑफ टीम रकम। अभी भी 15 टीम्स आर अलाइव, 15 मिनट्स आर डन, नाउ वी आर इन द फेज 3। पिछले बार भी जैसे फेज 3 खत्म होता आ रहा था और फेज 4 में जा रहे थे, हम लोग बहुत ही फाइट्स देखने के लिए मिल गए। अभी गबरू विल बी स्पॉटिंग आउट वन opponent from the side of team 4 guys। थोड़ा डैमेज तो मिल जाएगा, but Bunty boys in the meantime confirm a kill on the side of team Blind's unknown player। Gabru find another। Gabru की position बहुत ही अच्छे है। Look at this, Gabru have spotted Alpha Gaming, Gabru have spotted Panda Gaming, they have also spotted Alpha Omega as well as the 4 guys। तो उनका higher advantage I think is a little bit better compared to कोई और team। देखिए यही चीज है, बार बार जो है हम देख रहे हैं कि पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है लूसीफर, और वही हम देखने को मिल रहा है बार बार। बट रॉय इज ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दोस शॉट्स एंड ही डिड मैनेज टू गेट 2। एक और अगर शॉट कनेक्ट होता है और गाड़ी वहां पर जाके रुक जाती है पत्थर के साथ, और ये जो है रॉय के पास, यही मैं कह रहा था ना, पोजीशन इज एवरीथिंग। एंड यूएस को वहां पर थोड़ा सा पीछे ड्रॉप आउट कर दिया, बट अगेन यू आर देन stuck at that haystack। वहां से रॉय निकलने नहीं देंगे, एंड ही इज आउट ऑफ एमो, ही इज लाइक 7/0। he's only left with only 7 ammo right now। but yes, 4 guys is on another side and they're fighting। और यहाँ पे रॉय को उल्टी गोलियां लगनी शुरू हो गई। ये थोड़ी सी उल्टी गंगा जो बहनी शुरू हुई है ना, इसका इनको बड़ा दुख होएगा। this is some damage you don't want to take it। Exactly. I mean, every team is thinking they are at a better position, but immediately there's another team that's fighting with them। But right now, again, the 4 guys, 10 kills free, they eliminate another team। That's going to be the God Squad। जो भी टीम के ऊपर हमने सोचा था वो लोग इतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं आज। गबरू, they are trying to take out damage on the side of 4 guys। थोड़ा bullets connect होते हुए, I think one person is knocked out from the side of 4 guys, and I think they will be letting him be because उसको revive करने जाएंगे, they will also go down because they are out of the play zone। and you can see one player is already making his way। I think the side of 4 guys अभी सिर्फ 3 या 2 players के साथ रहे होंगे। you can see that knockout gets confirmed from the side of team Gabru, but Crazy 4 is on a better angle। they are trying to spot out the side of team Blind। I think they had seen the early shots that was heard, but right now Roy is running away from a fight, but Roy is also being shot at। ये जैसे गाड़ी लेके भागते हैं ना, certain times it is an advantage that they're running away from the fight, but they're not sure about which angle they're running into or which team they're running into। oh shit, यहाँ पे कुणाल अपना शॉट कनेक्ट करते हुए स्काल के साथ, और यहाँ पे नेती और किलवा को दोनों को गेम की एग्जिट डोर दिखाते हुए, एंड दैट स्प्रे कमिंग आउट फ्रॉम कार्ल वाज सो ब्यूटीफुल। कुणाल डजंट वांट टू स्टॉप, ही वांट्स टू फिनिश व्हाट ही स्टार्टेड। और पता है कि वहां पर कैजुअलिटी ऑफ वॉर की तरह ड्रॉप डाउन कर दी, ब्लू जोन से थोड़ी सी मार पड़ेगी, एंड ही वांट्स टू रिवाइव हिज टीममेट। बट वैन इज द 13 टीम, लाइक दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड ऑन द 13th स्पॉट। बट वहीं पे ही हम दूसरी तरफ जो है फैमिली को ग्रेनेड के साथ मर्सिनरीज के मैक्स को समाप्त करते हुए देख रहे हैं। एंड चाहे द 4 गाइज के जितने मर्जी प्लेयर बचे हो, जब तक फैमिली इज इन द गेम, वुल्फी वाज द फर्स्ट वन टू गो आउट। बट अगेन यहाँ पे फैमिली स्टिल अलाइव, एंड देन यू हैव ऑल द एक्शन रिवॉल्विंग अराउंड फैमिली। बट अगेन काइजी को ई स्पोर्ट्स वहां पे टोनी जो है ग्रेनेड ड्रॉप करते हुए, दैट विल डील लॉट ऑफ डैमेज, एंड इवन द मोलोटोव, ताकि वहां से अंदर चार्जिंग ना कर पाए। बट फैमिली की बात कर रहे थे, आई एम लुकिंग एट द किल फीड एंड ही हैज टेकन डाउन स्कूपर, and family is doing a lot of damage onto the side। but yes, all that damage, but Indian rivals on the other side, they are also dishing out a lot of damage in the kill feed। we are seeing Tony, Indian rivals very very good today। I mean, even in the first map they were doing a lot of damage, but right now the side of 4 guys slowly got eliminated। I guess the whole team got wiped out। Was I right or just missed? I just see that the side of 4 guys got eliminated। Zia and family are still alive, and they are dishing out a lot of damage। और मेरे ख्याल से अभी तक वो 14 kills के ऊपर जा चुकी है, if I'm not wrong, the 4 guys। But yes, mercenaries again playing their slow game। is it going to help? Because like you have like 3 players intact, एंड अगर बात करें तो खाली 23 प्लेयर बचे हैं शेष। और अगर हम इन 23 प्लेयरों की बात करें, 9, अगर इफ यू मल्टीप्लाई 9/4 इज 36, एंड एवरी टीम हैज लाइक डाउन टू, किसी का 1 प्लेयर खोए, किसी के 2, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पांडा गेमिंग, दे हैव नॉट डन एनीथिंग इन एरंगल फर्स्ट ऑफ ऑल लूसीफर। और अब यहाँ पे भी सेकंड गेम में भी कोई ज्यादा डैमेज डिश आउट करते हुए नहीं दिखे, दे आर ऑन 0 kills। and in terms of damage doesn't get you points, damage only helps you when you are in a tiebreaker situation, and Alpha Omega is the 9th team to get eliminated।
Alpha Omega Go, or it looks like Panda Gaming might also be eliminated very, very soon. One player is trying to run out, but the vehicle sounds has been heard. Kaizoko Esports is still looking for the fight, but Panda Gaming, as I say, they will be the 8th team to be eliminated, so they will be getting 1 point at least. Not sure how many kills they got, but they will be getting 1 point at least. Kaizoko Esports still stuck in the same building. They're still fighting with the same opponents, but as they were fighting, Indian Rivals is closing up with them, and if Indian Rivals close up, things will get really, really difficult, as well as Argus Gaming is going to close up. Mercenaries, उनका जो strategy पहले हम देखे थे on semifinals too, they're holding that out this time as well, क्योंकि वो दो मैप में very clearly workout हुआ था, but after that they went in for aggressive fights. It did not work out. Mercenaries again slowly खेल रहे हैं, map control ले रहे हैं, but just like the previous matches that we saw, Mercenaries do not have any hard cover control. They don't have any compounds, they don't have any buildings, so might be still at a disadvantage, क्योंकि सारे teams अभी तक open में ही भाग रहे हैं except for the side of Kaizoko Esports. Yeah, everybody is running in open, and I think अब जिस तरीके की फाइट ब्रेक थ्रू होने वाली है, यहाँ पे सारी की सारी टीमें एक ही साइड पे आ गई मैप के, स्पेशली आर्गस दे डिड मैनेज टू क्लच दैट चिकन डिनर इन द फर्स्ट गेम. कैन दे डू इट ऑल ओवर अगेन, बिकॉज खुद ही 7 टीमें चेस बची हैं, 7वीं पोजीशन इनके लिए पक्की है, पर वो 1 पॉइंट लेके बाहर नहीं जाना चाहिए. तो किल्स अगर बात करें तो 6 किल्स है इनके पास, और किल्स अगर करना चाहें तो अभी 20 प्लेयर शेष बचे गेम में, जिसमें से 4 इनके खुद के हैं, बट यहाँ पे 16 प्लेयरों को अगर मारते तो 16 पॉइंट्स हैं. बट दैट इज लाइक समथिंग आई एम टॉकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि 16 के 16 नहीं कर पाएंगे. गबरू यहाँ पे ऑन द साइड, दे हैव अ वेरी गुड चांस टू फिनिश ऑफ विद द चिकन डिनर. हाइड्रा फ्लिक इज देयर, बट आर्गस यहाँ पे 2 प्लेयर नॉकआउट होते हैं, डी वो एंड नेतिक, एंड देयर लॉट ऑफ ट्रबल. और वहां पर जो फ्लिक हैं वो दूसरी साइड से जा रहे हैं, और नेतिक को यहाँ पे फाइनली जो है प्ले जोन समाप्त करता है. एंड ऑन द अदर साइड एक्सीलेंट जस्ट गो ऑन, एंड एम आई ओके. सो आर्गस के भी प्लेयर यहाँ पे शट डाउन हो चुके हैं. And okay, I was talking, and excellent coming with an amazing spray. और यहाँ पे तीन प्लेयर आर्गस के, किलर रो, रिश गॉड, एंड साथ ही साथ जो है किल फीड में हमने देखा है, तो 3 प्लेयरों को यहाँ पे समाप्त कर दिया है. What a gameplay coming out by excellent. Wow. Excellent gameplay. I mean, the side of Argus Gaming, they were a little bit slow in taking up the fights. Gabru Gaming, they were smart. I mean, on a higher angle, you cannot rely on the opponent coming to you. It's going to get really difficult, क्योंकि जैसे opponent थोड़ा pace बढ़ा देते हैं, उनका game भी बढ़ जाता है, and if you wait for that fight, you might end up going down. वही हो रहा है अभी. Gabru took that fight, they were happy with it, but as soon as they did not realize that Mercenaries were already fighting with them previously, and थोड़ा gap दे देते हैं to the side of Mercenaries, and with that Hydra Flick will be taken out of the map. वो बैक टू ऑब्जर्वर स्क्रीन हो जाते हैं. उनके टीममेट्स को जो कॉल आउट्स दे सकते हैं ट्राई कर रहे होंगे, बट राइट नाउ काइज़ोको Esports स्टिल एट अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. अगर वो लोग बाहर दिखे तो उनको नॉकआउट मिल दिया जाएगा, क्योंकि प्राउड थग Esports, इंडियन राइवल्स, देयर सो मेनी मर्सिनरीज, इतने सारे टीम्स हैं जो उनको निकाल सकते हैं. एंड जैसे बोलते बोलते मर्सिनरीज took the advantage, and they're going to be taking down Axlane as well, who was a key player on this map of Miramar for the side of Team Gabru. They're going to be the 6th team walking out. So Mercenaries, जैसे उन्होंने पहले गए थे at the 16th position, looks like they don't want to do that now. They're playing the slow gameplay, but they're also making sure कि वो अकेले टीम है जो दूसरे टीम के साथ फाइट कर रहे हैं. No third party fights. Yeah, but now if you're talking about in terms of number, very अच्छी, like I must say, like very calculated gameplay, बहुत ही अच्छा संगठित होके खेला इन्होंने मर्सिनरीज ने. दे मेड श्योर कि भाई जहां पर फाइट करनी है वैसे ही करके गबरू गेमिंग को टेक डाउन किया. बट in terms of kills, when I'm talking about kills, I think 4 guys did their homework. They got 13-14 kills. Even if they are not into the top 8 spot, तो वो 14 kill बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, बिकॉज वो 14 पॉइंट स्ट्रेट हैं. बट येस, इवन इफ यू गेट दोस टॉप 8 पोजीशंस, तो आपको 1 पॉइंट तो मिल ही जाता है. बट इन टर्म्स ऑफ लाइक मर्सिनरीज, the way they play this slow game and everything, अभी 3 प्लेयर उनके पास हैं, बट एवरीबडी लाइक नॉर्दर्न साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन राइवल्स के पास मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा चांस है. द वन टीम हु इज होल्डिंग दैट कंपाउंड, एंड दे आर इन अ वेरी गुड कवर. और इंडियन राइवल्स को मेरे ख्याल से बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. प्राउड थग Esports की अगर हम बात करें, 2 प्लेयर बचे हैं. तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई थिंक इंडियन राइवल्स माइट स्टैंड अ चांस, बट मर्सिनरीज हैव अ वेरी गुड पोजीशन. लूसीफर. Yep, Mercenaries have a great position. They have a couple of opponents right next to them.
but the cover is just a little bit better for the side of mercenaries. So as soon as they see anybody coming out, and also look at them, they have the advantage of the play zone, so they are scoping it out. They're waiting for anybody pushing out of those hard covers, and I think they should be able to at least get a couple of kills on either Indian Rivals or Kaizoku Esports, because Indian Rivals, if they manage to get a couple, I think Indian Rivals is the team which has 4 people alive or 3, not sure, but the call comes through. They spot the side of team Indian Rivals, थोड़ा डैमेज डिश आउट कर रहा है, बट अभी तक कोई नॉकआउट तो नहीं मिला क्योंकि उनका टीम स्प्लिट खेल रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन राइवल्स. They only spotted out one. The other 3 players are moving in 3 different directions, and if they manage to make their way out to a higher ground, they should be able to, I would say, surround the side of mercenaries, जो पहले ही the side of team KP have done it. बट मैंने आपने जैसे बोला था ना, मर्सिनर्स के पास एडवांटेज है, दे स्टिल हैव दैट एडवांटेज क्योंकि there's kind of a mountain blocking the vision for the side of team KP. But as soon as they start moving, either it's going to be mercenaries or KP, ये फाइट शुरू होने वाला है अभी. It's going to start, और मेरे को लग रहा है mercenaries को move करना ही पड़ेगा because the zone is closing in, and even after like you have this fight between mercenaries and the other team that is already पीछे Proud Thug Esports भी वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको भी वो गोलियों की जो है गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और उनको पता है कि वहां पे 2 टीम है, Proud Thug Esports, okay, now they are throwing in all the nades and everything, और वहां पर ये जो फाइट शुरू होनी थी वहां दूसरी तरफ ये अब इंडियन राइवल्स वहां पर बीच में जंप इन कर रहे हैं, एंड इंडियन राइवल्स गेटिंग नॉकआउट एंड फिनिशिंग टोनी. और यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम जो कि के को होती हुई, अब ये जो है दूसरी तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीटीई, लाइक Thug Esports, like they do they stand a chance because Indian Rivals have like 4 people intact and they are not ready to stop. There's a very huge chance for them to get this chicken dinner and come up top into the board chart. I mean, Proud Thug Esports, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है. Look at them. They are third partying the side of mercenaries right now. It was KP who started the fight, but Indian Rivals also have a really good chance here. Indian Rivals can also do a third party themselves, but Proud Thug Esports are not letting them do. They are distracting the side of Indian Rivals to take on a fight with them. But right now, KP, the side of Kathleen Pirinju, they will be placed at the 4th position, completely wiped out. It is a 2v3v3 fight going on right now. Equal chance for everybody. A lot of utilities were there from the side of mercenaries, but as soon as they started taking a couple of fights with from the side of Proud Thug Esports as well as Indian Rivals, they lost most of it. Right now, they only have a couple to play with, so they need to look forward to a couple of knockouts. Indian Rivals right below mercenaries, Proud Thug Esports on a higher angle from the side of team mercenaries. Proud Thug Esports, they'll be spotting one, but थोड़ा shot सिर्फ connect करते हैं, एक knockout तो नहीं मिलता है उनको. ये उनको नॉकआउट नहीं मिलता, और नॉकआउट नहीं मिलने की वजह से ये थोड़ी सी अब टीमों को ना थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हम बात कर रहे हैं डेथ थ्रिल की, हम बात कर रहे हैं सलमान पटेल की, ऑल दीज प्लेयर्स आर रियली गुड ऑन द साइड ऑफ इंडियन राइवल्स एंड दे हैव अ वेरी ह्यूज चांस ऑफ मेकिंग इट टू द चिकन डिनर. अब सबको सर्कल के अंदर घुसना है, मगर इंडियन राइवल्स हैव दैट पोजीशन, बट ऑन टू द साइड प्राउड ठग ईस्पोर्ट ऊपर सर पे भिन भिन आ रहे हैं, वहीं से मर्सिनरीज. सो आई थिंक दे आर ट्रैप्ड इन between all these two teams. और वहां पर देखिए बार बार प्राउड था कि स्पोर्ट शॉट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद एन 8x, बट यस वहां पे मर्सिनरीज नीचे इंडियन राइवल्स का खतरा लेते हुए. बट आई थिंक प्राउड था कि स्पोर्ट्स को सबसे अच्छी पोजीशन एडवांटेज है, एंड एग्जैक्टली and we'll have to see definitely जब इस सर्कल क्लोज इन होना शुरू होएगा in next 40 seconds, because nobody is going to make that move before that. But I think Nagin is going to move in. Okay, now I have to see कि Nagin does पाती कि नहीं. This is the most important part, because you are moving in and you just go zigzag just like that snake. And if you can take one player out, बड़ा देखिए कितना कैलकुलेटेड गेम प्ले है ट्रूइज्म से, और बिल्कुल आराम से चलते हुए, तो नागिन आराम से लाइक ही नोज के 2 स्क्वाड्स हैं, एक नीचे स्क्वाड है, एक ऊपर स्क्वाड है. सो लाइक इफ यू आर इन दिस पोजीशन राइट नाउ लूसिफर, whom should you go for? You take the opponent on your right, or you go for that Indian rivals who are down I below? would have said that Proud Thug Esports would have had a good position, but जैसे ही सर्कल क्लोज हुए वो भी ओपन में आ चुके हैं अभी. Mercenaries are at good position. वो they have chosen to go prone. Indian Rivals, one person has already pushed in. They need to scope him out, और उसको निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि Indian Rivals is not, he's not sure about where mercenaries are. He's trying to scope out the side of Proud Thug Esports. So right now the side of mercenaries, वो kind of
कैमो हो चुके हैं ग्राउंड में. Nobody knows where the side of Mercenaries completely went into, how they went underground. तो अभी जो fight होगा Indian Rivals और Proud Thug Esports के बीच में, and as soon as this fight starts happening, I think Mercenaries will stand up from their position and will start going in for it. They do manage to stand up, but Nagin will be knocked down, and Indian Rivals confirm that. And Indian Rivals, they are looking forward to confirm one on their own. Mercenaries का एक और जाता है. That's going to be Alif, who's on his knees. But right now, Proud Thug Esports, they do have one player or two who have good health. They will be recovering, bandaging themselves up. But right now, Mercenaries का सिर्फ एक ही player is good in terms of his health. But another one is already halfway knocked down. Grenades भी toss हो रहा है. And that's all. Indian Rivals get that kill. That's going to be the third team going down. Mercenaries. So 2v2 fight going down. अभी क्या लगता है आपको King Charlie? कौन ऊपर I think उतर के Proud आएगा Thug इसके? Esports, Proud Thug Esports can just go in and ham it out because एक player already knocked out और एक player को ही take down करना है. And yes, Proud Thug Esports finally getting that thug thing inside themselves. They only managed to rack up those 5 kills, but those 5 crucial kills plus वो 10 पॉइंट जो उनको मिलेंगे फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए. बट इंडियन राइवल्स डिड प्ले एन एक्सेप्शनल गेम प्ले, क्योंकि उनके लिए मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग थी बिकॉज दे वर पुश टू दैट वेरी एज जहां पर उनके पीछे वो एक रॉक की, मैं कहूंगा, साथ सटीक खड़े होते. एंड देन यू हैव मर्सिनरीज हु इज कॉन्स्टेंटली शूटिंग यू अप. और मर्सिनरीज के लिए प्रॉब्लम हो रही थी जैसे ही आगे जा रहे थे, दैट 8x स्कोप कमिंग आउट फ्रॉम टूरिज्म, ऑलवेज शूटिंग डाउन एट दैट पॉइंट, हमेशा डर के भाई कहीं नॉकआउट ना हो जाए. सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, इंडियन राइवल्स को पुश करना पड़ता है विद द ब्लू जोन एंड दे जस्ट ट्राई गोइंग अप. एंड वहां पर जाके दे ट्राई टू ब्रेक दैट फाइट विद द मर्सिनरीज. प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स के वहां पे आता है, बट प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स played it so well. Like they were always down with 2 people. Like it was like 2v4v4. Man, the match was incredible to watch. I mean, Mercenaries एक पॉइंट में जैसे उन्होंने प्रोन चले गए, I thought Mercenaries had this, क्योंकि इंडियन राइवल्स को पता ही नहीं चला Mercenaries कहाँ चले गए, कहाँ इस बीच रेत में कहाँ छुप गए. Mercenaries played it smart, but Nagin, he goes in for a peek. He comes back to a crouch position, tries to fight, but that Indian Rivals move, एक move जो उन्होंने किया when there were 3 people alive, जो एक player को उन्होंने push कर दिया. They said slowly creep in and close to the opponent. I think that changed the game around. जो एक player बहुत क्लोज चला गया, he was able to distract every other player's attention to him, and immediately Indian Rivals का जो बाकी बंदे alive थे, they started doing those damages, they started doing those assaults. I think that worked out really, really well for the side of Indian Rivals to make sure they changed pace up. But Proud Thug Esports उन्होंने पूरा advantage लिया जो higher ground का था. जैसे हमने बोला, you should not wait for the opponent to push you, you should slowly push him. उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वो मीरामार का मैप निभाया. जी बिल्कुल. अब यहाँ पर इस गेम को गाइस हम और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 गेम मैप समाप्त हो चुके हैं. पहला था एंगल, दूसरा था मिरामार, और अब हम जाएंगे 10 मिनट के छोटे ब्रेक पे. पर उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा इस मैप की हाईलाइट भी दिखाई जाएगी इस एड ब्रेक के दौरान. मिलते हैं ब्रेक के बाद. मिलते हैं. Got him. Let's go.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me you can make me can make me so alive. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the Got him. Let's go. देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से एसोस आरओजी शोडाउन सीरीज पावर्ड बाय इंटेल। मैं किंग चार्ली और मेरे साथ यहाँ पे लूसीफर दोबारा आप लोगों के लिए जुड़ चुके हैं। वो घमासान एक्शन के लिए लूसीफर मेरा मार हमने देखा, तो कुछ बताना चाहेंगे? लाइक वी आर गेटिंग न्यू फेसेस, न्यू टीम्स ऑन टू द बोर्ड, और कुछ अब स्कोर कार्ड जब आएगा हमारे पास, कुछ नया रंगीन हमें कुछ देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली, आई मीन इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। जैसे हम सोचे थे कि मैप में भी बहुत डोमिनेंटली चला जाएगा, एक दो टीम ही पूरा चिकन विनर चिकन डिनर लेके जाएंगे या टॉप फ्रैक्स करके जाएंगे, वो नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे।
काफ़ी नए टीम्स जो हम पिछले सेमीफिनाल्स में भी कंसिस्टेंसी थोड़ा दिखा रहे थे, वो वाले टीम्स अभी आउट फ्रैग कर रहे हैं जो टॉप फ्रैगर टीम्स थे। आई एम रियली रियली excited to see how we are heading into the next map, but before we head into the next map, स्कोर कार्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं और थोड़ा सीखते हैं कि क्या हुआ है स्कोर कार्ड में। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम पहले नंबर पे जो देख रहे हैं मेरा मार्क आएगा, इस टोटल ओवरऑल स्कोर कार्ड बाद में आएगा जब सारे हम 500 मैप खेल लेंगे। यस, तो अभी हम इंडियन राइवल्स की बात करेंगे। 16 अंकों के साथ यहाँ पे समाप्त किया, पहली पोजीशन लेती हुई 10 किल अपने नाम पे किए थे। प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स जो थी अव्वल दर्जे लेकर आई थी, रैंक 1 थी। इंडियन राइवल्स के पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए ज्यादा आप सब सोच रहे होंगे क्योंकि किल पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं वो उनके पास 10 है, रैंक पॉइंट्स मिला के सेकंड पोजीशन के 6 थे, तो 16 अंक उनके पास हुए। यहाँ पे 10 पॉइंट मिले प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स को फर्स्ट आने की वजह से, बट किल उनके 5, तो एक किल की वजह से थोड़ा पीछे रहते हुए, बट काफी अच्छी उमदा परफॉर्मेंस दोनों टीमों की तरफ से। मर्सिनरीज अपना हमेशा की तरह काम करती हूँ, मगर इस बारी मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। किल्स भी उन्होंने काफी अच्छी करी, जब भी उनकी फाइट हुई उसको जैसे ब्रेक थ्रू किया। गबरू गेमिंग के जो 3 प्लेयर उन्होंने निकाले, 8 किलो के समाप्त करते हुए तीसरे स्थान पर आए। 4 गाइज जो थे यहाँ पर एक भी रैंक लेकर आए, 10वीं पोजीशन पे आए। और इस टीम के बारे में मैं कितना बताया हूँ कि ये इन्होंने कल कितना कहर ढाया है। ये पहली मेरा जो कि रैंगल था पहला मैप, उसमें भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे, बट इस बारी मेरा मार में 11 किलो के साथ इन्होंने समाप्त किया, 10वीं रैंक के साथ। और वो किल का पॉइंट्स का जो इतना फासला है, लूसीफर क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? I mean, the side of 4 guys completely destroy their opponent, and this opens up the possibility to all the other teams. बोलता है कि it does not matter your placement certain times does not work out in your favor. I think ये वाला चीज जो 4 guys करके दिखाया है, with 11 kills they've managed to put them on the top 5 position. जैसे आपने बोला पहले मैप on the map of Erangel they could not do a lot of things, so but on this map of Miramar they said ठीक है placement नहीं हो रहा है हमसे, फ्रैक्स के लिए जाते हैं। जैसे उतरते हैं मैप मिरामार में फ्रैग करने शुरू हो जाते हैं। दे डिड नॉट लेट एनी ऑफ देयर ओपोनेंट्स गेट देयर फ्रैग्स, एंड इवेंचुअली जैसे सर्कल छोटा होता गया, जैसे टीम 7 आते शुरू हो गए, दैट्स व्हेन द साइड ऑफ 4 गाइज वेंट आउट। अदरवाइज इफ 4 गाइज और थोड़े टाइम मिला जाता उनको और थोड़ा मैप कंट्रोल मिल जाता उनको, मे बी प्लेसमेंट पॉइंट्स भी दिखाए जाते। बट आई थिंक राइट नाउ 4 guys is the only team that has made a proper comeback with the other teams that we are talking about. But I'm pretty sure the chat is also excited कि अभी 2 मैप ऐसे गए तो तीसरा मैप कैसे होगा अगर ऑलरेडी न्यू टीम्स आ रहे ऊपर। आपको क्या लगता है चैट? स्टार्ट स्पैमिंग which team you think that might end up winning the grand finals as well on the map of Erangel right now that we are heading into. Who do you think has a better chance? But also make sure along with the support you show support to wherever you're watching the stream on. But अब एरेंगल को वापस जाते हुए किंग का चार्ली, आपको क्या लगता है कि कौन सा टीम वापस आ सकते हैं? कैन ब्लाइंड डू व्हाट दे डिड ऑन द फर्स्ट मैप ऑफ एरेंगल? आई एम लुकिंग एट दिस थिंग के 4 गाइज ने जिस तरीके से 11 किल्स करे हैं, और वहां पर अगर हम इंडियन राइवल्स की बात कर रहे हैं उन्होंने 10 किल के साथ समाप्त किया था, तो 4 गाइज सबसे ज्यादा हाईएस्ट किलिंग टीम थी जो कि थी मिरामार में। एंड अगर वो ऐसे ही करते रहे, इफ दे कीप देमसेल्फ अप इनटू द चार्ट टेबल और वहां पे 10-10 किल करने के साथ अगर वो हर बारी करने में कामयाब रहे और ऐसी जो घटनाक्रम घटते रहा दोबारा दोबारा, तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस गेम विल बी अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ द टीम्स व्हिच परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड मैप। और यहाँ से जो बची हुई बाकी टीमें थी जो 8 से 16 के क्रमांक पे हैं, उनके लिए वेकअप कॉल है कि यहाँ पर आके अगर वो अपसेट कर सकते हैं तो फोर्थ गेम में एक चांस रहता है कि फर्स्ट और 2 के बीच में जो थोड़ी सी लड़ाई होगी, क्योंकि फर्स्ट गेम के अंदर विजेता कोई और थे, सेकंड गेम के अंदर विजेता कोई और। अब ये जो विजेताओं के बीच में जो फासला तय होते जा रहा है, ये धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो मे बी शायद हम थर्ड मैप के बाद एक ओवरऑल स्कोर कार्ड देखेंगे सारी टीमों को किसने क्या क्या किया है। बट यस, अभी के लिए फिर से मिलिट्री नोवो प्लेन की ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी ऐसी है लूसीफर, फिर से सारे काफी नॉर्दर्न साइड पे नहीं जा पाएंगे लूटने के लिए। ट्रेजेक्टरी बहुत क्लोज टू सदर्न साइड था
डायगनली सदर्न ईस्टर्न के साइड से गया है, तो नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू गो वेरी फार। यासना या जॉर्जियो पुल वो वाला आउट ऑफ रीच होगा, बट फोर गाइस अगेन उन्होंने बोला प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो किल्स और भी करते हैं। इनिशियली दे स्टार्टेड फ्रैगिंग ऑफ, आई थिंक दे स्पॉटेड ऑफ अ टीम ऑफ रकम हु आर पैराशूटिंग डाउन, बट किल तो नहीं मिलता है उनको। नहीं हाउ मिला है, डिड उनको दे एक किल गेट? मिला है, लाइक रियली? they got one kill. Yeah, शुरुआत I भी mean you कर can दिया see it. उन्होंने। Yeah, because it was they were parachuting down and they were 64 players and they एग्जैक्टली। got one, I guess. So I guess they got one or like did we miss one? I guess अभी पता लग जाएगा जब हम उनके ऊपर दोबारा जाएंगे, हाँ, because somebody eventually got a kill. I heard those shots coming out. But yes, again, अगर हम बात कर रहे हैं VSS, do you think it's a sniper rifle that you should ever use? I think ये एक ऐसी स्नाइपर राइफल है जिससे कभी भी इतना ज्यादा अपना दबदबा नहीं दिखाया गेम में। आई थिंक ही इज जस्ट पिक्ड अप क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारे ओपोनेंट्स आ चुके हैं। ही इज वरीड अबाउट दैट, तो जो गन मिला ले लिया है अभी तक। बट राइट नाउ ये स्कूल जो अभी तक खाली खाली था, स्कूल के But पास दो what do you टीम think आ about चुके this हैं। gun? Do you think ग, it's ग, worthy gun, like worthy कम sniper? compared to the ये other guns out there, I don't think VSS is something that can do damage। जैसे मैंने बोला ना, वो मिल गया हाथ में तो उठा लिए, अभी उसके साथ कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो तो नहीं पता। बट इफ यू आस्क मी कि अगर तुम्हारे साथ सामने और कोई स्नाइपर राइफल रहेगा, विल यू बी गोइंग फॉर VSS? आई विल नॉट ऑब्वियसली गो फॉर इट। मे बी आई इवन लीव ऑम आउट बिकॉज मैं उसको पूरा समझ नहीं पाता हूँ, और खार 98 को बोल्ट एक्शन आई वुड प्रिफर दैट। बट आई थिंक जो मिला उन्होंने अभी लिया है, लेट्स सी इफ ही मेक्स इट वर्क। और जैसे वैसे भी विल बी अगेन गोइंग बैक टू द साइड ऑफ टीम आर्गस, we might end up seeing what he picks up later, but right now that early fight that was taken did not work out, I mean did not do anything। but यासना यहाँ पे दो टीम्स आ चुके हैं किंग चार्ली। आपको क्या लगता है, रकम और आई थिंक इट शुड बी द साइड ऑफ टीम ब्लाइंड, और आई एम नॉट श्योर द पिंक टीम का नाम मैं भूल जाता हूँ हर वक्त, कि जब देखता हूँ पता चल जाता है पर दूर से तो पता नहीं चल रहा। आपको क्या लगता है यहाँ पे यासना यहाँ पे दो टीम ऑलरेडी है, फाइट होगा कि नहीं वहाँ पे? फाइट तो होना देखो इस गेम के अंदर है तय निश्चित है कि लड़ाई तो होएगी होएगी। अब कितनी जल्दी कौन किसके ऊपर जाना चाहता है ये डिपेंड करता है, बिकॉज क्योंकि दोनों अलग अलग छोर पे है, तो बिल्कुल ही काफी ज्यादा दूर है और काफी बीच में सारी बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं। तो मेरे ख्याल से शायद अर्ली इंगेजमेंट लेना एक एक प्रॉफिटेबिलिटी भी रहती है, एक नुकसान भी रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी ये रहती है कि कोई और टीम रोटेट नहीं करके आ रही होगी, आप एक टीम को डैमेज करते हैं, उनका संहार कर देते हैं, उनको निलंबित कर देते हैं गेम से, एंड देन यू हैव दिस चांस दैट यू कैन हील योरसेल्फ एंड देन यू कैन गेट बैक इनटू द एक्शन। तो आपके पास एक वो स्थिति रहती है एक अच्छी। बट अगर बात करूं फेज 4 और फेज 5 के बीच में, अगर आप फाइट करना चाहते हैं किसी टीम के साथ, तो देयर इज ऑलवेज दैट थर्ड पार्टी, वो हमेशा होता ही होता है 110%। बिकॉज कौन छोड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे घात लगाए बैठे हैं। आप वो हर कोई चाहता है कि आप फाइट करें, और हमने वही मेरा मार के अंदर भी देखा है। वहां पे प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स वेट कर रही थी पूरा टाइम, उन्होंने कहा लड़ने दो, एंड देन द फाइट ब्रेक आउट इंडियन राइवल्स की, जैसे जब मर्सिनरीज के साथ हुई, और वहां पे पूरा का पूरा फायदा प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स ने उसका उठाया। तो वही है। और कल भी हमने सेमीफाइनल में ऐसा देखा था, फाइनल में सेमीफाइनल्स के अंदर जब हम इरेंगल के अंदर से वहां पे ग्रेनेड आता है, और ग्रेनेड आने के साथ वो 3-4 प्लेयरों को डैमेज करता है, और वहां से दूसरी टीम जो है वो चिकन डिनर लेने के योग्य बन जाती है। तो ऑल दीज ट्रांजिशंस डोंट हेल्प यू आउट इन द लेटर स्टेजेस। एग्जैक्टली, आई मीन मैं आई वुड प्रिफर टेकिंग अ कपल ऑफ अर्ली फाइट्स, क्योंकि you start clearing a lot of positions, and as you start clearing you can be worry free of another team doing a backstab। so I think a couple of teams might opt this strategy, but थोड़े teams वो opponents का sound सुनते ही भागना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए और बंटी बॉयज, उनका लूट मिल गया, उनको सीधा सर्कल के अंदर भागना शुरू हो गया। दे वांट टू मेक श्योर दे गेट अर्ली सर्कल पोजीशनिंग, एंड जैसे ही सर्कल के कॉर्नर पे आ गए, लुक एट दैट, दे स्प्लिट ऑफ। आई थिंक ये अच्छा स्ट्रैटेजी है टू बिकम लाइक अ वॉच डॉग फॉर द साइड ऑफ द एज सर्कल। अगर कोई टीम वहां से अंदर आ रहा है तो दो दिशाओं से वो लोग उनको आर पार कर सकते हैं। मे बी द स्ट्रैटेजी इज दैट, बट राइट नाउ ब्लाइंड उनका पूरा टीम को एक व्हीकल का अंदर घुसा रहे हैं, एंड इफ ये बहुत सिंगल बड़ी गलती है। ग्रेनेड्स कनेक्ट्स, एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया गलती हो सकता है अगर एक ग्रेनेड और कपल ऑफ स्प्रेस कनेक्ट्स, दैट्स द एंड। एंड यहाँ पे क्रेजी 4 ने गवर्नमेंट आर्टिकल को नॉकआउट कर दिया, एंड दिस इज वन प्लेयर यू डोंट वांट टू गो डाउन, स्पेशली ऑन द साइड ऑफ रेकम। एंड रेकम के लिए मैं बात करना चाहूंगा लूसीफर। दिस इज वन टीम दैट इज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। फर्स्ट मैप एंगल में कुछ नहीं कर पाए, सेकंड में पूरा स्क्वाड वाइप आउट हो जाता है कार के अंदर, व्हेन द 4 guys just have स्प्रे डाउन ऑन योर कार एंड एवरीबॉडी गेट्स ब्लास्टेड ऑफ।
and the same thing is history is repeating itself. Like it's not a good day for them to play this game. What's happening? आई एग्री विद यू। आई मीन रकम आज थोड़ा वो लोग आउट ऑफ गेम लग रहे हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, योर गेम इज नॉट ओनली अप टू अ सिंगल डे, यू नीड टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी दैट यू आर प्लेइंग इन द टूर्नामेंट यू नीड टू बी रियली गुड। क्रेजी फोर उनका बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट रहा है सेमीफाइनल्स से कंपेयर टू फाइनल्स। नाउ दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज, दे आर मैनेजिंग टू स्टे इन द टॉप 8 एंड होपफुली इफ दे कीप दिस कंसिस्टेंसी अप दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज। बट राइट नाउ वी आर सीइंग Gabru taking on a fight with the side of mercenaries, but they managed to run away. But Roy is not letting them run. He has a lot of bullets. That SKS is doing a lot of damage to the vehicle, not the person, and they managed to destroy the vehicle. But I think वो jump नहीं किया अभी तक, गाड़ी से जा ही रहा है, and any second the गाड़ी might move and does blast and they get the kill confirmed. नहीं, किसी और ने उस किल को कंफर्म कर It लिया। was That is Argus killer row. He was waiting there. बुला लिया। Wow, he was waiting there. Row was just waiting there, hanging to the chest. और ये देखिए, यही सबसे बड़ी गलती है जो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होती है। बिकॉज एक बंदा जब टीम से चले जाता है लूसीफर, देन यू टीम जस्ट स्टार्ट, you don't have that fight power. Like you can't engage into the fight, you can't dictate the pace of the game. You lack that one person who is always benefits के मतलब अगर fight हो गई है 4v3, वहाँ पे आपका एक player धराशायी हो गया, then you can revive, and then 3 player are like other 2 are still intact to fight off, one is reviving, or maybe like you can just surround the enemy, तो काफी problem हो जाती है। Exactly. I mean, we've talked about this. Like 4-man squad, if you are there till the end of the game, it is a kind of an advantage because you can aggress, you can make sure you put a couple of people who can take the distraction away. जैसे vehicle लेके भाग गए तो distraction will be taken away. But right now Alpha Omega थोड़ा open में fight लेते हुए they do manage to convert a kill on Kaizoko Esports. They get a confirmation as well, but they're still looking for a lot more. Blind अभी open में भी पकड़े गए हैं from the side of team. I guess that was Crazy 4. Yes, we are back on the screen. मैं 4 देखा, I got confused. 4 guys था, Crazy 4 था, but Crazy 4 they've spotted off Blind. Blind 2 players Shaq के पास, they are stuck. They don't have a vehicle to run out. उनके कोई और players पास नहीं है, but यासियाना पोलायाना में और भी ज़्यादा teams है. There is going to be Rakam as well. Rakam को भी बहुत ही उन्होंने damage already dish out किया है. I'm not sure if the side of Crazy 4 will be able to come out on top, but right now Blind is also there. They are worried about their position. They are worried about their position. Everybody has to let's make sure कि अपना काम पूरा ठीक तरीके से करते रहे, because because it's already 10 minutes into the game and you have to just wait down for another 30 minutes in order to get that chicken dinner. But उसके बीच में बहुत कुछ होएगा अगले 30 मिनट में। और ये सर्कल जो है, ओ हो, वो जो 2 टीमें पूरी घूम के आ रही है, आई कैन सी नागिन एंड पूरा घूम के आते हुए, और दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूँ इट्स मर्सिनरीज अलिफ एंड देयर इज वन टीम दैट इज स्टिल स्टक इन नोवो, एंड वो जो पूरा रास्ता घूम के आना है, दैट इज अ वे लॉन्ग जर्नी, बिकॉज आपको इतनी सारी यूटिलिटीज पुट करनी पड़ेगी. लाइक एवरीबडी हैज टू यूज द फर्स्ट एड्स एंड एवरीथिंग, एंड 3 टीम्स आर ऑलरेडी स्टक outside. Like 2 तो मेरे ख्याल से they'll make it through, but the one still stuck in the Novo. What do you say about them? I mean, very unfortunate. I mean, जो हुआ उनको अभी, because I mean, प्लेयर का थॉट वही रहेगा ना, अभी सदर्न साइड को प्लेन जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली द सर्कल शुड बी क्लोज. दैट इज द एक्चुअल थॉट, बट ये कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि सर्कल where it will be shifting, and that's what the circle did all of a sudden to Yasnaya, where we talked about Yasnaya, ये Georgiopol, ये सब बहुत ही दूर है for some teams to go there, and teams which manage to gain center map control, I think they are at an advantage. ये जो भी team military base गए, Novo पे गए, they are right now at a huge disadvantage, and even if they manage to make their way out, there are a lot of teams already at the edge of the circle, so देखते ही they will start spraying them. So I'm now worried about, we saw mercenaries as well. So mercenaries एक और बार, they've already lost 2 matches where they did not come out on completely top. पिछले मैप में आए वो लोग तीसरे पोजीशन पे, but it still depends. एक मैप काफी नहीं है, they need a lot more maps. Their strategy, जैसे हमने देखा था सेमीफाइनल्स 2 में, we might be talking about a lot because उन्होंने बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी दिखाया है. यहाँ पे वो लोग they are looking in a dismay, but Argus, they are still stuck at the play zone. Phase 2 में है, इतना सारा डैमेज नहीं होगा, but as soon as this
timer hits 0, phase 3 शुरू हो जाएगा and they would have to make a run for it. phase 3 से inflict from the damage will start getting higher, but Crazy 4 they have spotted I guess Indian rivals. ये लोग fight लेने के लिए जा रहे हैं, but IR उनके team को ही vehicle से knock कर देते हैं, and I think this should be the chance with the side of team Crazy 4 need to look out for. Oh, family gets knocked out and he is seeing सनसेट हो चुका है मेरे ख्याल से फैमिली के लिए. लॉट ऑफ प्रॉब्लम. और यहाँ पे M762 के साथ अंदर चार्जिंग कर दिया तेज के ऊपर और यहाँ पे किल कंप्लीट करते हो, मगर इंडियन राइवल डांटे कंप्लीट करते उससे पहले किल और उनको वहां पे जो है नॉकआउट कर दिया. और मान साहब यहाँ पे अपने प्राण त्यागेंगे. इसी के साथ बीच में फाइट कुणाल वहां पे ग्रेनेड को ड्रॉप करते हुए, ग्रेनेड ड्रॉप करने के साथ ही साथ सो दैट नोबडी ट्राइज टू पुश इन. मगर वहां पे गबरू के हाइड्रा फ्लिक जो है नागिन समुद्र को समाप्त करेंगे. साथ ही साथ मर्सिनरीज अपना प्लेयर खोते हुए सलमान पटेल यहाँ पे इंडियन राइवल से बाहर की एग्जिट डोर देखते हुए जो टीम यहाँ पर अभी सेकंड पोजीशन लेकर आई थी मेरा मार्क के अंदर, यहाँ पर उनके बहुत बड़े प्लेयर जो है बाहर जाते हैं. मगर कुणाल के पास यहाँ पे इधर चार्जिंग करना चाहते थे M762 के साथ और यहाँ पे खिड़की से फटाफट नीचे जाते हुए, बट वहीं पे जो है मोलोटोव ड्रॉप होता हुआ. बट मोलोटोव ड्रॉप के साथ ही साथ यहाँ पे इंडियन राइवल के विकी जो है नॉकआउट होते. कुणाल का बड़ा ही शानदार स्प्रे और साथ ही साथ कुणाल मेक श्योर कर रहे हैं किसी को अंदर चार्जिंग ना करने दे. एंड व्हाट अ गेम प्ले कमिंग आउट बाय कुणाल, लाइक ही मेड श्योर नोबडी is trying to push in, and that control over M762 is like almost equivalent like we are controlling an AKM. Exactly. बट अभी जो फाइट हुआ क्रेजी 4 और इंडियन राइवल्स, दे वर टॉप टीम्स, टॉप 8 में दोनों टीम्स थे. अर्ली ऑन टू बी एलिमिनेटेड इंडियन राइवल्स, उनको ज़्यादा किल्स भी नहीं मिले. दे डिड मैनेज टू कंफर्म 2 प्लेयर्स फ्रॉम द साइड ऑफ क्रेजी 4, बट उतना ही उनको मिला है इस मैप ऑफ एरांगल में. एंड दिस इज द थर्ड मैप ऑलरेडी, एंड इफ दे डोंट मैनेज टू गेट अ कपल ऑफ मोर पॉइंट्स इन द अपकमिंग 2 मैप्स, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. दे विल नॉट बी क्लोज टू ग्रैबिंग दोस टाइटल्स एंड प्राइज पूल money. So right now Crazy 4, they played really well in Yasnaya. Rakam still was there in Yasnaya, but they did not go in for those fights because they understood if there is 2 teams already fighting out, there might be a third team coming in. But right now Pubg Esports, still having the higher ground advantage, are fighting with the side of Kaizoku Esports. They are trying to hit a couple of shots, but I think they are not connecting, and in the scope also being just a 3x, उनको इतना भी clear shot नहीं मिल रहा है. क्लियर शॉट नहीं मिल रहा है. दिस इज वन प्रॉब्लम दैट एवरी टीम हैज टू फेस थ्रू. लाइक अगर अब जो धीरे धीरे करके अब आपने इस पोजीशन पे अपनी गेम को खो दिया और खोने के साथ ही साथ इफ यू डोंट पुश इट इन, लाइक हाउ विल यू मैनेज, लाइक क्योंकि अगला मैच फिर से आपके लिए मिरामार होएगा और उसके बाद लास्ट फाइनल मैच जो है रेंगल, और इसके अंदर आपके लिए आपको डेफिनेट परफॉर्मेंस देनी है. तो आई थिंक द थर्ड गेम इज वेरी क्रूशियल स्पेशली फॉर Pubg Esports, क्योंकि पिछली बारी फर्स्ट आए हैं. डैनी ट्रोजम वाज द वन हु टुक द चार्ज फॉर द टीम, एंड वहाँ पे भूदेव और जस्ट फायर ऑल्सो हेल्पिंग हिम आउट इनटू द लॉन्ग रन. बट अब देखना कि क्या करने वाले हैं इस गेम के अंदर, बिकॉज वंस यू गेट दैट चिकन डिनर तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, और वो मोटिवेशन जो है, वो प्रेरणा जो है, वो आपको आगे मदद का यह साबित होती है कि कैसे आपको कैरी फॉरवर्ड करके जाए. और 4 गाइज भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे. उन्होंने अपना फैमिली को खो दिया. फैमिली के खोने के साथ ही साथ आई थिंक लाइक वंस यू लूज फैमिली फ्रॉम 4 गाइज देन देयर आर वेरी लो चांसेस. ओ यहाँ पे +63 का डैमेज दिया है, एंड यहाँ से बच के निकलना चाहेंगे अल्फा ओमेगा के प्लेयर, मगर कैटलन प्रिंस जो ऑन द अदर साइड यहाँ पे मिनी 14 हाथ में थी, वहां से पीछे से शॉट कनेक्ट करे हैं रकम ने. गवर्नमेंट आरटी का शॉट है SLR के साथ वहां पे किल कंफर्म करते हुए ऑन शेडो पी. लिंच यहाँ पे जो है ब्लाइंड शेडो पेट को जो है समाप्त करते हुए. एंड ऑल दिस एक्शन गोइंग ऑन, लूसीफर. Very unfortunate action, I would say, because the side of KP managed to take a fight on Alpha Omega, who were running away. As those sounds were heard, Rakam as well as Blind managed to destroy the side of KP. KP एक player lose करता है, plus they do receive a lot of damage. But on top of that, Rakam find their next target. देखते देखते you would have seen that kill feed में अल्फा ओमेगा का एक किल कंफर्म हो जाता है. मर्सिनरीज somehow they managed to make their way out. They are already taking a fight with the side of 4 guys, but 4 guys, they do the other way around and they eliminate mercenaries at the 15th position. So 4 guys, they will be back on their feet even though they lost a couple of players to a knockdown. So abhi pura 4-man strong, they can come back to a 3-man strong. We will see later on. But this fight that is going on between Kaizoku Esports, between Blind Esports, Rakam, so many teams fighting it out, but Crazy 4, I think this is all done and over. They've lost their vehicle
वैसे ही blast होते हुए कैसे को esports से Turk boss, they did not let them run away, and that's going to be the side of Crazy 4, who are also the top 4 team, eliminated at this 14th position. मामला यहाँ पे on the map of Erangel, the third map, पूरा घूमता हुआ King Charlie, आपको क्या कहना है इसके बारे में? वेल रकम यहाँ पे ग्रेनेड के साथ किल निकाल रहे हैं केपी के गोस्ट के ऊपर, एंड रकम दे आर ट्राइंग टू गेट ऑल दोस किल, क्रूशियल किल, जहां पर उन्होंने अपने एक दो प्लेयर को खोया है, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग डन बिकॉज दे नो दे आर ऑलरेडी डाउन टू 2 मैप्स एंड देयर इज अ थर्ड मैप, बट यहाँ पे केपी ऑन द साइड, कैटलाइन प्रेंजू लास्ट person. Drago is always the last person who is always left off in the team, and he has to take the charge. Now he has to survive. He has to make sure कि वो अकेले बचे हैं, and he does each and everything in his power to make it into the top 5 position, because वहाँ पे maybe you have that chance कि आपको kill मिल सके, क्योंकि हमने कल भी देखा। और यहाँ पे ट्रिज्म का शॉट आता हुआ बड़ा ही शानदार किल हुआ गॉड के ऊपर, और ब्लाइंड के प्लेयर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और यहीं पे हम खारकू को देख रहे, रकम के रुशल को एग्जिट डोर दिखाते हुए। तो इसी के साथ जो है रकम बिकम्स द 13th टीम ऑन द बोर्ड, लाइक टू टेक दैट पोजीशन आउट। तो आई थिंक रकम इज लाइक ऑन अ प्रॉब्लम, राइट? उनको मेरे ख्याल से प्राउड थक esports इज पुशिंग ऑन टू ब्लाइंड, और यहाँ पे मोलोटोव ड्रॉप करने के साथ ही साथ अंदर चार्ज कर रहे टूरिज्म, गाड़ी ब्लास्ट कर दिया है, यू गेट वन शॉट, ओके, यू गेट वन मोर किल, एंड देन डैनी and with tourism they are trying to push in, okay, they are looking each and everything, and there's one more enemy they have to lurk around, okay, पता है कि यहीं पे होंगे और यहीं पे आने के साथ ही साथ that is one position, 13 position पे blind esports they are out, and we're talking about such a good team. I think a lot of these teams, King Charlie, did not show their potential in semifinals too. They managed to make sure they are in the top 8 position, but Rakam still there with 2 players. Panda Gaming had spotted. Panda is just playing slow. He's looking forward to more information. उसके scope नीचे में एक और player Rakam का दिख जाता है, but they do not scope. But other player, it's going to be RJ, who will manage to scope both the players from the side of Rakam. Rakam have no idea. They're scoping out, I guess, on the side of Proud Thug Esports. They're making their way close, but I think the shots need to be hit. But right now Proud Thug Esports, I think they start hitting their shots on Panda Gaming. ये triangle fight जो होता हुआ, not sure who's going to come on top of this. All this fight is breaking through, और यहाँ पर आके हंटर गेमिंग वहाँ पे खड़े, अल्फा ओमेगा इज देयर, एंड ही इज जस्ट फ्रॉम अल्फा ओमेगा टीम की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो फिर से एक वो चीज है, और आज गवर्नमेंट आंटी का हम जादू नहीं देख रहे जो कल हमने देखा था, एंड ही इज नॉट able to do that kind of damage. It was Brute who got 3 kills, and there was one more person from the team, but excellent and pan kill. And आज हाइड्रा फ्लिक का भी मैं कहूंगा थोड़ा सा जादू हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा, पर बात कर रहे थे यहाँ पे फ्लिक की, और फ्लिक managed to finish this 2 people, Killer Row and Devo. Like I just jinxed it, okay? Did I put an adrenaline shot into Hydra Flick? He got those 2 kills, those 2 crucial frags, and Gabru Gaming के पास बहुत अच्छा चांस है. They managed to like they were at 4th or 5th position, I guess, in the last map Miramar, और अभी यहाँ से अगर kills rack करके जाते रहते हैं तो they have a very high chance, right? A very high chance, and right now Team Rakam has spotted the side of Team 4 guys. बहुत ही damage दे रहा है with the grenade, smoke भी दे रहा है so that they cannot be able to revive each other. But Bunty boys, the Argus team who managed to go down to Gabru, 2 people survived. They managed to run away, but they headed off to another direction where Bunty boys were welcoming with open scopes. And right now one player is already down. Argus का सिर्फ एक ही player alive है. I'm not sure if he'll be able to do a lot of things. Team the 4 guys also is surviving only by 1 player. You can see Wolfie guys standing strong. Rakam में 2 लोग है. Government Auntie is already there. Raw as well, who did a lot of damage. So I think they should be able to clutch this out and prevent anybody from the side of the 4 guys to do anything. Bunty boys have spotted one more player from the side of KP doing a little bit of damage. Both of them exchange blows, so immediately Bunty boys scope out and they managed to heal themselves up. Now Hardwell has spotted the last player from Argus. थोड़ा spam चल रहा है, but eventually I think that kill will also be confirmed. The kill might be eventually confirmed, and government आंटी यहाँ पे finally अंदर पुश करके जाते हैं, और finally he managed to get the first kill on the board for this map on Wolfie guy, और इसी के साथ जो है 12th position will be for the 4 guys, and this is not the position that you're looking out for. I think it's the sunset. I must say, I don't want to say it right now, but I guess it's sunset for
the 4 guys because अब ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए जो है ये पोजीशन को हासिल कर पाना. Even after racking up so many kills, if they could have performed like Miramar, but yes, I think Miramar is the one map where they perform really well. So next map में देखना पड़ेगा क्या करने वाले. But अभी Kaizuku Esports, they are very good and holding all these positions. They also know how to play that Miramar map. Yesterday we saw that. But अभी यहाँ पे shots connect करते हुए, but kill feed में कुछ हम देख रहे हैं. Pro Thug Esports और वहीं पे KE अंदर पुश करते हो. What do you have to say about KE, man? They're getting kills after kills and kills, and Infected is on unstoppable streak. He gets 2 kills with a Molotov, 3 kills. Oh my God, this guy is not stopping. It's Alpha Omega now with the Molotov kills. Translucent is dead, and so is Rexil. And these are 3 most important kills. Wow. Production piece shows what is happening. Molotov से लोग जल रहे हैं हर जगह. We want to see some जलते हुए शरीर. What do you say, man? Oh It's my like God. this is so bad. 9 teams left and only 18 players alive. Lucifer. Oh, Rakam got eliminated. Rakam, Government Anti and Raw were looking so good, but Gabru managed to eliminate them out. Alpha Omega want to wipe the side of Team TGS, and they managed to do it. God Squad get eliminated with 1 placement point, but right now Alpha Omega, they have not been feeling that good. Their 2 teammates are knocked down, very low health. I hope they manage to get both of them online. If they don't, they would have to end up being with just 2 players in the rest phases. So right now we are in phase 6, and action, we know as soon as we finish up with phase 3 या phase 4 को enter होते ही बहुत ही ज़्यादा action मिल जाता है, and that's what happened here. Kill feed lighted up. We were total of 14 teams, and देखते देखते आधा team खत्म हो गया. We are only with 7 teams left, King Charlie, and Kaizo It all happened because of the circle. Exactly. Yeah, it all happened Kaizo because of the Esports. circle. Because yeah, it all happened because of the circle. Circle का जो phase shift हुआ, Lucifer, it was so claustrophobic. And again, Gabru actually is just standing there, and वहाँ पे KP अंदर push करके जा रहे हैं. And ये जो है, Catlin Prungel, like they are getting things done. But Pro Thug Esports के बारे में, what do you have to say about them? Like Lucifer, they are again on the cruising. They are just cruising. They are sailing. Nobody's ready to stop them out. Yeah, I mean, I think Pro Thugs Esports are playing fights really, really well. They are making sure वो जो fight लेते हैं, they make sure they convert it. If they cannot convert it, भाग जाओ उससे, because it's very early to take on fights, right? उनके पास placement points already आ रहा है, थोड़ा consistency भी आ रहा है compared to yesterday, because yesterday they only got, I would say, maybe a couple of kill points and placement points, not a lot of winner chicken dinner. But today they're getting close to winner chicken dinner. Alpha Omega, somehow they managed to make their way out. So Proud Thug Esports, we cannot see them right now on our screen. I think they're still in, I would say, the hidden thing that they're doing. थोड़ा side में खेल रहे हैं, तो they don't want to take up these skirmishes happening, because phase 6 में आपको पता है, if you take up a fight, you look at the have kill to come out feed. on top of it. And बात करते हैं Proud Thug Esports, eventually they take out the side of KP, and KP wipe out होते हुए at the 7th position. And slowly I think Proud Thug Esports are taking control of the map and making their way in. Bounty Boys have spotted Alpha Omega, and Alpha Omega with the cruise, they managed to run away, but 3 players jump out of the vehicle. They are being hit by the play zone. एक knockout मिल गया Bounty Boys को, and Bounty Boys are looking for a couple more. Alpha Omega is now stuck. They need to heal themselves or go in for a revive, but उनके पास play zone का भी damage शुरू होता जा रहा है. अभी grenades भी फेंका जा रहा है. I think this is all done and over for the side of Alpha Omega. The direction they went with their vehicle did not work out, and जैसे बोलते Zone as well as Bunty Boys, they go ham on the side of Alpha Omega, and they'll be going down at the 6th position. But Proud Thug Esports, they spot out Bunty Boys, and Bunty Boys now they are in a difficulty. यही बोल रहे थे, Proud Thug Esports, they do not go in for every fight. They make sure fight उनके पास चल के आ रहा है. बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं काइजुकू ई-स्पोर्ट्स की और टॉप 4 यहाँ पर बचे हैं. बंटी बॉयज दे हैव द हाईएस्ट नंबर. इट्स 4v2v 2v1 एंड आर्गस इज ओनली लेफ्ट विद 1 प्लेयर, और वो एक प्लेयर हमने देखा है वो क्या कर सकता है. ही कैन बी आई थिंक अ गेम चेंजर इन द लेटर स्टेजेस. बट अभी के लिए जिस तरीके की गेम है वो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे बंटी बॉयज अगर आराम से खेले, संभल के खेले, दे हैव दैट गुड पोजीशन. बट काइजुकू ई-स्पोर्ट्स, दे आर जस्ट यूजिंग दैट एसएलआर tick by tick. They are getting that suppressed fire. He's already on a 6 kill streak. Wow, that is good for him, and he can just convert it into an MVP moment for himself. But Bunty Boys on the other side, ये उनके पास chance है to rise and shine. And we were talking about Argus, and it was Netik who was the last person left on the side of Argus, and now we are only left with 3. We are only left with 3, Lucifer.
We are only left with 3, and you can see Bunty boys are already on a flank. They want to make sure they clear it slowly and steadily, but Pubg Esports have spotted that lurk coming in. एक knockout मिल जाता है उनको, and they're spamming that the vehicle that is there. If it goes down, boom now, that will be a confirmation coming in. But Pubg Esports, they let go of that. The revive will be done right now. I'm worried for the side of Pubg Esports because they've held this, I would say, compound or the house in control for them, but उनके पास जो helmet और vest था वो बहुत ही ज्यादा डैमेज टेक अप कर चुके हैं. एंड राइट नाउ इफ दे वांट टू गो इन फॉर अ फाइट, दे शुड बी द वन initiating it and confirming it. If they let the opponent get those fights, I think Pubg Esports might end up going here as well, but hopefully not. But oh my god, Bunty boys get a beautiful grenade toss and a confirmation as well. Oh! Bunty boys are making this work. Kaizuko Esports, every time we have seen them in a very difficult situation, one or the other way they managed to survive. But right now, Bunty boys, distraction, look at them, they're splitting up. Pubg Esports, one person is knocked down, only one more player left, and if they want to make sure the fight is equalized, they need to get that one person back to his feet. बिल्कुल, यहाँ पे अगर कोई जीत चाहिए, और मेरे ख्याल से अब खाली 4v1v1 रह गए. मेरे ख्याल से 2 प्लेयर इस तरफ से जाएं दाईं ओर से, 2 बाईं ओर से, और मेरे ख्याल से जो गेम है उनके हाथ में पूरी की पूरी आ जाती है. और फिर से मगर यहाँ पे Pubg Esports अपने प्लेयर को दोबारा से रिवाइव कर देते हैं, और इस स्टेज पे रिवाइव कर पाना बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि Pubg Esports पिछली बारी भी 2 प्लेयर ही बचे थे, और ये दुकड़ी जो है ये चौकड़ी पे बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, बिकॉज ये 2 जो प्यादे हैं ना, ये 4 के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाते हैं. और पिछली बारी हमने मर्सिनरीज और ऐसा जो है इंडियन राइवल के साथ होते हुए देखा था, जो कि मेरा मार में था. अब वही कुछ स्थिति दोबारा तैयार, मगर यहाँ पे दोबारा से नॉकआउट होते हैं, और यहाँ इंफेक्टेड अकेले खड़े हैं काइजिको स्पोर्ट्स की तरफ से, और यहाँ पे इनका कारवा खत्म होता हुआ अकेले बचे हैं यहाँ पर. अब बंटी बॉयज 4 प्लेयर यहाँ पे पुश करना चाहेंगे, और पता है कि वहां पे Pubg Esports के, और ये 4v1 की सिचुएशन हमें पता है कि निष्कर्ष क्या होने वाला है, बट कुछ अच्छा कुछ अलग हो सकता है हटके, बट नहीं, यहाँ पे बंटी बॉयज विजयी बनते हुए. बट उससे बड़ी चीज, यहाँ बंटी बॉयज पहली बारी जो है सेमीफाइनल में भी अभी तक नहीं जीते थे. एक बारी चिकन डिनर ने लिया, और यहाँ पे आज ग्रैंड फिनाले में गेम नंबर 3 के अंदर चिकन डिनर लेकर आते हुए लूसीफर 8 किल्स के साथ. वाह. बंटी बॉयज, आई मीन वो लोग जैसे फाइट्स ले रहे थे, वो लोग एडवांटेज जैसे अपने तरफ मोड़ रहे थे. दैट इज व्हाट आई रियली रियली लाइक, बिकॉज जैसे बहुत सारे टीम्स उनके ऊपर ट्राई कर रहे थे, बट the position that they had led them to be in, I would say, a safe spot. जैसे opponent either गाड़ी लेके रश कर रहे थे बिल्डिंग के पास, बंटी बॉय स्प्रे कर रहे थे, एंड immediately the team that might have had a chance on the side of Bunty boys would have got a third party fight. I think that's where Bunty boys got that advantage. Maybe थोड़ा luck भी होता है ना, जो फेवर करना पड़ता है फॉर अ कपल ऑफ टीम्स. आई थिंक बंटी बॉयज को इस मैप में जो सेमीफाइनल में वो कभी भी विनर चिकन डिनर के पास इतना नजदीक भी नहीं पहुंच पाए, पर इस मैप में ऑन द थर्ड मैप ऑफ द ग्रैंड फिनाले दे मेक इट हैपन. स्पेशली we have not seen till today, I would say, a four-man squad surviving and getting a winner chicken dinner. Bunty boys make that possible, Kinkar. दे मेड इट पॉसिबल, और इतना कुछ घटित हुआ है इस मैप के अंदर. बट इस मैप का और ज़्यादा विश्लेषण हम आएंगे इस एड ब्रेक के बाद, और इस एड ब्रेक में ज़रूर आप देखिए इस मैच की सारी हाईलाइट्स. हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. Got him. Let's go.
I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid. Here the other day, I turned off all the lights. Spent an hour with my memories, and then I realized it's not all black and white. Like I was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tired. I don't wear my PJs every day, 'cause I would rather be outside. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. To laugh, and whenever it's a bad day, music is my band. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only. Got him. Let's go. देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से एसोस आरओजी शोडाउन सीरीज में, पावर्ड बाय इंटेल। मैं किंग चार्ली और मेरे साथ यहाँ पे लूसीफर दोबारा से जुड़ चुके हैं। आप सबको पहले पहले इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या घमासान युद्ध देखा था लूसीफर हमने मैच नंबर 3 एयर एंगल में, फिर से सब कुछ एकदम से पलटता हुआ। एग्जैक्टली, आई मीन स्कोर कार्ड ही बताई देगा हमको और भी डिटेल्स। बंटी बॉयज ने क्या ही परफॉर्मेंस दिखाया। आई मीन so many times that we have talked about having a 4-man squad is always an advantage. Bunty boys करके दिखाए इस मैप एंगल में। They took up fights and fights भी I would say it's decent. उन्होंने बहुत ही बेहतरीन भी नहीं किया, बहुत ही बुरा भी नहीं खेला। It was decent. उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस खेल के दिखाया। They get 8 kills on top of it. प्लेसमेंट पॉइंट्स 10 मिल जाएंगे कंपेयर टू एनी अदर टीम। बट काइजो को esports हु आर इन द सेकंड पोजीशन, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन खेला क्योंकि उनका पोजीशन इज थर्ड, बट उन्होंने किल पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा कमाए which will push them to 14 compared to Pubg Esports जो तीसरे स्पॉट पे आ जाता है, even though they finished up second with 13 points. But Gabru played really really well. उनका पोजीशन देखिए, fifth was their position that they ended up in. But again, kills उनका थोड़ा ज़्यादा होने की तरफ से they end up at the fourth position. Alpha Omega comes at the fifth. Sixth is Team Rakam. तो Rakam slowly they have made their way. जैसे हमने देखा था the 4 guys who got 11 kills in the map of Miramar, but they ended up coming fourth. Here we see Rakam ended up at the 10th position, but because of the 6th kill that they grabbed, they are here at the 6th position. उन्होंने बहुत चेंजेस नहीं किया अभी तक स्कोर बोर्ड पे, पर
अभी भी 2 मैप बाकी है, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट टू फार गॉन। अगर जो भी टीम्स यहाँ पे कंसिस्टेंसी, आई वुड से काइजोकू ई-स्पोर्ट्स और प्राउड तक ई-स्पोर्ट्स, ये 2 टीम रहेगा जो थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है टॉप 8 में रहने के लिए। अगर ये 2 टीम अगले 2 मैप में भी ऐसे ही आते हैं ज़्यादा, आई थिंक कैप किंग चार्ली, कि हम आगे जाते, बंटी बॉयज, काइजोकू ई-स्पोर्ट्स और प्राउड तक ई-स्पोर्ट्स, इनमें से कोई हमें विनर मिलता दिखाया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और मेरे ख्याल से गबरू के पास भी बहुत अच्छा चांस है यहाँ पर, ये वो इस पॉइंट टेबल के अंदर। बट द फोर गाइस गॉड स्क्वाड एकदम से काफ़ी ज़्यादा फीके से पड़ चुके हैं, मैं कहूँगा गेम आते हुए दिख नहीं रही उनके हाथ में। बट एक टीम जो कि मैं कहूँगा 1 नंबर की पोजीशन पक्का पक्का अब लेने के योग्य हो सकती है, अगर प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स, ये जो मैप आने वाला है मिरामार, इसके अंदर दोबारा से कुछ हटके करने वाली है या टॉप 3 में पोजीशन लेती है, तो फिर एक दोबारा से चांस बनता है उनके पास कि उनकी एक पोजीशन सिक्योर हो जाती है। आई थिंक बिकॉज लास्ट मैप में अगर वो टॉप 8 में भी रहते देन दे हैव टेकन दैट फर्स्ट पोजीशन, बिकॉज देयर विल बी नो वन नियर देम। आपको 3 मैप के अंदर बैक टू बैक अच्छी पोजीशन मिलती हुई। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक बंटी बॉयज डिड अमेजिंग गेम, कैन दे डू इट अगेन? बिकॉज अब ये प्लेन की ट्रेजेक्टरी बहुत ज्यादा वन साइड है अगेन। जिसने लॉस लियोनीज जाना जाना है, बट व्हाट अबाउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मैप? ये तो बिल्कुल सर्दर्न में प्लेन जा रहा है, कह रहा है जी खुद जाओ, और अब फिर से गाड़ियों के पीछे लड़ाई होने वाली है। एंड इफ दिस एग्जैक्टली सर्कल गोज वन वे, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड इन इरेंगल, दिस ऑल हैवोक वाज रेस्ड बिकॉज ऑफ द सर्कल। तो या लूसीफर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई मीन आई थिंक जैसे हम ये फ्लाइट ट्रेजेक्टरी, फ्लाइट पाथ देख रहे हैं, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन द मैप ऑफ एरांगल। आई मीन if you flip this flight path, it is the same thing. Northern part पूरा left out था, but circle all of a sudden ended up being close to Yasnaya and things completely changed. जो भी military base Novo पे गए थे, they had to start making the run, but वो लोग started to making the run happened only when they were at the phase 3. That was very unfortunate for them. But right now again, a lot of teams are ending up going to Los Leones. We see a couple of teams in Impala and Porto. So I think Impala में थोड़ा fights होना शुरू हो जाएगा immediately as they drop down, because Impala बहुत ही छोटा जगह है, सो द लूट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो अगर एक टीम कब्जा बना लेती है और फाइट लेती है अपने आप को, आई थिंक इम्पाला शुड बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ द फाइट। एंड ब्लाइंड, आई थिंक दे डिड मैनेज टू हिट अ कपल ऑफ शॉट्स, but in the meantime the opponent, it looks like they are making a run for it. They are not looking forward to staying in Impala, and देखिए गाड़ी लेते और भागना शुरू कर देते हैं। गाड़ी लेते और भागना शुरू कर देते, और ये भागने के साथ ही साथ जो है ये जो चीज देख रहे हैं ना, पैराशूट के टाइम पे जो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, कि अगर आप हवा में ही हो तो सीधा, अगर वहां से आप फॉलन फ्रॉम डेथ सीधा काउंट होता है, एंड देन यू गेट दैट किल डायरेक्टली इनटू योर पॉकेट। नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट गेम जहां पर हम किसी को ड्रॉप करते हुए, किल होते हुए नहीं देख रहे। दिस इज वेरी रेयर, बिकॉज पहली 3 गेम में हमेशा ऐसे ऐसे हुआ है। बट यस, अब फिर से मिरामार का मैप, वी हैव दिस वास्ट स्ट्रक्चर, 4 गाइज के सामने ही है वैन, एंड नाउ दिस इज अगेन स्टार्ट ऑफ अ फाइट, एंड नाउ दिस इज वन प्लेस पिकाडो के अंदर, वी नो दिस हॉट शॉट कैसीनो, और यहाँ पे लूट मिल जाती है काफी अच्छी। बट अगेन कमिंग टू द फाइट पार्ट, वैन की भी परफॉर्मेंस गेम नंबर 1 में बहुत अच्छी थी, गेम नंबर 2 और 3 में काफी फीकी रही। 4 गाइज की फर्स्ट और थर्ड गेम में बड़ी फीकी परफॉर्मेंस थी, सेकंड गेम में किल्स के साथ काफी अच्छे पॉइंट लेकर आ पाए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट आंटी को, oh, proud thug esports, these people are not stopping, man. These people are getting a शुरुआत कर दी है, मतलब शेर के मुंह में आते ही खून लग गया फिर से। These people are not stopping. कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, as soon as you start building up confidence for yourself, वही कर रहे हैं प्राउड तक esports। फर्स्ट मैप में उन्होंने थोड़ा बिल्ड किया, they got a couple of placement position, skill points। सेकेंड मैप आते ही उन्होंने ऑलमोस्ट विनर चिकन डिनर ग्रैब किया। थर्ड मैप में भी आते ही they were so close, उन्होंने इतना किल्स ग्रैब कर चुके थे, the position was really good, but unfortunately प्लेयर काउंट थोड़ा लेस था, इसके वजह से they dropped down। otherwise प्राउड तक esports could have grabbed winner chicken dinner and grabbed the first position। I think अभी के लिए वो उतावला हो रहा है कि उनको विनर चिकन डिनर चाहिए, बहुत टाइम हो गया, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इफ दे मैनेज टू डू इट, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड, बिकॉज जो पहला किल हमने देख लिया है अभी अर्ली स्क्रिमिश में, दैट इज टीम रकम सेमीफिनाले में बहुत ही बढ़िया टीम थी। दे वर ऑलवेज इन टॉप 2 और टॉप 3 व्हेन दे आर फिनिशिंग अप अ मैप। इट्स काइजुको esports, they are waiting for this, a free kill might happen and mercenaries they lose a player। पता नहीं ये क्या हुआ, एक प्लेयर mercenaries से was alone, he was roaming around, and यही बोल रहे थे अगर
चैट को याद है, on the map of Miramar, if you are alone in a particular position, you cannot be running around. And Kaizo को esports sound क्यों मिल जाता है उनको footsteps का, और वेट करते हैं और mercenaries को टेक डाउन कर जाता है. Very unfortunate. 2 players from top 2 teams have already dropped down. या रेकम की साइड से गवर्नमेंट आंटी जाती है और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, मगर द फोर गाइस कारकू यहाँ पे वैन के गोस्टिया को नॉकआउट कर दिया. और ये जो फाइट थी मेरे को पिकाडो के अंदर, डेफिनेटली आई वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज ये अब जब एक प्लेयर नॉकआउट हो गया है, देन देयर इज दिस आउटब्रेक इन पिकाडो एंड रेकम इज स्टिल ऑन टू दैट क्लोज एनकाउंटर. सो या अब एक लास्ट मैं कहूंगा चांस बचता है यहाँ पर, if they can make it into the top 10. So, yep, they are charging in 4 guys. Or Crazy Family is trying to get the position. Oh! What a gameplay coming out from Kharku! Wow, he just went in and ham man. यहाँ पे दो तरफ से एंगल पकड़े हुए थे और दोनों तरफ से गन फायर करने के साथ, and that is one squad eliminated in before the 5-minute mark. Wow, Van is out of the game. Van is out of the tournament. They are not coming into the first 2 position no matter what happens. Exactly. I mean, Until unless they're getting 25, they are unless they're getting 20 kills in the next game plus the first position. That is the dream. That is the dream for every team right now, especially for top teams such as the 4 guys, Rakam, I would say even Van, other teams such as Argus as well. Argus को एक winner chicken dinner मिल गया है and they are in the first position. Or I am not sure if they are other way around, but they are on the first position on the first map of Irangle. So ऐसे टीम्स को जो टॉप में थे, दे वर ऑन द बॉटम, बट राइट नाउ 4 गाइस को बहुत ही अच्छा ओपनिंग मिल गया है. पिकाडो छोटा जगह है, बट वैन मैनेज टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. द कैसीनो, द फाइट दैट वर्कड आउट इन द फेवर ऑफ द साइड ऑफ टीम 4 guys. But right now पैकेज तो ड्रॉप हो गया यहाँ इसके पास. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्राउड तक esports ऑम है यहाँ पे, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट सब कुछ है, बैकपैक भी है. सो द लूट इज रियली गुड, बट आई थिंक इफ somebody is able to scope this out, they should be able to take down the side of Proud Thug Esports. Proud Thug Esports उनको फ्री में सारा एयर ड्रॉप का यूटिलिटीज वेपनरी मिल जाता है, ऑम ले लेते हैं. उनके पास अभी टोटल 20 बुलेट्स रहते हैं ऑम के. दे ऑलरेडी ऑल्सो हैव अ स्कोप. तो ऑल Proud Thug Esports right now they need to do is go to a higher plane depending on where the circle is shifting और वहां से पूरा धाराशी कर दे opponents को. Yeah, this thing Proud Thug Esports has been doing in the past 2 games. This team goes in and इनको पता है कि भाई 6 मिनट के मार्क के आसपास जो है ड्रॉप होएगा, और जब ड्रॉप होना है तो उससे पहले अपनी जितनी जो जरूरी आवश्यक आइटम्स हैं, जितनी आवश्यकता है चीज़ों की, वो लेते हैं, फटाफट अपने बैकपैक में डालते हैं, एंड देन दे स्टार्ट क्रूजिंग आउट. अपनी गाड़ी को उठाते हैं एंड देन दे गो फॉर अ 360 डिग्री स्पिन. बट आई विश देयर वाज दिस इन दिस टूर्नामेंट जो Asus ROG Showdown सीरीज के अंदर. आई वुड रिक्वेस्ट के अगर जब नेक्स्ट टाइम जब ये टूर्नामेंट हो PUBG PC के लिए, ट्राई कीपिंग दिस अवार्ड एज वेल, द एवेंजर अवार्ड. मेरे ख्याल से ऐसा भी होना चाहिए. द टीम हु इज नॉट स्केर्ड to go in for kills, rack up some kills and make their name through killing. So I think I would definitely would like to give that award to 4 guys, because these people are like, एक कहता है ना, एक टीम के साथ एक हमेशा एक्शन रिवॉल्व करता है. That is with 4 guys, I must say. Like मैं इनका फैमिली अर्जन के जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पे the 4 guys, Wolfie guy is getting knocked out. So I guess this what happens when you press that panic mode. Again, फिर से वैसे ही कुछ सर्कल हम देखने को देख रहे हैं लूसीफर, एंड एवरीबडी हैज टू शिफ्ट इनटू दिस ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप ऑल ऑफ अ सडन. और थोड़ा सा पानी की तरफ है प्राउड थग ईस्पोर्ट्स ट्राइंग टू मेक दोस शॉट्स विद दैट मिनी 14. ही इज डाउन टू सो लो एचपी एंड ही विल गेट अ नॉकआउट. और यहाँ पे डैनी के लिए दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा होने वाली है. और यहाँ पे द गॉड स्क्वाड, व्हाट यू हैव टू से, लाइक अभी थोड़ा सा इसके ऊपर चार्ज करेंगे. द गॉड स्क्वाड, ही नोज ही गॉट दैट नॉकआउट. Exactly, but मैं अभी I'm worried is Argus have heard this sound. So if Argus toss a couple of grenades, or if Argus tries to fight with Proud Thug Esports, they might be a third-party encounter coming in from the side of Team God Squad. God Squad also one of the top teams. We have not seen them a lot in the top 5 or top 8 in the first 3 maps. So अगर God Squad यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं, as you said, a couple of teams which would have already say goodbye, they formality के लिए थोड़ा खेलना पड़ जाएगा उनको last map. I think that should not happen. अभी जैसे हर वक्त चेंज हो रहा है, maybe this map all the top teams might eventually all of a sudden come on top, but now Argus has spotted Proud Thug Esports. स्प्रे जा रहा है, बहुत ही डैमेज डील कर चुके हैं, बट ऋषि का हेलमेट
is almost dead. उनको एक शॉट लगेगा हेड पे, एंड इफ दिस इज अ रियली गुड गन, वो लोग सीधा नॉकडाउन हो सकते हैं. So he needs to be worried, but higher ground advantage in terms of being in a house will give them a kind of safety, because even though if he gets knocked down, उनका हाउस को सेफ्टी है एंड हिज टीममेट्स आर स्टिल क्लोज. बट प्राउड तक esports, आई एम वरीड इन दिस मैप, क्योंकि हमने देखा दो लोग आर इन बिटवीन अ टीम ब्लाइंड, दो लोग वर इन बिटवीन द साइड ऑफ टीम आर्गस एज वेल एज आई थिंक अ टीम God Squad. So right now, Proud Thug Esports is a little bit, I would say, in two different directions. They need to come together because they've already lost one player. और ये यहाँ पे देख रहे हैं चौबे जी को, उन्होंने C4 के क्रेजी 4 के प्रो जी को जो है नॉकआउट कर दिया. नाउ दिस इज वन प्रॉब्लमेटिक थिंग. और मगर मर्सिनरी नागिन हैव टेकन डाउन Reckham Raw X and he will see the sunset for himself in this game and he'll sit out and watch the entire game spectator बन के. That was very unfortunate for him, but mercenaries भी धीरे धीरे करके kills rack up कर रहे. They were not able to capitalize anything in the Miramar. They were able to capitalize in the last Miramar, but Erangel में इतना कुछ नहीं कर पाए थे the last game. But again, कई टीमें मैंने देखा है जो कि Miramar में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है. चौबे जी यहाँ पर जो है फिर से C4 के प्रो जी को नॉकआउट करते हैं. Now he's on his knees. Can he finish that kill? Because that is important. Knocking out will get you that extra damage later on जब हम 5 गेम का पूरा संगठन करेंगे किसने सबसे ज्यादा डैमेज दिया था. बट it won't get you until something until unless. और यहाँ पे हम देख रहे थे लिंच को शॉट कनेक्ट करते हुए, और शॉट कनेक्ट करने के साथ ही that beautiful SKS shot Lucifer Waits that for control. it, aims for it, एंड वो जैसे ही स्टेबलाइज हो जाता है प्राउड तक esports का प्लेयर, इमीडिएटली स्टार्ट्स 3 bullets were enough, नॉक भी कर दिया, कंफर्म भी कर दिया और बोल दिया टीम को एक किल पॉइंट मिल गया. बट mercenaries, they have lost one player. Chat, I have one question for the chat यहाँ पे किंग चार्ली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं. ब्लाइंड भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, सेकंड मैप में ब्लाइंड दिखाई नहीं दी, थर्ड मैप में भी आए ब्लाइंड, थोड़ा आई वो भी दिखाई नहीं दी. सेम गोज फॉर द साइड ऑफ 4 guys. गॉड स्क्वाड, इतना सारा स्क्वाड्स है यहाँ पे 16, एक एक करके थोड़ा थोड़ा अर्ली स्टेजेस फाइट्स में दिखाई दे रही है. बट एज वी गो इनटू द 3 phase और 4th phase, टीम्स आर कंप्लीटली गेटिंग ऑब्लिटरेटेड. तो मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, बट चैट आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है? कौन सा टीम, जैसे मैंने अर्ली स्टेजेस में पूछा था, कौन सा टीम फर्स्ट पोजीशन लेके जाएगा ये पूरा ग्रैंड फिनाले का और इस मैच का? आप कहीं से भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब और कहीं से भी, स्टार्ट सपोर्टिंग योर टीम. हमको देखना है कि कौन कौन से टीम के लिए व्यूअर्स आए यहाँ से और सपोर्ट किस किस को मिल रहा है. बट राइट नाउ mercenaries has spotted one more team. They're trying to spray it out, but उनको कुछ कनेक्शन शॉट्स नहीं मिलता है. काइजो को esports सेफ्टी फॉर नाउ, बट mercenaries उनको पता चल जाता है कि इफ दे स्टे इन दैट पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मिरामार में बहुत ज्यादा कवर नहीं है, दे नीड टू रन अवे बिकॉज उनका पोजीशन ऑलरेडी गिवन अप है. पोजीशन ऑलरेडी गिवन अप है. और अब जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ गेम जैसे जैसे रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्व होने के साथ ही साथ हम फेज 3 की तरफ जा रहे हैं. ओ ब्लाइंड किल हुआ, गॉड गेटिंग दैट किल ऑन टू केई. और अब यही जो है ना धीरे धीरे करके जो नॉकआउट करते हैं, और नॉकआउट करने के साथ एक प्रॉब्लम पड़ जाती है, क्योंकि आपके वेस्ट और जो है वेन से और आर्मर इज डाउन एंड आपका हेलमेट अगर डाउन हो जाता है वहां पे, देन इट्स वेरी हार्ड इवन इफ यू स्टैंड अप. एंड मेरा मार के अंदर इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ लूट की, इट्स वेरी स्केयर्स, क्योंकि बड़ी दूर दूर है सिटीज एक दूसरे से, और जिस तरीके का सर्कल है यहाँ पर आप नॉकआउट होना शुरू होंगे. क्योंकि आई वुड से वन थिंग लूसीफर, क्योंकि अभी 30 से 40% जो सारी फाइट्स हैं वो इसी सर्कल में कंप्लीट हो जाएंगी. लाइक विल सी एटलीस्ट 5 to 6 टीम्स गोइंग डाउन, लाइक विल बी लेफ्ट विद ओनली 7-8 टीम्स. एंड एज आई वाज सेइंग दिस, वहां पे किल फीड में हम देख रहे हैं एंटे जो हैं थर्ड पार्टी गेम के बाहर होते हुए. या आर्गस ने थर्ड पार्टी एडवांटेज ले लिया ब्लाइंड के ऊपर. That is what I'm talking about. Like you, वही कुछ जैसे आपको दिख रहा है किल फीड के अंदर, ओके somebody is getting knocked out and आपके पास गोलियां चल रही हैं, and you see somebody is lying on the floor, somebody is lying in a container, or somebody is lying in a shack or something, किसी हट के अंदर कोई छुपा हुआ है. You just go in and Argus को देखिए यहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. They're collecting entire information onto blind. Oh blind वहां पे शॉट थोड़े से कनेक्ट कर रही थी. Lynch was doing his thing. पिछली बारी SKS से कर पाए थे, but again he has to wait for it. I think यही फिर से हम बात देख रहे हैं कि Lucifer, position is everything. Information, collect information and then you process it. Exactly.
यहाँ इम्पाला में जो दो टीम्स आई थी पहले बारी में, एंड इट एंडेड अप ओनली बीइंग ब्लाइंड हु गॉट द एरिया कंट्रोल, बट एज द सर्कल मूव टुवर्ड्स लॉस लेनियर्स और ये सब चीजें अंदर आने शुरू हो गए, टीम स्टार्टेड मेकिंग देयर मूव. राइट नाउ बंटी बॉयज इज आल्सो वेरी क्लोज टू द साइड ऑफ ब्लाइंड एज वेल एज काइसोको esports. तो यहाँ पे जो फाइट होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट इन मीन टाइम द फोर पीपल आर स्टिल अलाइव. वो एक टीम को स्पॉट आउट करते हैं, आई थिंक दैट वाज टीम रकम, बट बंटी बॉयज इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ फाइट, बट ब्लाइंड इन द मीन टाइम दे आर टेकिंग डाउन अ लॉट ऑफ पीपल. बंटी बॉयज confirm a kill from Kaizoko Esports. जैसे उसको अपने पैर पे डाल देते, they immediately managed to confirm it. But in the meantime, TGS will be able to get a kill. And talking about it, within a blink of an eye, KP का पूरा टीम नॉकआउट कर देते हैं गबरू के साइड से. That is going to be the second team being knocked out on this fourth map of Miramar. And Indian Rivals वो भी पीछे नहीं है फाइट के, वो भी बहुत सारे किल्स निकाल रहे हैं. अल्फा गेमिंग का 2 प्लेयर्स ऑलरेडी नॉक्ड एंड कंफर्म्ड भी है. कि बिल्कुल यहाँ पे फाइट ब्रेक थ्रू हो चुकी है और काइजोको ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर जो है काफी ज्यादा डाउन, एंड दैट कार ब्लास्ट अगेन इज गोइंग, मतलब कानों में ना गूंजती रहेगी वो धमाके की आवाज. और ये जो ड्राइवर को है मेरा ख्याल से कोसा जाएगा, क्योंकि इट्स ऑलवेज द ड्राइवर हु हैज बीन कर्स. और बिल्कुल भाई की तरह गाड़ी चलाते हुए देखा नहीं आता, मैं होता तो उड़ा देता. मतलब वैसे ही है यहाँ पे गोलियां जरी देखा गाड़ी को, प्लेयर को ही उड़ा देते हैं. जी बिल्कुल. ऐसे गलती देखिए यहाँ पर होना स्टेज पे, वो भी बहुत भारी पड़ सकता है. और वही भारीपन जो आप उसको लेके जाएंगे मन में, और ये ना हमेशा एक बंदे, एक प्लेयर जो कि ड्राइव कर रहा होता है, उसके ऊपर वैसे ही एक भार होता है कि जब 4 प्लेयरों को साथ में कैरी, इससे अब सारे के सारे अपनी अलग अलग गाड़ियां कैरी करते हैं. बट अब यही है कि जब वही ऐसी हालत होती है, हाथ को आया और मुंह को ना लगाया, तो सामने खाना परोसा और खा ना पाओ, तो वही ऐसा ही सा लगता है जब वो ड्राइवर को. एंड आई थिंक दैट फीलिंग that doesn't let that player come out of that dilemma. और वो जो चीज है वो नेक्स्ट गेम में भी दोबारा से कैरी फॉरवर्ड होती है. यार हम तो गाड़ी की वजह से ही मर गए. एंड दैट मोटिवेशन, आई नो, दैट थिंकिंग, दैट थॉट प्रोसेस, थिंकिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, इट्स वेरी हार्ड. बट अगेन देन यू हैव टू सिट आइडल फॉर द एंटायर गेम नाउ. एंड बट यहाँ पर प्राउड सा ई-स्पोर्ट्स, दे आर जस्ट नॉट स्टॉपिंग. हार्डवेल को वहां पे नॉकआउट किया है, एंड हार्डवेल वहां पे जो है भूदेव को कर देते हैं नॉकआउट. बट अगेन ऑन द अदर साइड यहाँ पे 2 प्लेयर बाहर होते हुए, प्राउड था ई-स्पोर्ट्स के जस्ट फायर ऑन भूदेव. एंड यस, जो कि है हमारे बीबी बॉयज अंदर जाते हुए, दीस पीपल आर नॉट स्टॉपिंग. एंड रेकम अगेन टेक्स दैट 13th पोजीशन एग्जिट. See, this is what I was talking about, Lucifer. You are not able to come out of that thought process जो पहली 2 गेमों में हुआ उनके साथ. क्या Exactly, but look at this shot coming in from Car 98. Kilua beautifully connects, and along with that, Gabru, 2 people trying to fight out with 1 person, and it will be at the end. Blind Kilua got with the Car 98 taking a confirmation kill on Kaizoko Esports. ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. Gabru will have an advantage, who might have knocked down, but the kill gets confirmed from Kilua. So Blind will get that point advantage, but I'm very, very sad for Drakam as well as the side of Proud Thug Esports, because Proud Thug Esports तीनों मैप में जो भी हमने देखा है अभी तक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया. आई मीन पहले मैप में उन्होंने टॉप 3 में नहीं फिनिश किया, बट टॉप 8 में थे. बट गोइंग टू द सेकंड एंड थर्ड, दे वर इन द टॉप 3. दे हैड ग्रैब्ड सो मच पॉइंट फॉर देमसेल्व्स. बट यहाँ पे जो नॉकआउट हुआ है, स्पेशली आफ्टर गेटिंग एन ऑम, उन्होंने ऑम का कुछ खेल ही नहीं दिखाया. बिफोर दे कुड डू एनीथिंग, बिफोर दे कुड गेट अ हायर ग्राउंड, they got deleted from the server for the map of Miramar. तो अभी Proud Thug Esports, all they can do is sit back and wish that they make a comeback on the last map, match 5 of Miramar. अगर कुछ वहाँ पे शानदार दिखा देते हैं हमको, I think Proud Thug Esports still have a strong contention for the first or the second position. But right now, Kaizoko Esports have spotted out a couple of teams. I think that's going to be the side of Team Gabru. Yes, spray तो कर रहे हैं, पर play zone उनके साइड पे डिसएडवांटेज है. They have to make a run, but as they make a run, Gabru के सामने सीधे ओपन में आ जाते हैं. ये बिल्कुल ओपन में आना काफी ज्यादा खतरनाक है. देखिए कैसे गोलियां लग रही है वहां पे कार पे, और लेफ्ट राइट लेफ्ट, मगर यहाँ पे अपने एक प्लेयर को खो देते हैं. Kaizoko Esports, now they are only left with 1 player. Infected is also out of the game. He gets infected with those bullets, and वहां पे जब एक बार आप नॉकआउट हो जाते हो, infected zombies, you just put a bullet to the head and they are out of the game. But yes, 12 teams left, और ये के साथ मैं बता रहा हूँ 12 के साथ हम देख रहे only 36 player alive. मगर यहाँ पे डैंटे अंदर जाते हुए, he knows he has done his job and he'll be reviving up और अपनी टीम के लिए काम करते हुए. But again, Indian rivals slowly and steadily having those numbers, they know Indian rivals are playing very good. They did that stuff
in last to last map, I guess it was Miramar, और वहां पे काफी अच्छी उन्होंने गेम खेल के दिखाई थी, उसको तब्दील किया था, बट अगेन दैट सेम थिंग, दैट सेम स्ट्रेटजी इज कमिंग अप अगेन, लूसीफर फॉर इंडियन राइवल्स, Exactly. 4 kills on the Indian board. rivals throughout all the 3 maps that we have seen, they've been able to frag out a lot. But उनका placement points बहुत ही low थे. I think that's where I'm a little bit worried for them. But 4 guys right now zone का advantage उनके ऊपर नहीं है. God Squad have spotted them out. So अभी 4 guys and God Squad, पिछले time I think these two teams when they fought out, it was the side of 4 guys coming on top. But right now God Squad have a better advantage. एक और care package आता है, airdrop आ जाता है, उसमें भी OM मिल जाता है. Is there going to be any team going towards it? Argus right now is at a very difficult spot. चारों players alive है, but they do not have a higher ground advantage. But this area or the play zone that is moving in is in advantage towards them. 4 guys somehow they're managing to survive. वो लोग गॉड स्क्वाड को निकालते हुए कंफर्म कर रहे हैं एक के बाद एक, बट आर्गस उसका एडवांटेज लेते हुए दे आर कंफर्मिंग दो स्किल्स. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. 4 guys सर्वाइव करते हैं प्ले जोन के एज पे, गेट नॉकआउट्स, आर्गस उसको ही एडवांटेज लेके कंफर्मेशन किल्स निकाल देते हैं. बंटी बॉयज इन द मीन टाइम दे वाइप आउट द होल स्क्वाड ऑफ मर्सिनरीज ऑन देयर ओन, एंड दैट इज गोइंग टू बी मर्सिनरीज अगेन ड्रॉपिंग डाउन एट द 10th पोजीशन. किंग चार्ली वाओ, वो गाड़ी लेके जा रहे थे, मैं कह रहा हूँ यार रोहित शेट्टी का बैंग बैंग हो रहा है, गाड़ी एक दूसरे के ऊपर जा रही है और फिर से धमाधम और लाइक बूम बूम. दिस इज हमारी बॉलीवुड की कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस चल रही है यहाँ पे. फैमिली को देखिए, फैमिली को देखिए स्कोप कर Okay, चुके हैं आर्गस के ऊपर. now he is scoping in and he'll charge in मेरे ख्याल से, because he knows he doesn't want to reveal his position. He'll wait for it because he plays to his advantage. मैंने ये देखा है जो कि टीम स्पेशली द 4 guys को है, जब कोई जोन से पुश कर रहा था उनको पता था जोन के बाहर है, दे स्टॉप दैट कार, और गाड़ी को स्टॉप करने के बाद देन दे स्टार्टेड शूटिंग इन. और यहाँ पे हाइड्रा फ्लिक फाइनली आज अपना जादू नहीं दिखा पाए, एंड फाइनली यहाँ पे एक नॉक करते हुए कैन इट मेक इट टू 2, और शैक के पीछे जो है कवर ले लिया है, बट कैन ही फिनिश दैट किल व्हाट ही स्टार्टेड. वहां से वो प्लेयर जो है ब्लू जोन की मार खाते हुए आ रहे. अल्फा ओमेगा विल बी द 9 टीम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इंटिमिडेटेड हो रहे. वहां पे बात कर रहे थे काइजिकू स्पोर्ट्स दी 8th पोजीशन लेके बाहर होते हुए, गबरू गेमिंग वहां पे एक्सीलेंट मेकिंग श्योर दे एंड एंड दे डस्ट पुट देम टू डस्ट टू द एशेस. And now all these teams which have been eliminated till now, they are just watching carefully कि क्या हो रहा है, points telling me everything. Argus have a very good chance making it and try to get that chicken dinner. काफी अच्छी position है, but on the other side, Bunty boys they have 6 kills, but they are only left with 2 players. But we have to talk about this guy Vetsu. He is having those 5 kills and he did that last time also. Bunty boys के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण बनते हो यहाँ पे Vetsu. एग्जैक्टली. बट क्रेजी फैमिली जैसे वो पिछले मैप में बहुत अर्ली चले गए थे, अभी सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत ही किल्स ग्रैब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं. गबरू दे आर नॉट मेकिंग दिस इजी एट ऑल फॉर एनी टीम्स. गबरू हैज कंफर्म्ड अ किल फ्रॉम बंटी बॉयज, द प्रीवियस विनर चिकन डिनर, और गबरू टीम दे वांट टू अनाइलेट एंड डिस्ट्रॉय द साइड ऑफ टीम बंटी बॉयज. वो लोग बहुत ही किल्स ट्राई कर रहे हैं, बट आई गेस दे गेट अ स्पैम फ्रॉम द साइड ऑफ टीम अर्गस. तो अर्गस अभी उनके पास थोड़ा हायर ग्राउंड की एडवांटेज है. गबरू पेन किल विल स्पॉट अ प्लेयर ऑफ टीम गबरू. तो अभी किल आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट अर्गस नेतिक ही हैज हिज स्कोप रेडी ऑन द लास्ट और द सेकंड लास्ट प्लेयर फ्रॉम द साइड ऑफ 4 guys. अभी तक वो दूसरा प्लेयर को स्कोप आउट कर रहे हैं, बट इन द मीन टाइम गबरू गेट्स नॉक्ड फ्रॉम अर्गस. पेन किल अभी ही इज ऑन हिज नीज, ही नीड्स टू कॉल फॉर हिज टीम फॉर अ रिवाइव, बट इसी टाइम पे अगर एक ग्रेनेड कुक करके थ्रो किया जाता है, बिकॉज इट्स इन द ओपन, एनीथिंग कैन हैपन. इंडियन राइवल्स आई थिंक दे आर इन अ व्हीकल व्हिच वाज बर्निंग and they managed to make a change, but blind esports Killua god, he'll be able to spot them out, but kill तो अभी तक कंफर्म नहीं किया. इन्फॉर्मेशन तो मिल गया पे खेलने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिल गया, और इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ दे आर जस्ट मेकिंग ईच एंड एवरीथिंग, दे आर मेकिंग इट हार्ड फॉर टीम्स टू पुश इन. और ये धीरे धीरे करके जिनको सबको सर्कल के अंदर जाना है, हम वहां पे नीचे देख रहे हैं फाइट जैसे ब्रेक थ्रू हो चुकी है. ब्लाइंड के पास 2 प्लेयर्स बचे हैं, मगर वहीं पे ही दूसरी तरफ इंडियन राइवल जो है आंखें गड़ा के बैठी है. दे हैव ऑल देयर प्लेयर्स इंटैक्ट. आई थिंक इंडियन राइवल्स हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ टेकिंग दिस चिकन डिनर. अगर वो ये ऐसा कर पाते हैं, दिस माइट टेक देम इनटू द टॉप ऑफ द चार्ट, बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट इन द लास्ट मिरामार, इनकी मेरे ख्याल से सेकंड was it the second I guess they got the second position, and वो position के साथ ही साथ they can capitalize it further on. but यहाँ पे टीम गबरू they also have numbers, 8 किल कर चुके हैं बोर्ड पे, so it can be टीम गबरू
वर्सेस इंडियन राइवल्स। जो लास्ट टाइम टीम गबरू बड़ा अच्छा खेल रही थी, वहां पे मर्सिनरीज ने आके उनके 3 प्लेयर को लास्ट टाइम मिरामार में खत्म कर दिया था, बट मर्सिनरीज दे आर नॉट इन द चैप्टर राइट नाउ। But Blind, Lynch, Killua, and unknown player all on one kill, and Blind trying to process all that information. But on the other side, they are trying to make a problem for Indian rivals. Indian rivals को काफी ज्यादा डैमेज दिया है, गिविंग आउट दैट डैमेज टू द कार। और वहां पे देखिए कैसे टायर बर्स्ट आउट कर दिए गए हैं ताकि वो कार को ना लेके जा पाए। और गबरू यहाँ पे 5 किल करते हुए आगे, रॉय बढ़ते हुए, and he's on a killing spree. This guy doesn't want to stop. 9 kills on the board. Killua gets one more kill. Unknown player on to 1/4 of the HP. Lucifer वहां पर अब अविरल भी किल्स निकाल रहे हैं पीजे की साइड पे। पैंडा गेमिंग, आई मीन पैंडा गेमिंग का बहुत ज़्यादा खेल हमें दिखाई नहीं दिया आज। दे ट्राई देयर बेस्ट, गेट अ कपल ऑफ किल्स, बट आई गेस the 4 guys, I think 2 players left from the side of 4 guys will be able to confirm the last player and also eliminate the side of Panda Gaming at the 6th position. Argus के भी 4 player है, Indian Rivals के भी I guess 4 players है, but Blind has lost 1 player. They go for an aggressive peak and उसका Nate डिलीट हो जाता है इस मैच से। सो अभी 3 players are there for the side of Team Blind, and just like the first map that we saw, Team Blind have an advantage of a house. तो अगर वो लोग वहाँ पे मेंटेन करते हैं अपना पोजीशन, they should be able to go to the top 3 position hopefully. But right now Indian Rivals are looking forward to take a fight with Team Gabru. Team Gabru not great in terms of position, they are at the edge of the play zone and higher ground का भी advantage नहीं है उनके पास. So as they make their way up, they have to show their heads, and if the side of Team Argus is really good in terms of scope and headshots, उनको एक एक शॉट सिर्फ चाहिए, क्योंकि वेस्ट और हेलमेट इज नॉट ग्रेट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम गबरू। बिल्कुल, वेस्ट एंड अगर हम बात करें हेलमेट की, दे आर नॉट ग्रेट। और यही है, इसी के साथ देखिए ब्लाइंड के पास 3 प्लेयर बचे हैं, इंडियन राइवल के पास 4 प्लेयर बचे हैं, गबरू के पास 4 प्लेयर बचे हैं, वहां पे आर्गस के पास भी जो है चारों प्लेयर इंटैक्ट पड़े हैं। खाली एक टीम है जिसके पास खाली 2 प्लेयर बचे हैं, वो है हमारी द 4 गाइज। और द 4 गाइज के पास अगर ये 2 जो है, तो इतनी बड़ी हेफ्टी अमाउंट में जो टीम्स हैं, एंड ऑल दीज टीम्स आर स्कैटर्ड वे टू फार, वे फार फार फ्रॉम ईच अदर। वहां से 2 टीमें जो है नॉर्दर्न साइड से पुश कर रही हैं, 3 फ्रॉम वन फ्रॉम द वेस्टर्न, लोअर सर्दर्न वेस्टर्न साइड, एक सर्दर्न ईस्टर्न साइड से और एक बिल्कुल सर्दर्न साइड से सर्कल के। तो अब ये जो फाइट ब्रेक थ्रू हो रही है, गबरू देखिए कैसे धीरे करके आगे अंदर जा रहे हैं। वहां पर एक्सेलेंट आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस खेलते हुए अपनी टीम के लिए, गबरू के लिए। एंड इफ टीम गबरू becomes the first or comes on to the first or second position आज, तो excellent will have a main role in that. but यहाँ पे बात कर रहे थे, पेन किल has been taken out by Argus Nithic, और वहां पे आगे फाइट ब्रेक थ्रू होती हुई इंडियन राइवल्स विकी रेक्स वहां पे करते हुए मेक श्योर, और इसी के साथ हम आते हुए अपने टॉप 4 पे, और जो है 4 गाइस से पोजीशन लेके जाते हुए गबरू के पास खाली 2 प्लेयर बचे हैं, वन थर्ड वन इज बीइंग नॉक्ड आउट, ब्लाइंड ऑलरेडी हैज 3 in the pocket, Argus 4, Indian Rivals 4, Blind 3, and Gabru can be back to 3. So yes, Lucifer, who do you think have a better chance right now? Just take one name. No, I think Argus, because they have a higher ground advantage, and Indian Rivals and Argus are the only 2 teams who have their whole squads alive. But Blind, that house position that they have, they're making it work. Argus are taking the side of Team Gabru to a complete roller coaster ride. उन्होंने 2 players को निकाल दिया, एक को नॉकआउट कर चुके हैं वो लोग. It's only up to Axlin, but play zone का hit और damage मिल रहा है, और Axlin very soon he should also be confirmed either from the play zone or from the side of Team Argus, and Argus just let it go. Argus देखिए उनको पता चल जाता है उनके पास अभी एडवांटेज नहीं है, हीलिंग बैटल भी अगर ट्राई करेंगे तो उनके पास बहुत सारा टाइम नहीं है, क्योंकि प्ले जोन बहुत ही जल्दी शिफ्ट हो रहा है। एंड देखते ही Team Gabru are wiped out, and now it's back to a 4v4 versus 3 from the side of Team Blind. And Team Blind को देखिए उनका लक पता नहीं कितना ज्यादा फेवर कर रहा है। जोन अभी तक उनके साइड से शिफ्ट नहीं हुआ, उनके पास अभी भी हाउस का कंट्रोल है, उनके पास हार्ड कवर का कंट्रोल है। सो आई थिंक दे शुड हैव एन एडवांटेज, बट Argus हाउ दे प्लेड ओवर द एजेस, उनके पास एडवांटेज अभी भी होना चाहिए। दे आर मैनेजिंग टू डू डैमेज ऑन द साइड ऑफ इंडियन राइवल, स्कोप कर रहे हैं वो लोग, फाइंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बट आई गेस इफ दे स्टार्ट मूविंग इन एंड इफ दे कम अंडर द स्कोप ऑफ टीम ब्लाइंड, then things will start changing. But right now Team Blind are gone kind of a sleep mode. Yeah, Team Blind are on a sleep mode, and I think they need a wake up call. अब जाग जाओ, सवेरा हो चुका है। I think the pick like the
जो क्या बोलते हैं, मुर्गी कुकड़ू कर चुकी है ऑलरेडी, एंड इट्स ऑलरेडी लाइक वी आर डाउन टू 3 टीम्स, एंड बट यस यहाँ पे फाइट होने स्टार्ट हो चुकी है, और इंडियन राइवल डांटे ऋषि गॉड फॉर वहां पे विकी जो है नृत्य को करते हुए, मगर वहीं पे ही डेल्टा काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, डी वो वहां पर फटाफट जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी टीममेट को, और हाथ लगा के जल्दी 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 हो सके खड़ा करेंगे, और एक धीरे धीरे करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करके ब्लाइंड अभी स्टिल दे आर प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वहां पे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश, एंड दे मिस्ड आउट दैट कार 98 शॉट, आर्गस 3 players down, only 1 player left, and blind esports they know they have to do it, और यहाँ पे सलमान पटेल अंदर जाते हुए आर्गस पूरी की पूरी एलिमिनेट होती हुई, और इसी के साथ जो 4 किल्स है पूरी की पूरी इंडियन राइवल को मिलती हुई, और यहाँ पे ब्लाइंड esports के प्लेयर अंदर गए थे लिंच, वहां पर उनको भी लिंच डाउन कर दिया मिनी 14 के साथ, एंड इट्स 4v2 नाउ, एंड इट विल बी रियली हार्ड, इंडियन राइवल बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाली, और डेल्टा लोल वहां पे अंदर पुश कर रहे हैं, सलमान पटेल 6 किल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कहूंगा धीरे धीरे करके अंदर जाते हुए फटाफट पैरों पे खड़ा किया ब्लाइंड ने, बट इस 4v3 एनीथिंग कैन हैपन लूसीफर। Exactly, anything can happen, but I would say the side of team blind are at a disadvantage क्योंकि हार्ड कवर है यहाँ पे, अगर ग्रेनेड टॉस किए जाते हैं और मॉलिस टॉस किए जाते हैं, they would have to rush out, you would not want to rush out when a grenade is being tossed and molly is being tossed, क्योंकि जैसे ही rush out करते हो, जैसे ही you're jumping out of the house, that gives them the complete information, and now if the side of team blind want to make their way out, they would have to make their way out into an open ground which is lower compared to the side of Indian rivals. Indian rivals already scope करके ready है as the side of team blind come, but team blind जैसे हम बोल रहे हैं, लक उनके साथ बहुत ही ज्यादा है इस मैप ऑफ मीरामार में, अभी भी उनको घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि प्ले जोन अभी भी वहीं पे फेवर कर रहा है, बट ब्लाइंड अगेन वन मोर प्लेयर नॉक डाउन, खिलवा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रश दैट, दिस इज द एडवांटेज ऑन द ओपनिंग द साइड ऑफ टीम इंडियन राइवल्स वर लुकिंग फॉर, एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ पुश, बट वो भी वरीड है कि ब्लाइंड किसी ने लर्क करने के लिए भेजा है, किसी असल्टर को ओवर द एज मैनेजिंग टू गेट अ कपल ऑफ मे बी अ किल और मे बी अ कंफर्मेशन इटसेल्फ, दे आर ट्राइंग टू डू दैट, बट इंडियन राइवल्स बहुत ही कॉशियसली दे आर मूविंग इन, एंड आई थिंक अभी इंडियन राइवल्स के कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुका है बिकॉज फेज 9 यहाँ पे कोई प्ले जोन नहीं है, हर तरफ से प्ले जोन अभी क्लोज होना शुरू हो जाएगा, स्मोक्स एवरीवेयर बीइंग टॉस्ड, ये पूरा अभी विजन को डिनाई कर रहे हैं ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स, ब्लाइंड आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिनाई एंड टेक दिस एज एन एडवांटेज क्योंकि इंडियन राइवल्स अभी एडवांस कर रहे हैं वेरी फास्ट। बिल्कुल यहाँ पे ब्लाइंड पे खेल खेलती हुई, और यहाँ पे फाइनली 2 प्लेयरों के ऊपर नॉकआउट मिलता हुआ सलमान पटेल, और इसी के साथ जो है विनर चिकन डिनर आता हुआ, 16 किल अपने नाम पे कर लिए इंडियन राइवल ने, और मेरे ख्याल से इसी के साथ उन्होंने अपने लिए पोजीशन 1 जो है सुनिश्चित कर लिया, और कोई चांस नहीं है अब उनको मेरे ख्याल से अभी अगर हम टोटल स्कोर टैली करें तो देयर विल बी लाइक 2 टीम्स जो फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ रही होंगी, दैट विल बी प्राउड ठग ई स्पोर्ट्स एंड सेकंड विल बी इंडियन राइवल। 16 किल के साथ फर्स्ट पोजीशन के साथ खत्म करना, 26 पॉइंट, और वहां पर भी उन्होंने जो है चिकन डिनर लिया था, like I guess it was last time Miramar, it was Proud Thug Esports, and Indian Rival finished off with the second position, but it was only a matter of one point. Second map में भी first आए थे, so this is Yeah. again Indian Rivals So coming yeah, first in the 16 second matchup. तो 16 पॉइंट्स वहां पर उनके पास थे इन टोटल, और अभी यहाँ पर उनके पास 26 पॉइंट्स हो गए, लाइक वाओ, व्हाट डू यू हैव टू से, लाइक बट ब्लाइंड ने कितनी बारी रिवाइव किया, लाइक इट वाज लाइक 3 टाइम्स बैक टू बैक रिवाइवल कमिंग आउट फ्रॉम ब्लाइंड, इतना टाइम दिया इंडियन रिवाइवल। Blind played really well, बहुत बेहतर तरीके से खेले, पर I've talked about this multiple times, you can take hard control for yourself for some time but you should not stay there for a longer time, क्योंकि अगर blind को देखिए आप, at least for the last phases, that is from phase 6 to phase 9, they were in the house, luck था उनके पास, तो उनके पास वो घर भी था, they were staying there, but उसी को एडवांटेज लेते हुए they just stayed there, मैंने एक बार भी बोला कि they went to a sleep mode, they did not take any fights, I think that was the disadvantage that happened कि इंडियन राइवल्स ने टूट पड़े देयर ओपोनेंट के ऊपर एंड दे गॉट दैट एडवांटेज, एक टीम को वाइप आउट कर दिया और उनके पास ब्लाइंड अभी फ्री में मिल गया और ब्लाइंड को भी निकाल दिया। इट वाज सो क्रूशियल दिस मैचअप फॉर द साइड ऑफ इंडियन राइवल्स, क्योंकि इंडियन राइवल्स बाकी 2 मैप ऑफ इरांगल में थोड़ा डैमेज तो किया, प्लेसमेंट भी लेके आए, पर दे वर नॉट ऑन द टॉप, बट राइट नाउ इंडियन राइवल्स दे हैव मैनेज्ड टू मेक देयर पोजीशन अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर, अभी हेडिंग बैक टू द लास्ट मैप ऑफ द डे, एरांगल किंग चार्ली। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि अभी जैसे दिशा बदल रहे हर मैप में, एरांगल में वापस कुछ भी हो सकता है।
जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है और इस गेम का और आगे ज़्यादा ब्रेक थ्रू करेंगे, जो मेरा मार्क अभी आपके सामने हुई है, गेम नंबर 4, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इस ब्रेक में हम दिखाएंगे आपको क्या-क्या घटित हुआ था हाइलाइट्स में, तो बने रहिए हमारे साथ। Got him. Let's go.
hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me. You can make me. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me. You can make me. Can make me. Can make me. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It's now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, Music is my band-aid. Here the other day I turned off all the lights
my days are brighter, just no longer feeling tighter. Don't wear my PJs every day, 'cause I would rather be. Got him. Let's go. देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से Asus ROG शोडाउन सीरीज में एक आखिरी बारी इस डेस्क पे आते हुए एंड पावर्ड बाय इंटेल की i9 10th जनरेशन की जो एक्शन पैक पावर हाउस। और मैं किंग चार्ली आपके साथ दोबारा जुड़ चुका और मेरे साथ यहाँ पे बन चुके हैं लूसीफर। क्या हो रहा है, 4 गेम खत्म हो चुकी है, 5वां मैप हमारे सामने है। लेट्स ब्रेक आउट द गेम, व्हाट हैल हैपेंड ड्यूरिंग द एंटायर डे और क्या देखने को मिल सकता है हमें 5th गेम के अंदर। अभी 5th गेम को आई डोंट इवन हैव, इफ यू आस्क मी कि टॉप स्क्वाड्स कौन से बताओगे, मैं बोल दूंगा पता ही नहीं। मैं मेरे स्क्वाड्स के नाम ही पता नहीं। इतना शानदार हर स्क्वाड खेले है, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट समबडी, बिकॉज जैसे हमने सेमीफिनाले में हमने ऑलरेडी एक आई वुड से उनका पहचान बना लिया था कि ऐसे ही खेलेंगे ये टीम्स, पर यहाँ पे जाके ग्रैंड फाइनल्स में पूरा अलग ही परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक लास्ट मैप जैसे ही जाते हैं मेरेंगल में और कुछ भी हो सकता है, पर अभी मैप वाइज मीरा मार का एक स्कोर कार्ड देख के ब्रेक डाउन कर लेते कि यहाँ पे क्या हुआ। बट इंडियन राइवल जो खेले इस मैप में, फर्स्ट टाइम मीरामार में खेले, वहां पे भी उन्होंने विन कर लिया उस मैप को, विनर चिकन डिनर ले लिया। सेकेंड टाइम खेल रहे हैं और इस बार भारी भरकम परफॉर्मेंस विद 26 टोटल पॉइंट्स किंग चार्ली। जी बिल्कुल, देखिए 26 पॉइंट आ चुके हैं आपके हाथ में और 26 पॉइंट आने के साथ ही साथ ये जो चीज है अब बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देगी, क्योंकि 2 चिकन डिनर लेने वाला। देखिए अब मैं देखो बाकी टीमों को निराशाजनक स्थिति में नहीं डालना चाहूंगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी नो कि हमारे सामने इंडियन राइवल्स जो है, इंडिपेंडेंस डे पे 75वां हमारा जो है देश, 75 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, वहां पे इंडियन राइवल्स जो है बिल्कुल अपना काम बखूबी निभाते हैं। बट प्राउड था कि स्पोर्ट्स की यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। 10वीं पोजीशन पे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, 14वीं रैंक लेकर आए। इनके पास काफी अच्छा चांस था गेम के अंदर कैपिटलाइज करने का, बट अब इनको इस गेम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा। एटलीस्ट नीड टू बी इन द टॉप 2 इन ऑर्डर टू भी टॉप 2, अगर वो टॉप के उस पे स्कोर चार्ट में आने चाहते हैं। बट ब्रेकिंग डाउन गबरू गेमिंग की बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। दे हैव ऑलवेज बीन इन द टॉप 5 3-4 गेमों में बैक टू बैक, तो काफी अच्छे पॉइंट्स लेकर भी आए हैं। यहाँ पे सेकंड पोजीशन के साथ उन्होंने फिनिश किया है।
रैंक भली उनकी 4 आई हो, बट किल्स जो हैं जोड़ते जोड़ते द 4 गाइज यहाँ पर 5वीं पोजीशन पे आए हैं। 5th रैंक उनकी आई है, बट किल्स उनके साथ जोड़ते जोड़ते 9 पॉइंट। तो सेकंड पोजीशन के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा कश्मकश रहेगी। बंटी बॉयज ऑल्सो डू हैव अ चांस, दे डिड मैनेज टू गेट सिक्योर दैट चिकन डिनर। तो चिकन डिनर अगर हम विभाजन करें चिकन डिनर का, तो हर गे टीम के पास गया। मर्सिनरीज भी जैसे 3rd पोजीशन लेकर आए थे लास्ट टाइम मिरामार के अंदर, इस बारी 8th पोजीशन लेकर आए हैं। आई उनकी भली चाहे रैंक 10वीं है, बट यस वो किल्स के साथ जो है वो 3 पॉइंट्स उन्होंने अपने लिए मैं कहूंगा लाइक कमिंग टू यू लूसीफर, लाइक इंडियन राइवल्स को छोड़ के लाइक गॉड स्क्वाड की उम्मीदें थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए आज। the four boy the four people, the The charm 4 guys. that we had yesterday. Yeah, the 4 guys, like I think the 4 really आज कुछ कर नहीं पाए, like apart from that map where you got 11 kills, in terms of position they lacked all that thing, like क्योंकि अगर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3-4 के पास ही है पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें स्ट्रक्चर के पास, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आप लेकर आते तो उससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लाइक यू वोंट मेक अ माउंटेन पाइल आउट ऑफ इट, राइट? Exactly. I mean, as you said, I'm really, really worried heading over to this last map of the grand finals. Heading over to where we started things off to end it off all is on the map of Erangel that we are heading right now. Flight path कैसे भी हो सकता है, पर अभी, as you said, it all matters now कि teams कौन अभी लेके जाएगा as much as killing points, placement points, सब यहाँ पे पता नहीं अभी टोटल कितना है, हमने कैलकुलेट भी नहीं किया. We have not seen the overall scorecard after the 4 maps. We will only see it after this matchup, and it will all be revealed who the grand champions of this Asus ROG presents ROG Showdown series powered by Intel for PUBG PC का कमाल. And now flight path is towards southern again. आपको क्या लगता है किंग चार्ली, अभी वापस शिफ्ट हो जाएगा कहीं और? आई थिंक इट कैन बिकॉज अब देखिए नॉर्थ पास साइड का जो पूरा मैप है वो पूरा फीका पड़ जाएगा, बिकॉज इवन इफ यू आर गोइंग टू जॉर्जियो पूल, ठीक है, तो वहां से भी रोटेट करना अगर ये सर्कल अगर मिलिट्री की तरफ चले गया, बिकॉज यू ऑलवेज से लाइक जिधर की ट्रेजेक्ट्री है उस साइड का थोड़ा सर्कल बन जाता है, एंड लाइक ऑल दीज टीम्स हैव टू टेक दैट लॉन्ग रन चेज। और जो जितनी अगर हम व्हीकल्स और यूटिलिटी की बात कर रहे हैं यसनाया पोलियाना तक की, जो अगर यसनाया भी पहुंचना है तो यू नीड टू हैव दैट कार। सी ऑल दीज टीम्स जो कि अगर हम बात करें पिंक साइड पे, और वहां पे साथ ही साथ हम गोस्ट को देख रहे हैं अंदर जाते हुए, वो ऑल दे आर लुकिंग अराउंड टेकिंग दैट 360 स्विच और गाड़ी के पीछे, और यहाँ पे मेरे ख्याल से इंस्टेंट किल हो सकती है। बंटी बॉयज के लिए थोड़ी सी दिक्कत पक्का हो सकती है, लाइक दे आर ट्राइंग टू लिपोवका की साइड पे हैं थोड़ा सा, और खतरा हो सकता है। मिलिट्री की साइड पे भी यहाँ पे 2 टीमें उतरती हुई, तो ये अब जो है ना, यहाँ से कार लेके जो जो जाना चाहेगा, जिसको गाड़ी नहीं मिली वो दूसरे को इजीली क्रश डाउन कर सकता है। और देखिए फिर से सर्कल एक साइड पकड़ लेते हैं। This circle is again towards Yasnaya and Milta side. Yes, all these teams in military, they have to make that long chase again. Oh, 4 guys, a lot of trouble. Vector के साथ अंदर जाना चाहते थे, और वहां पर ARG किलर रू को जो है बाहर का रास्ता दिखाते हैं। आर्गस ऑलरेडी दे हैड अ वेरी गुड मार्क, बट यहाँ पे किलर रू ऑलरेडी बाहर की एग्जिट डोर लेते हुए, और 4 guys के यहाँ पे वुल्फी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। लूसीफर, what's happening? All the action in quick succession. I mean, 4 guys were not ready for this. पुचिंग की जो हम जानते हैं बहुत ही बैटल होता है यहाँ पे, 2 टीम उतर जाती है. I mean, ये लास्ट मैप में हम देख रहे हैं पुचिंग के में पहली 3 बार भी या सेमीफाइनल्स में भी इतना सारा घमासान नहीं देखा था, पर अभी 4 गाइज को एक प्लेयर डाउन किया जाता है, बट इमीडिएटली पैंडा गेमिंग रियलाइज कौन सी टीम था वो, एंड दे बैक ऑफ. दे नो व्हाट द पोटेंशियल ऑफ द 4 गाइज इज, एंड दे इमीडिएटली बैक ऑफ, बिकॉज उन्होंने पिछले बार खेला है इनके साथ. And that is a good call, but I would have seen if they would have rushed the side of the 4 guys, they could have completed that 4 kill for themselves, because 4 guys के पास इतना ज़्यादा utilities नहीं थे, क्योंकि Panda Game already side पे थे, they had got ammo as well, तो एक rush में देखना चाहता था अंदर से, पर कोई नहीं. Maybe hopefully next time when again Panda Gaming face off the 4 guys कुछ हो सकता है, but अभी स्कूल के पास 2 टीम्स है, क्रेजी 4 एंड अल्फा ओमेगा. क्रेजी 4 उनको सर्कल और बॉक्स करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अल्फा ओमेगा सिर्फ 2 ही बिल्डिंग में कैप्चर्ड है. क्रेजी 4 they have taken control of 3 buildings and they have 3 angles that they can fight off with अल्फा ओमेगा. आपको क्या लगता है किंग चार्ली, अभी अल्फा ओमेगा जाएगा या क्रेजी 4 अभी फाइट लेगा? I think Crazy 4 will go for the fight because these people are really crazy. इनका अच्छा स्कोर कार्ड भी चल रहा है, and they might try to, हमने कल अभी जब लास्ट गेम में बात कर रहे थे, अर्ली गेम फाइट
का आपको एक फायदा है कि लाइक यू माइट नॉट हैव एनी क्रेजी रोटेशन। देखिए यहाँ पे जैसे पीक किया खिड़की के ऊपर, ओ मगर वैन यहाँ पे बिल्कुल रुकना नहीं चाहते, एंड यहाँ पे रिश गॉड को भी देख रहे हैं। वैन की टीम को 2 बैक टू बैक जो है किल्स मिलती हुई है, हम किल फीड में देख रहे हैं, और ARG के यहाँ पे प्लेयर को बाहर निकालते हैं, बट अगेन यहाँ पे घात लगा के बैठे हुए हैं थोड़ा सा। और देन M762 Crazy 4 is always like, you know, they play that crazy ass gameplay. They want to go in, they want to annihilate, they want to dictate the pace of the fight. ये नहीं चाहते कि सामने वाला आके उसकी टर्म से वो फाइट ले, because they don't want their opponent to be prepped up, prepared for, और वो आके उनके ऊपर जो है हमला करे। तो या लूसीफर एग्जैक्टली, आई मीन बट अल्फा ओमेगा जो क्रेजी 4 ने किया है, 3 बिल्डिंग का कब्जा जो उन्होंने किया, अल्फा ओमेगा ट्राइंग टू टर्न दिस, अल्फा ओमेगा उनके बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं स्लोली, वन बाय वन दे आर पुशिंग ऑन टू द साइड ऑफ क्रेजी 4। क्रेजी 4 के पास अभी भी हायर एंगल एडवांटेज है, क्रेजी 4 अभी ग्रेनेड्स थ्रो नहीं किया है, बट अल्फा ओमेगा आर स्लोली क्रीपिंग इन। मुझे नहीं लगता है अभी क्रेजी 4 को ये सारा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सारे 4 प्लेयर्स फ्रॉम द साइड ऑफ अल्फा ओमेगा आर प्लेइंग टुगेदर। गैस कैन उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है किंग चार्ली गैस कैन के साथ कुछ खेल कर रहे हैं क्या? क्योंकि गैस कैन का जो भी लिक्विड था उन्होंने पूरा स्टेयर्स तक उन्होंने डाल के रखा। आई थिंक एज सून एज द साइड ऑफ क्रेजी 4 ट्राई टू मेक सम क्रेजी प्ले, उसको जला दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? दैट कैन बी डन, इजीली डन। तो ये थोड़ी सी समझदारी मैं कहूँगा पहले से ही बेट, आइदर यू मेक द बेट और यू गेट बेटेड है, तो ये चीज़ है। मगर यहाँ पर किल फीड के अंदर बंटी बॉयज हेडीज फिर से पिकआउट कर रहे, धीरे धीरे करके एक एक टीम के प्लेयर खो रहे। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 5 प्लेयर्स आउट ऑफ द लाइक 64 ड्रॉप डाउन, वी लॉस्ट ऑलरेडी 4। सो ये जो है ARG के लिए, आर्गस के लिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्लेयर खो चुके हैं अभी तक गेम में, और बाकी 2 उनके इंटैक्ट बचे हुए। बट टीम रेकम, they know they don't have a chance to be in the top 2, but they can disappoint a lot of teams. So I think these teams are going havoc. हम इस गेम के अंदर सबसे ज्यादा एक्शन देखने वाले हैं। एग्जैक्टली, अभी अगर जीत नहीं सकते हो, दूसरा बेस्ट चीज क्या कर सकते हो? डिनाई द विनिंग टीम। आई थिंक दैट्स व्हाट ऑल द टीम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग फॉर। अल्फा ओमेगा टेक ऑन 1 प्लेयर फ्रॉम द साइड ऑफ C4, गॉड स्क्वाड आर ट्राइंग टू स्प्रे डाउन द साइड ऑफ टीम रकम। इट शुड बी पॉसिबल, क्योंकि एक प्लेयर तो ऑलरेडी गया, और क्विक चेंज ऑफ सीट एंड व्हाट अ प्ले कमिंग इन फ्रॉम रकम। रुशल अनफॉरगिवन को सीधा नॉक कर दिए जाते हैं, एंड नाउ रुशल विल बी एबल टू रिकवर हिज टीममेट, गेट हिम बैक टू हिज फीट। बट गॉड स्क्वाड भी रुकने नहीं वाला है, गॉड स्क्वाड भी पुश कर रहा है, गॉड स्क्वाड रॉ को निकाल देता है और कंफर्म भी कर लेता है। अनफॉरगिवन अब भी अपने नीज पे है, तो दिस bringing back to the life हो सकता है, but Rakam has spotted another team, very unfortunate, और Kaizoku Esports higher angle advantage से Rakam को निकाल देते हैं, and I think Rakam within a couple of seconds will be the team going out at the 16th position. Rakam lose कर रहे players को, AO अपने बंदे को खुद kill कर देते हैं, and जैसे हमने पिछले बार बोला था कि own kill करते हैं और save कर लेते हैं, I think that's what they went for. Rakam Rushal before going out, he's again looking forward to a knockdown, but also gets a kill as he knocks one player out. But Rushal, oh no, उसको Kaizoku Esports from a long range गेम से ही निकाल देता है। 16th position for the side of Rakam. I think this is the second time the side of team Rakam have gone out so early. Very, very unfortunate for Charlie. They wanted to just end this game because they know there was no future that lied ahead for them. But I think कल जिस तरीके से उन्होंने खेला था, आज बिल्कुल उसके बिल्कुल ही विपरीत खेला है। They could have done something, but yes, they could have disappointed some teams. They wanted to be a macho man, but they were not able to capitalize. But जो हो गया तो हो गया, what's done is done now. There's no point talking about it. But yeah, Team Rakan, you did well yesterday in the semis and you made it to the finals, and that's a very good thing. And all the best for the future. But अभी हमारे पास जो 15 टीमें इंटैक्ट बची है, काइजू ईस्पोर्ट्स, व्हाट अ शॉट बीइंग दैट वाज कनेक्टेड, बट यहाँ पे रेकम ने जो अपनी टीम की 2 किलें दी, एंड ऑल दिस मोलोटोव बर्निंग, दैट ओवर टाइम डैमेज हर्ट्स यू अ लॉट। मान साहब अंदर यहाँ पे पुश करना चाहते हैं, ही नोस देयर इज एनिमी देयर, और यहाँ पे थॉट्स थोड़े से कनेक्ट करे, लूर कर रहे थे। मान साहब फाइनली गेटिंग दैट नॉकआउट ऑनटू अल्फा ओमेगा, MB14 still a lot of trouble, he won't go for that finish, and finally he's charging in the stairs, और देखते ही देखते अल्फा ओमेगा will be the second squad that's been eliminated. Wow, what a gameplay, calculated, precise gameplay. Mansa, बाकी सारी टीम पहुंच चुकी थी स्टेयर्स पे, and pushing them in the corner into the apartments and getting that entire squad wipe out. Wow, like everybody wants to raise havoc. जितनी सारी टीमें जो जिनको पता है फर्स्ट और सेकंड कोई प्राइज मिलना है, if the prize pool would have been for like the top 8 teams, then things would have been played a little slow, because अब पता है कि फर्स्ट सेकंड में तो आ नहीं रहे, तो
खुद हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें साथ ले मरेंगे. So that's the thing that's going on in the game. I agree with you completely. Man, that was very unfortunate. अल्फा ओमेगा ना पूरा सेटअप करके रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क आउट. बट वो साउंड सुन के द साइड ऑफ क्रेजी फोर और द फोर गाइज हैव मैनेज्ड टू मेक देयर वे इन एंड दे आर ट्राइंग टू फाइट इट आउट विद क्रेजी फोर. क्रेजी फोर अनफॉर्चुनेटली नाउ दे आर गोइंग डाउन. वन प्लेयर हैज ऑलरेडी बीन नॉक्ड डाउन हिज न्यूज. अदर प्लेयर्स हैव हर्ड दैट द साइड ऑफ फोर गाइज हैज कम. सो इट्स अ बैटल बिटवीन 4v4. आई मीन दोनों टीम के नाम पे 4 है. विल इट बी क्रेजी फोर कमिंग ऑन टॉप? 4 गाइज आयरन साइड पे खारकू बहुत ही डैमेज करते हुए. आई थिंक ही शुड बी एबल टू गेट दिस नॉक फ्रॉम मानसा. Mansabe was the one who clutched and saved the side of Crazy Four. उसको ही निकाल देते और confirm भी कर देते. And 4 guys, they are entering the apartments. They are tearing apart the side of Crazy Four. But Crazy Four भी answer करने के बिना नहीं रहेंगे. They have taken down Ulfi guy. That's the only king. Pubg, the only player alive from the side of Crazy Four. Grenades फेंका जा रहा है, इतना सारा utility फेंका जा रहा है. But I think Pubg एक बहुत ही सुंदर position पे है stairs के पास that nobody can push him out from. But right now, if he goes to a different angle, he might go out very, very soon. He is trying to scope out the window. 4 guys are making a lot of sounds and they're making their way in. Already spotted out. I think Pubg is going down very, very soon. The grenade gets cooked out. Oh no, it does not get tossed and they're pushing him. He goes prone. Very unfortunate. कुछ नहीं कर पा सकता था Pubg वहाँ पे, and that is going to be Crazy Four getting eliminated very early. But मैं एक चीज बोलना चाहता था बहुत ही पहले किंग चार्ली की, फेज 1 में 3 टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं. फेज 1 में ये अभी तक हमने नहीं देखा था. फेज 1 में इतना सारा भौचार, इतना सारा गन फायर फीड में, इतना सारा किल अपडेट्स आना, आई नेवर थॉट ऑफ. ये देखिए, मैं जैसे भी बोल रहा हूँ स्टार्ट ऑफ द गेम से, इसमें इस अब टूर्नामेंट के अंदर कुछ टीमों को अपनी जो है पोजीशन के ऊपर खेलना है, जो कि जैसे कि मर्सनरीज, द 4 गाइज, अगर हम बात कर रहे हैं इंडियन राइवल, हम बात कर रहे हैं बंटी बॉयज, हम बात कर रहे हैं जो टीम्स जो चिकन डिनर लेकर आई हैं पहले 4 मैच में, उनके पास एक काफ़ी अच्छा चांस है कि वो फर्स्ट सेकंड में आ जाए. उसके अलावा जो टीम 8 से 16 तक है, दे आर हैविंग अ वॉक इन द पार्क. दे नो कि हाँ भाई चलो कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दे. प्राउड तक Esports फॉर एग्जांपल, दे आल्सो हैव अ वेरी गुड चांस. सो एवरीबडी लाइक 3 और 4 टीम्स अभी क्या मैं कहूँगा phase 2 तक तो मेरे ख्याल से we might only be left with like only 6 or 7 teams, because everybody is like here to enjoy. The last game is always full of excitement because everybody try to do some crazy stuff, and this crazy stuff is happening right in front of us, and especially when the map is irregular. Exactly. I mean, it's the classic map of PUBG, right? So बहुत ही सारे fights दिखाई दे रहे हैं, and especially as you said, last map है, अभी टूर्नामेंट खत्म होने को है. This is the last map. All that you have to show अभी दिखा दो. Whether you come up on top or whether you lose, एक शानदार बढ़िया शो दिखा दो कि आप, हमारा ऑडियंस भी will be like wow all of a sudden that this team had a potential. So we will also be sure that एक नाम बना रहेगा ना हमारे दिमाग में कि केपी ने इतना ज्यादा शानदार खेला कि लास्ट मैच में they managed to clutch out and maybe even came close to top 3. So these kind of performances is what I'm expecting. But one thing that I've not seen yet is Indian rivals. आपको क्या लगता है किंग चार्ली की इंडियन राइवल्स कहाँ चुप के बैठे हैं? अभी तक तो उनका कहीं भी नामो निशान नहीं है. They are just hiding. They will play that hide and seek game. मगर यहाँ पे पांडा गेमिंग फिर से कॉट आउट होते हुए, द गॉड स्क्वाड, अनफॉरगिवन, चौबे जी यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत में दिखते हुए. एंड इंडियन राइवल्स विल शो देयर फेस सून, सो विल ब्लाइंड Esports. They both are hiding. They both want to play. They or God Squad यहाँ पे मिनी फूटिंग के साथ. Look at that amount of damage this guy is carrying. 244. Like that's so many clips. He can fire that mini 14 for coming next 2 phases, and it won't even end then. Like he can just keep firing mini 14. ये mini 14 has been doing so much damage throughout the tournament. I mean, we would have thought maybe an AK, maybe SKS or SLR might be the guns that a lot of teams prefer. Nay, a couple of teams are just making it work with the mini. And look at this, Geek God, he's trying to hit and he does connect a couple of shots, but in the meantime his own teammate will also confirm a kill. This is looking so great, and now God Squad, they know they are a little bit out of the play zone, so they're making it way there, and they know they've spotted out Panda Gaming and they want to take out Panda Gaming right there at the edge. Oh no, okay. God Squad are inside the play zone and they're trying to push out the side of Panda Gaming. ये अच्छी strategy है, मैं पहले बार देख रहा हूँ. And look at the change up of sweep. They're looking forward to take this kill, but will it be Panda Gaming? And yes, it is. It's Panda God Gaming. Squad, very unfortunate fight. They completely get eliminated.
सोचा नहीं था Panda Gaming lose a couple of players. God Squad said let's take this fight head on. And वो जो battle इतना शानदार दिख रहा था God Squad के बाजू में, they changed the left the driver seat and he got those shots but could not completely convert. I guess bullets खत्म हो गया, reload में आ गए, and that's where God Squad You got are understanding eliminated. one thing, Lucifer. No, I tell you one thing that is going to happen when the scorecard pops up for the last game. ये लोग अपने मजे मजे में खेल रहे, like they are having the fun and they are giving all the excitement to the crowd and all the people who are watching right now. But इसके जो बिल्कुल विपरीत चीज होगी when those final 4 teams जिनके बीच में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में होएगा, they won't be left with players to kill because kill points इतने बचेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर लास्ट में अगर हम बात कर रहे हैं जो 4 टीमें, अगर वो 12 प्लेयर भी बचते हैं टोटल 4 टीमों के, तो देन इट वोंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज उसके अंदर से ये हो जाएगा जो टीम चिकन डिनर लेकर आ रही है उसके लिए। और यहीं पे देखे कहते फाइट हो रही है, 4 गाइस फिर से अंदर जा रहे हैं वैन के ऊपर, एंड वैन गेमिंग इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड क्रेजी फैमिली जस्ट वांट्स टू गो इन, वांट्स टू हैम एंड ही इज गोइंग इन, विल ही मेक दैट किल? एक एक करके अंदर जाते हुए M4 सीकिंग का प्रकोप है और यहां पे नॉकआउट करते हुए, एंड दे हैव एलिमिनेटेड। This is sick gameplay. That is what I am talking about. Crazy as Sunday. Independence Day is on fire, man. Lucifer. We are seeing death everywhere. Like everybody is having a fun moment. कोई टीम पीछे होल्ड ऑफ नहीं कर रही. हर किसी को पता है कि 75,000 रुपए है, 50,000 रुपए लेंगे फर्स्ट टीम को और बाकी जो 25,000 है सेकंड टीम को. बट वी आर हियर टू एंजॉय एंड वी आर यूजिंग दैट Asus ROG जो रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लैपटॉप है, पावर्ड बाय इंटेल i9 प्रोसेसर 10th जनरेशन. दे आर मेकिंग क्रेजी एज यूज ऑफ इट. हम गाड़ियों को क्लैश करते हुए देख रहे हैं, हम लोगों को एक दूसरे से भिड़ते हुए देख रहे हैं, ग्रेनेड देख रहे हैं, मोलोटॉव देख रहे हैं, अपार्टमेंट में पुश होते हुए देख रहे हैं. आई लाइक कि कल के सेमीफाइनल के दौर से लेके अभी तक, और अभी बात कर रहे थे, एंड देयर गोज वन मोर टीम. बंटी बॉयज इज आउट. सो अर्ली किंग चार्ली. प्राउड तक esports भी बहुत ही अच्छे कंटेंडर है कि टॉप 2 में आ सकते हैं. दे कैन गेट अ टाइटल आइदर ऑफ अ चैंपियन और अ रनर अप. इट इज हाईली पॉसिबल. बट जैसे आपने बोला ना दैट डिनाइंग किल पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे इवन दो यू आर एट द लास्ट जोन, लास्ट फेज में है. ओनली लास्ट 4 टीम्स लेफ्ट. दे आर प्लेइंग रियली वेल. इंडियन राइवल्स दे मेक देयर वे बैक, बट विद देयर वे बैक दे हैव लॉस्ट ऑलरेडी. डेल्टा लॉल, very unfortunate. One player is down, but they do have still 3 more players to play it out. All they have to wish is they make sure they survive a little bit longer, get a couple of placement as well as kill points. But it looks like Mercenaries have their aim down right at their side, and Mercenaries have got one more knockdown. Blind, I think they've spotted the side of Team Gabru. Dante Man, in the meantime, he'll try to find another way around and try to convert this fight, and Dante Man is doing all the damage. He'll be able to convert one more on Mercenaries, make it 2, and Dante Man is raining havoc. But Nagin comes in clutch. He takes up Vicky Rex, so that's 2 players out from the side of Mercenaries as well as the side of Indian Rebels. Now what is going to happen? What do you think, King Charlie? अभी बहुत कुछ kill feed में light up हो चुका है. Is it going to be Indian Rivals making their way back or not? 2 players is all they have left. See, 2 players is all. I think ये देखिए नेक टू नेक जाएगा बिल्कुल, और हर मैप के अंदर के जो स्कोर कार्ड है ऐड करके कोई ना कोई तो विजेता हमारे सामने आएगा. बट इट विल बी वेरी नेक टू नेक गेम राइट नाउ बिकॉज 2 players इज नॉट enough to make you last in the very last circle. So it is going to be really crazy. We have seen teams doing that. हमने देखा टीम को इसमें सर्वाइव करते हुए, और स्ट्रेटेजिकली अगर आप चाहें तो एक प्लेयर भी बहुत कुछ कर पाता है. वो हमने सेमीफाइनल में देखा है. बट हुआ ये है कि सेमीफाइनल की जो टॉप 8 टीम थी फर्स्ट फेज की, और सेमीफाइनल 2 की जो टॉप 8 टीम थी, तो उन 16 सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच में मैच हो रहा है. तो यहाँ पे पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि कौन कितना ज्यादा अच्छा कर पाएगा. बट इंडियन राइवल्स ने जो पहले 2 गेम अच्छी फिनिश करी है, 2 चिकन डिनर जो लिए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, और अभी जो उनके अगर प्लेयर बचते हैं लास्ट के जोन तक, तो दे डेफिनेटली बिफोर दे गो डाउन, बिफोर द सनसेट, so I think they might rack up like 3-4 more kills. So those 3-4 points will definitely count in. Let's see
क्या होता है आगे, बट 18 मिनट्स इनटू द गेम इट्स ओनली 28 प्लेयर्स लेफ्ट एंड वी हैव 10 टीम्स लेफ्ट, सो एवरीबॉडी इज फाइटिंग और ये सर्कल बिल्कुल एक तरफ जो है संकरा होते जा रहा है एंड वी आर इनटू द 4v4 एंड एवरीबॉडी हैज टू शिफ्ट इन एंड लुक एट दिस टीम। और देखिए गाड़ी लेके बिल्कुल मुंह के सामने से जा रहे हैं द पोर गाइस और क्रेजी फैमिली के सामने ये एक प्लेयर है इसके आगे बिल्कुल पंगा नहीं लीजिए बिल्कुल भाई। ड्रैगो वहां पर खड़े हुए हैं एंड फैमिली विल फाइनली फिनिश इट ऑफ इन स्टाइल, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। एंड अगर हम बात करें टीम गबरू की, दे हैव 4 प्लेयर्स इंटैक्ट, बट उन 4 प्लेयरों का फायदा क्या? अगेन दैट क्वेश्चन कम्स इनटू माइंड। 25 प्लेयर बचे हैं, उसमें से 4 प्लेयर आपके टोटल मिला के 21 प्लेयर बचे हैं। 21 प्लेयरों में से अभी तक खाली आपने एक किल करी है टीम गबरू। विल दोस 10 पॉइंट मेक अ डिफरेंस फॉर देम इवन इफ दे गेट द चिकन डिनर? I am very worried because Gabru, looking at the scorecard, they have not made to the top most. So top 5 में भी उनको देखना आई थिंक वॉज मुश्किल। मे बी एक मैप में उन्होंने किया हो शायद, बिकॉज टॉप 3 में वो कहीं भी नहीं है उनका नाम। बट बात करते करते गबरू टीम उड़ा देते हैं द साइड ऑफ टीम केपी को। They are eliminated now. The 8th position is for the taking, but Indian rivals, unfortunately, they will be the team that will be taken down. That's Dante, man. He gets hit by the play zone in Indian rivals. जिसके टीम के बारे में हम बात कर रहे थे, मे बी कास्टर्स कर्स हो गया यहाँ पे उनके ऊपर। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो लोग 8th पोजीशन पे चले गए, उनको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा अभी। चार्ली जी बिल्कुल, एक पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट के साथ जो जितनी उन्होंने किल्स करी उसके भी पॉइंट उनके रैक अप होंगे। बट अगेन well, looking at the kill feed, like it's the fastest game, like it's only 20 minutes and that shot was so sick coming out from Killua God. And yes, वहां पर वो बैठे हुए और देखिए वेट का और कनेक्ट करते हैं। Yeah, that shot did connect and it was so good. But again, that revive will be coming soon. 4 guys having that family and they will they're just playing it slow. Proud Thug Esports, they know how important is that position. They want to get that first position. They want to have that chance onto that first or second position. And I think they can definitely do it if they make it into the top 3, top 2. But यहाँ पे PTE Just Fire जो है Kaizu Esports के टोनी को नॉकआउट कर देते हैं. Now this is one thing, like Kaizu को Esports, they're getting knocked out. They did play good in a couple of games, but yes, still हर टीम ने मैं कहूंगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया हर गेम में. सम डिड इट गुड इन कपल ऑफ गेम्स, लाइक इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन राइवल, द फर्स्ट एंड द थर्ड गेम जहां पर उनको द चिकन डिनर उनको मिलता है 2. तो बाकी अगर मैप्स की बात करें जो बीच में 2 मैप्स लेफ्ट ओवर है वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है. तो इट विल बी अ टैली ऑफ ऑल द स्कोर कार्ड. बट यस, राइट नाउ ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स 4 guys, वी हैव लाइक Zia opening, like all these players, like Zia opening को अभी तक 0 kills है, like he's like on 0. It was Kharku who did 4 kills and Pamli did the 3, and that one came out in like through a grenade. But yes, again, blind esports, what do you have to say about them? They are on 0 kills right now. 0 kills. Is damage, dishing out damage is a thing right now? Will that help? I don't. At the end of the day, no. I mean, dishing out damage is never going to work. It's only going to help either your opponent in case they have a better angle. But again, the one thing that I'm worried about from the side of Team Blind is they hold a position for a long time, because of which they don't get a lot of kills. And as they don't get a lot of kills, they also start losing ground, because of which the opponent, whoever they're facing, might have a better angle. Now, right now, Panda Gaming is being survived with only 2 players. Blind get 1 kill. Argus is the team that gets eliminated at the 7th position, तो उनको भी अभी एक ही पॉइंट मिलेगा. तो Argus don't have a good chance. But Proud Thug Esports, they're making a good progress on this last map of Erangel of the grand finals. I think Proud Thug Esports are also going to be a strong contender. Proud Thug Esports, Blind, as well as maybe Gabru might be really strong contenders to take an advantage on the map of Erangel. But if you ask me who might be the strong contenders for the only 2, I mean overall scoreboard, I think it's going to be Proud Thug Esports and Blind. But look at this Panda Gaming, he's trying to do a lot of damage, but in the meantime Panda Gaming will be eliminated from the side of Team Proud Thug Esports. So Proud Thug Esports are raking up a couple of kills. Gabru will be eliminated from the side of Crazy 4. Even though they're just left with 2 people, they are making it work, because we have always talked about this Crazy family. As long as he's alive, he's going to wreak havoc, and wohi kar raha hai aaj.
Yeah, बिल्कुल. I don't know in the final, even if I talk about the highest damage that has been dealt out, it might be crazy family. Who knows? क्योंकि जब हमारे पास अभी इस गेम के बाद जब स्कोर कार्ड आएंगे तो हमें पता लगेगा the most MVP प्लेयर जिसने आज फाइनल में सबसे ज्यादा डैमेज दिया. बट यस, अभी लिंच यहाँ पे खड़े हुए हैं 4v4 ऑन टू साइड ऑफ टू टीम्स, दैट इज ब्लाइंड esports एंड प्राउड थग esports. वहां पे द फोर गाइस की हम बात कर रहे थे, वन प्लेयर जस्ट गॉट नॉक्ड आउट एंड काइजुको esports, it's always infected who is just left in the last and making sure he survives and get that position for his team. But again, पैरों पे दोबारा से खड़ा कर दिया गया और पैरों पे जो 11 नंबर की बस पकड़नी पड़ेगी अब जो है द फोर गाइस को. दे कैन डिश आउट दैट डैमेज, बट will they let blind and proud thug esports fight, because they both are onto the different angles right now. They are not coming right next to each other. मगर यहाँ पे shots जब connect करे जा रहे हैं, the damage is being dished out. The utilities in terms of like Lynch has 4 first aids and 8 bandages and a lot of smokes in his pocket. So yep, is it time to use all those smokes right now, or you wait it out for another phase? I would say this is the right time, because if they manage to get a lot of control, they can push the opponent and take control of it. But infected, जैसे आपने बोला, काइजो को esports से not. I'm not at all sure how he managed to survive with so many fights coming across to him. He survives. He also gets a couple of finishing points and survives for the longest. I think he is one crucial player for the side of Kaizoko Esports who makes their team to get a little bit of a placement points. But Blind now, the side of team Blind Esports, they have pushed out of their hard cover. I think this is a good call. Kaizoko Esports, he's gone into sleep, but the play zone is coming to him, so he needs to make a move from that. As soon as he gets up, there's going to be a couple of people waiting for him. But right now, Proudthug Esports and Blind Esports, they are the only 4-player squad that is alive. Blind Esports, Kilo God, he's looking for the opportunity with his Car 98. Oh no, the side of Proudthug Esports, he runs away. Not sure who that player was, but he runs away at the right moment. Otherwise, a little, even the half a second, if he would have stayed there, King Charlie, मुझे लगता है वो kill confirm हो जाता headshot के तरफ से. Yeah, it would have been a confirmed kill if he would have stood there for like a fraction of more second. But still, again, we are going into phase 7 in next 17 seconds. और यहाँ पे shots connect करने start कर दिए Danny ने. And Danny is dishing out a lot of damage, but Tourism will get infected finally, and infected is out. And Kaiziko Esports will take their 4th position in the last final map. But yes, Proud Tuck Esports, they have that one person down. Crazy family just trying to dish out the damage. Look at that amount of kills. What the 4 guys have, 10 kills and a guaranteed position into the top 3. Can they make it into the first position? That can change a lot of tables, I'm telling you, because this team had like 11 kills earlier in one game, and like हमेशा kills करना, and it's a dream to get the final map as a chicken dinner. But again, they are trying to engage in all those fights. They don't know the amount of like people who are just alive right now. So यहाँ पर प्राउड थग esports की बात कर रहे थे, अंदर जा रहे हैं फाइट करने के लिए, and all this fire creating that havoc. Blind is down to 2 people and 2 are on their knees. Lucifer, is it end day for Blind now? Because I think it's right time to push in. Yes, they are. They are pushing in. Both teams, the 4 guys as well as Proudthug Esports, they're pushing in. And Proudthug Esports, they're going to wipe out the side of Team Blind. Very unfortunate. It's up to the last player. He'll not be able to revive anybody. One more confirmation comes. Blind will be the one confirming that kill. But look at the lurk coming in from Budev. He's going to confirm that the side of Team Blind will be eliminated very, very soon. It's up to the last player. I think that's going to be Ace or some. I cannot see the name clearly, but Proudthug Esports are pushing right into the edge. But in the meantime, Blind Nate. Okay, Nate will be confirming a kill on the 4 guys. Now 4 guys are left with 1 player. Same goes for the side of Team Blind. Now Blind Nate, he's making things work for himself. He does have a couple of bandages and smokes also to play around. But he needs to be worried because Proudthug Sports have pushed up really, really close. आपको क्या लगता है, King Charlie? I mean, is Nate going to be doing a 1v3 clutch, or is he going to go down very, very soon? I think he's going to raise havoc. He's at least going to get one person, and the last person who is left is Crazy Family. That guy is crazy. He can do 1v2 easily or 1v3v if he gets a little help. Like if Blind और क्या बोलते हैं, the 4 guys, they दोनों हाथ मिला लें एक दूर से, so it can be like 2v3. The situation can turn, the table can turn, and then later on they can say, okay, let's split first and second position. जिसके पास ज्यादा क्लिप में गोलियां बची होंगी वो दूसरे को मार दे. तो
that can be a little bit of match fixing. Am I making any sense right now? अंदर अंदर से बात करके, but it can be possible, King Charlie. But right now, looking at Crazy Family, as you said, he's always capable to do that clutch. But Proud Thug Esports, they know that ये कभी भी कर सकता है Crazy Family. They are sure about that player and they are lurking behind him. They have made their way, and I think Crazy Family might get caught off guard. But he's also looking into that same angle as he's hearing the footsteps. Now Crazy Family, if he does a clutch here, उसको मिल जाएगा couple of kills. Then Proud Thug Esports will be at a very good disadvantage क्योंकि oh no, Crazy Oh, Family उसका थोड़ा wow. पिक्सल दिख जाता है and they connect a headshot prone में easily. Headshot मिल जाता है. Now it's up to the last player, Nate, in a 1v3 situation, and he's stuck right behind a shack. There are no utilities left, no grenades, no mollies from the side of team. No, they are left. It is there. There Danny के is. पास है. Okay. Danny के पास है. Danny मैंने अभी has a देखा. No, Nate. Oh no. They're running in. he has a आपको क्या nade, he has लगता a है? Molotov. I think with this victory, Proud Thug Esports will be granted a second position. They might even turn it into. Oh my God! It could have been a disaster. He did manage to get one person, but Proud Thug Esports clutching that Man. final game, getting the chicken dinner, 13 kills. So 10 and 13 is like 23 points on the board, and they did good in. I guess it was Miramar, जहाँ पर हमने इनको देखा था काफी अच्छा करते हुए. It was the third game. I don't know who the winner is right now, to be really honest. No. I think it might be somewhere between Indian Rivals and Proud Thug Esports. इन दोनों में से कोई ना कोई टीम जो है टॉप 3 में होनी चाहिए. And it could be even the 4 guys. They have done so much damage. Exactly. I think What do King you? Charlie अभी बहुत 4 guys damage तो किए है, but 4 guys one thing they did not do is get placement points. सिर्फ ये मैप में they get the 3rd placement point, which pushes them to 5 points. But उनका अगर हम kills rake up करें is in general not approximately 10 in 2 maps, I would say. So they have closed up somewhere around 25 points only. But we saw the side of Indian Rivals rake up 26 points in the previous map. So I think the 4 guys are at a disadvantage. I don't think they'll be in the top 3, but मैं एक टीम को लेके आना चाहता हूँ Indian Rivals और Proud Thug Esports के बीच में. That is going to be blind. They have consistently performed in terms of placement point, kill points, that they have managed to wait till the end of the game. Yes, they have not got, I guess, a winner chicken dinner, but वो भी होता है ना कि kill points as well as placement points, if you've raked up enough, you can manage to get to the 1st and 2nd position without a winner chicken dinner. मुझे तो नहीं पता, but ये तो बहुत ही exciting अंत हुआ है लास्ट मैप का. Now all I'm waiting for is the scoreboard. देखेंगे कौन champions crown होता है. ये बिल्कुल कौन चैंपियन क्राउन होता है, और इस गेम को थोड़ा सा और आगे ब्रेकआउट करेंगे और इस मैप के स्कोर कार्ड के साथ लौटेंगे, और वो फाइनल स्कोर कार्ड और कितना एवरेज डैमेज हुआ है सारी चीजों के साथ इस 10 मिनट के अंतरकाल के ब्रेक में. और यहाँ पे हाईलाइट देखना मत भूलना, क्योंकि लास्ट मैप से ज्यादा क्रेजीनेस कहीं भी नहीं थी लौटते इस ब्रेक के बाद. जल्दी. Got him. Let's go.
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Got him. Let's go.
देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से एक अंतिम बारी डेस्क पे Asus ROG Showdown सीरीज पावर्ड बाय Intel i9 10th जनरेशन प्रोसेसर्स। मैं किंग चार्ली आपके साथ जुड़ चुका हूँ। इंडिपेंडेंस डे हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे साथ साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से लूसीफर। लूसीफर, आज की पांचों गेमें घटित हो चुकी है। अभी कुछ ही क्षण में हमारे पास पूरा का पूरा जो है रिजल्ट सामने आ चुका होगा और उस समय पता लग जाएगा कौन है आज का विजेता। सो एनी गेसेस और एनी थॉट्स से पहले हमारी स्क्रीन पे सब कुछ पॉपअप होना शुरू हो जाए। मैंने पहले ही बोल दिया, 3 टीम्स के ऊपर मेरा कार्ड्स होने वाला है, इंडियन राइवल्स, प्राउड थग esports और ब्लाइंड। देखते हैं कहा जाता है, बट आई एम रियली एक्साइटेड कि जैसे हमने सेमीफाइनल्स में सोचा था, हम दोनों ने अंदाज़ा लगाया था, नोवेयर क्लोज, पूरा उछाल दिया गया। उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग अपना प्रिडिक्शन कर लो, जैसे सर्कल बदलता है ना हर वक्त, जैसे वैसे ही टीम्स पूरा अपना चेहरा ही बदल दिया। आई वुड से दे शोड अप अ न्यू फेस टुडे। बट लेट्स टेक अ लुक at the map wise scorecard coming in for the map of Erangel. This is going to be the last time, and for the finale as well, this was the last map. So Proud Thug Esports with a huge bump of 23 points totally will be the first place team on the map of Erangel. But still, this is the map wise scorecard. होल्ड योर सीट्स, अभी हमें विनर डिक्लेयर होने में अभी थोड़ा थोड़ा क्षण बाकी है। किंग चार्ली, आपको ये स्कोर कार्ड देखिए बाकी सारी टीम्स का क्या लगता है? वेल, 4 गाइस मेड इट टू द सेकंड पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे आने के साथ ही साथ जो है 15 पॉइंट से यहाँ पर लेकर आए अपने लिए। देन वी हैव ब्लाइंड esports who came second but are on to the third position just because of the rank kills and everything. So yep, 9 points for them and so on so forth. Gabru Gaming, team Gabru, they did a lot. Okay, they tried to have that consistency in the game, मगर इतना कुछ करते हुए अभी दिख नहीं रहे। एंड देन वी हैव काइजुको esports, कल सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला, फाइनल्स में डिड आल्सो हैड some good chances but they were not able to capitalize their chance and could convert it into a winner chicken dinner. But yes, finishing on to the fourth rank, and they have like 7 points in their pocket. Indian rivals, a very promising team in future, I must say, did perform very well, though chicken dinner लेकर आए हैं. But yes, in this last map, it was very unfortunate they got caught out in the midst of all these two teams, and there was this clusterphobic fight, and then they just got evaporated in an instant. Yep, coming out onto the, they still managed to get those 5 kills, but then nonetheless, and all those team after that, Crazy Four, Panda Gaming, One Gaming, God Squad, even Mercenaries, their strategy couldn't work out. God Squad, कल मेरे को उनसे थोड़ी सी उम्मीद थी. Team Rakam, they just were having a fun in a park because they got like it got taken out on that 16th position like 2 to 3 times. And after that, KP, Team Catalan, Prunjo, though they were okay, but then Alpha Omega, Bunty Boys, and Argus. Yes, very much surprised to see Argus at 16th position, but yes, this is what it is. Exactly. Map wise, this is the scorecard. I had a little bit high hopes how Bunty boys were performing, क्योंकि एक मैप में उन्होंने विनर चिकन डिनर भी हासिल कर लिया था on the map of Erangel, the third map. तो I had high hopes for them. Maybe they could have turned something around, but इस last map में वो भी हार जाते हैं. But right now we have had an idea about where we saw the map 3, I mean map 5 scorecard. Now it's going to be top Yeah. 3 players MVP का, जो पिछले बार last semi-final 2 में in 1 it was a couple of players spread around, but semi-final 2 में it was the whole team of the 4 guys. पर अभी 4 guys का अच्छा प्रदर्शन नहीं था इस grand They finals might have one, but yeah, no, crazy family, exactly. मैं आने वाला they था might उस have crazy family. क्रेजी फैमिली, हैव यू मेड योर इम्पैक्ट? क्योंकि डैमेज तो बहुत दे रहा था. Well, let's get on to it and let's see हमारे यहाँ पे Intel i9 पावर पैक हाउस में 10 जनरेशन में कौन है वो क्रेजी डैमेज डीलर्स. Okay, so yep, it's 4 guys. Oh my god, it's Kharku with a 14 kills and a damage of 1670.99. Okay, so I wish next time जब ये हमारा ROG शोडाउन सीरीज होए तो इन प्लेयर्स को भी नवाजा जाए. इसमें से जो फर्स्ट प्लेयर हो उसको नवाजा जाए किसी पुरस्कार के साथ तो काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज बीइंग दैट एक्शन पैक प्लेयर. और उसके बाद सेकंड पोजीशन लेके जा रहे हैं हमारे डेल्टा लुल BBJ, 13 kills on the board, putting out 2000
277 damage, 5 assists and 12 knocks. And third will be from Gabru game in Axlin. Who can forget Axlin? Axlin was playing so well. अगर our team Gabru कोई मुकाम हासिल कर पाई है, Axel was one of the person who was consistently giving all that damage. So people will be wondering कि भाई ऐसा क्यों है कि खरखू ऊपर है? Because of the kills. He finished off 14 people, but looking at the damage chart, Delta gave 2,277. So, Lucifer, this is the thing. Damage is everything, but finishing off a player is another thing. It puts you on the top. Exactly. Damage is always like good. You have done so much impact. That says how much impact you have done in a match. But at the end of the day, it needs to be the number of kills that you pick off. Because of the number of kills, you might be able to wipe off a squad, as well as maybe even make your team sure of a couple of placement position. I think that's what is very, very crucial. So Kharku उतना नहीं कर पाया in terms of finishing points, but out of the blue, हमने crazy family सोचा था, but I think crazy family might be somewhere around 10 kills for his team in total, not lagging behind. But Kharku, even though the four guys might not have made their way into the top 5 or top 3, I think Kharku did his job. He became the MVP. So we know how much impact the four guys have. But right now, it's time, King Charlie. Overall scorecard यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कौन ROG Showdown series के विजेता है, who will be crowned as the grand champions and walking away with a 50,000 crash prize. I am super excited. Chat, start spamming in because right now it will be revealed. What do you guys think from all the platforms that you're witnessing, from all these 2 days that you are rooting for your teams? Who do you think will be winning it today? वो इंडियन राइवल्स इंडिपेंडेंस डे विनर बन चुके हैं, वो भी 1 पॉइंट के फर्क से. 1 Oh my पॉइंट. god! प्राउड थग ई स्पोर्ट्स और इंडियन राइवल्स के बीच में खाली सिर्फ 1 अंक का फर्क है. मगर अगर हम उस 1 अंक को हटा दे तो भी अगर 57-57 होता तो भी इंडियन राइवल्स जीतते बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ किल्स दे हैव पुट. सो इंडियन राइवल्स हैव वॉन इट अदर वे. सारे के सारे ये ना कहे भाई 1 पॉइंट से विजेता बन गए, बट इट वाज सो क्लोज. बट लुक एट दैट किल डिफरेंस 31 और 40. वहां पे 9 किलो का डिफरेंस. जितने भी लोग चैट में है, वेल गबरू did play so well. मेरे को लग रहा था गबरू का आने का because Axel did his job. अगर ये एक चिकन डिनर में तब्दील हो जाता, it would have been Gabru who would have taken the first spot easily. Exceptional gameplay आज. Exceptional. Wow. I mean, as you said, Gabru, right? Look at them. They do not have any winner chicken dinner. मैं यही की बात कर रहा था कि even though you don't have a winner chicken dinner, if you have consistently performed, you can take it out. Even Indian rivals के पास एक ही winner chicken dinner है compared to Pubg Esports, but winner chicken dinner, they take it out. Point difference भी मिल गया, kill difference भी मिल गया. Indian rivals are crowned. क्या ही प्रदर्शन. And what a way, like इंडिपेंडेंस डे में इंडिया को मिला था और इंडियन राइवल्स यहाँ पे उनका जीत लेके आरओजी शोडाउन में बाहर जा रहे हैं. They'll be able to get the cash prize, but congratulations to all the other teams. Argus ने भी, even though they got one I more want to winner correct chicken one dinner. thing. I want Yep. to correct one thing, Lucifer. अगर ये 57-57 होता तो मेरा ख्याल से प्राउड थग ई स्पोर्ट्स Maybe. विजेता बनते because Winner चिकन chicken डिनर dinner. पहले कंसीडर किया जाता है. या I did forget to see that 2 mark. Okay, तो yes, अगर ये 57-57 होता तो इंडियन राइवल्स को आज अपनी खुशनसीबी समझनी चाहिए, ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए. बिकॉज सीरियसली 1 पॉइंट का फर्क है. अगर 57-57 होता तो प्राउड थग्स ई स्पोर्ट्स वुड हैव बीन द विनर बिकॉज दे हैव विनर चिकन डिनर. और WWCD पहले कंसीडर करा जाता है. अगर वो सेम हो देन किल्स कंसीडर करी जाती है, और अगर किल्स भी सेम हो देन एवरेज डैमेज कंसीडर करा जाता है. बट यस, ओवरऑल एक्सेप्शनल गेम प्ले. हाउ 25,000 रुपए जीते वहां पे प्राउड थग स्पोर्ट्स से. बट आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी. दे मेड अ लॉट ऑफ फैंस. Even Indian rivals making a lot of fans. Even Team Gabru having a promising future in PUBG PC. Team Argus giving their best. The the four guys they didn't disappoint. अगर हम बात कर रहे हैं उनकी कल से लेके आज तक के एक सेमीफाइनल में जितने तरीके किल्स दे पुट आउट 32 kills man. Crazy family, Kharku, they are giving all everything. Blind esports playing that passive gameplay. 21 kill करके लेके आए, consistent performance. Bunty boys did manage to get that plus that chicken dinner, and then they landed up on 34 points, taking that 7th position. Kaizuku esports, they did very good yesterday, but making into the top 8. They have a
Future had crazy 4. They did play crazy. They did have some crazy gameplays. Mercenaries taking that 10 spot. Catalan, Prinju taking that 11th spot with their 9 kills. Panda Gaming were not able to capitalize today. थोड़ा सा गेमप्ले उनका थोड़ा फीका लगा, बट यस वो जो कार में आकर उन्होंने किल करी थी बैक टू बैक क्लैश लास्ट के एंगल में, दैट वाज फन एंड लविंग. Alpha Omega did their best, tried to do their best. God Squad, they were playing exceptionally so well yesterday in the semi-final, but I don't know what happened. Team Rekem, I think their synergy was not up to the mark level today, but all the best for future. And Team Van Gaming, I am very much surprised कि Van Gaming कल बहुत अच्छा खेल रही थी, but kudos to all team. Thanks to everybody who participated in this tournament and making it happen. And it was a crazy sick environment. What do you say, Lucifer? I Who was completely like agree your with you. best moment of the tournament? I mean, I would say the best moment of my tournament would be looking at where four guys are standing, because उनका standing देखिए, they have 32 kills, placement point बिल्कुल नहीं है उनके पास, सिर्फ 8 ही है, but still they place themselves at the 5th position. And one more highlight would be the side of Indian rivals, the way they managed to play on both the maps of Miramar. That was just fabulous to watch. They managed to clutch so many rounds, they got so many kills. उनका kills भी 9 kill difference. That says a lot. उन्होंने बहुत ही फ्रैक किया. लास्ट मैप में उनका ज्यादा दिखाई नहीं दिया. They only got 6 finishing points, I guess. I think that is one sad moment, but that consistency over the 4 maps that Indian rivals managed to do, I think that's where they pulled off their socks. I would say end of the day, Indian rivals is what managed to do everything. Again, winner chicken dinner, the whole winner chicken dinner. Congratulations to the team of Indian rivals, Delta Lull, Vicky Rex, Salman Patel and Dante, man. All these player King Charlie, बहुत ही शानदार performance. I mean, there was not a single time that we thought that Indian rivals were going out. Such a fabulous performance, and on top of it, it's a kind of irony as well, but it matches so well. It's happy independence for the whole of India, and Indian rivals get a winner. Yeah, winner chicken dinner, and they can definitely order some chicken, because if they are non-vegetarian, तो आज तो मेरे ख्याल से order करना बनता है. Like, I give you one preference from my side, please do order some Changezi chicken. It's really tasty. Gravy is up to the mark level. बाकी आप लोगों की मर्जी है, because I don't know, people are fan of butter chicken, but I am not, to be really honest. So if you are calling me in for a treat, please don't. I'll remember that, King Don't. Charlie. मैं याद रखूंगा. I don't like it at all, because like enjoy मजा फील नहीं आती. बट यस, ओवरऑल माय एमवीपी मोमेंट आज की अगर हम बात करें फाइनल की, इट वाज फ्रॉम द साइड ऑफ द 4 गाइज. वो जो दो गाड़ियां उन्होंने उड़ाई है ना बैक टू बैक, एंड दैट वाज वन थिंग इन द सेकंड मैप ऑफ मिरामार. दैट वाज लाइक वन क्रूशियल गेम प्ले. बट उससे बात करूं अगर सेमीफाइनल की मेरी एमवीपी मोमेंट, दैट वाज फ्रॉम गवर्नमेंट आंटी. यू वॉन माय हार्ट. ओके, दैट 1v3 डील जीत लिया. बिल्कुल इतनी क्लस्टरफोबिक मोमेंट में, जब व्हेन यू आर लाइक लेफ्ट विद ओनली 3 टीम्स एंड यू नो कि क्या करना है, कीपिंग योर माइंड काम एंड दैट कंपोजर. बट ओवरऑल इंडियन राइवल्स, मैन, hats off to you people getting that chicken dinner and making that victory 8 point. Proud Tagi, please don't feel bad. Don't feel sad, you will have another chance. But Exactly. any last word before we end the segment, Lucifer? I mean, it has been a wonderful journey for me in this ROG Showdown series. I mean, such fabulous teams coming in, because PUBG PC is that classic battle royale game. I thank all these teams coming in, because to witness such an amazing performance, I was really happy. I'm pretty sure the viewers were also happy. So I would thank all the admin team, the whole and soul of the cast, the players, everybody were putting all their efforts in, and also for giving this opportunity. It's been fantabulous to also cast along with you, King Charlie. We had such an amazing time witnessing the performance, as well as having our own whips and quicks in between while we were having a chat. So a whole shout out to everybody, and especially the main people who are watching us, the viewers who are supporting your teams, who are supporting all your favorite players to make sure they come out on top. Hope they did manage to show up. If not, there is always another time. I wish all the best, and that is all my last words. Well, इसी के साथ सारा कारवा खत्म हो चुका है. थैंक्स फॉर ऑल दोज वार्म वेलकमिंग वर्ड्स. आई विल से +1 टू इट, क्योंकि मैं भी ये सब कहना चाहता था जो लूसीफर ने बोला है. इट वाज ऑलवेज फन विद यू, लूसीफर. बट यहाँ जर्नी खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों. यहाँ पे शुरुआत होती है, आगाज होता है अगले टूर्नामेंट का, जहां पर फिर से आरओजी शोडाउन सीरीज दोबारा आएगी, पावर्ड बाय दैट इंटेल पावर हाउस. एंड i9 10th जनरेशन है, मे बी दैट
next year we'll have that 11th generation kicking in. But मैं किंग चार्ली आप सबको अलविदा बोलूंगा लूसीफर के साथ, और आप सबको एक बार ही दोबारा से इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाजिर नाजिर होंगे अगली बारी के लिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा Have a खैर। great night. Bye-bye. Got him. Let's go. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it.